and a stun. You can see Rushi has no idea really where to go, just teleport straight into the Hunter's Fury. It's a perfect read out of Verno on that. And even the teleport up into heaven too. Gorgeous. Great start for MIBR on BLG's map pick. And again, we're going to see a lot of this attention towards A main at the beginning of the rounds. Now, last round, MIBR realized that it was a light A hold. A lot of times you're going to see K-Knight playing on an island over towards the A site, and it's those rounds in particular that I think MIBR can try to punish this right side of the map a little bit more. Different story here in round 6 is it's back to a little bit of a B trap here on the eco for BLG. Trip could be a problem. Especially when there's a fault line right behind it as well. Yeah, and a paranoia. And YZ Sheriff. BLG have the tools. But this patience from MIBR is nice. You know, they've seen this B hold a couple of times, and they've teased that space a bit, called back towards Garage a number of moments. Levius is getting curious. Not going to get an early line, all rotating towards C. And remember, BLG have taken this defensive approach in previous rounds where they just play entirely off the site. And the last time we saw this, it was a retake attempt that ended in Aspas falling at the hands of Levius. It was an even number, but now a Hunter's Fury to follow. Shenum's dead. And that's a spike. Ardsy might fall, just barely dodging it. But now a second attempt. And they're digging their heels in. The spike goes down. How do BLG approach this? Remember, they have a Bucky and a Stinger, and then a couple of Sheriffs, and there it is, the shorty from Artsine. Defusing the retake attempt before it really got out of the blocks. Still a decent spot for Rashida here, but they turn onto him. Very nicely handled from MIBR. Yeah, the difference in this post plan for MIBR, on top of the fact they just had the better guns, it's that forward position that Artsin is able to find that first kill and sort of stunt that retake coming in. A couple of times now, BLG have gone heavy out from C-Link. And if those C-Link players don't really get to go anywhere, then your solo Garage guy has nothing really he can do. Right, it's just kind of stuck for sure. Doesn't even matter that they have that first kill coming out from the Hunter's Fury. I still have no idea how Artsin dodged away from that final shot. I thought for sure he was a goner. And again, the value that he provided after staying alive and getting the kill onto YZ as he's trying to dash into the smoke was, it was perfect. Nice! Let's go! I'll tell you what, though, that level of energy has been something that was sorely lacking from MIBR back in Stage 2. It was like watching a funeral procession, how quiet was it sometimes, but already I think you can feel them getting a little bit of that hype. Getting some early rounds on the board for sure is going to be something that'll shake off a lot of the dust. Remember, this team did not have the opportunity to attend playoffs in Americas. They came over here to Europe early on. They started boot camping, getting that experience and adjusting to the climate over here, and so far it's looking solid. I mean, yeah, just a complete shell of the team that we saw early on, the team that we saw, you know, really at the beginning of the year, and something at least, I mean, it's only been 6 rounds, but something seems to be working for them. I think you're absolutely right as far as the energy goes. I like some of the way they've approached these rounds. Verno is fragging. Again, 7-2 so far. It's been a great start. It's all green, but now is where the class can start to show in. BLG's #1 seed take a timeout. They adjust, and the adjustment is going to be fighting frantically over the A side of the map. Oh, I love this. Hello. The deep smoke into spawn. Shadow cancels it out, and Artsine gets the best of Rashida and A. And at the same time, a speed up from Aspas onto front B. Nobody's home, either here or onto the C site. MIBR just running it over. Yeah, misdirection all over the map. But look at this, K-Knight stepped forward out of lobby. Again, he goes for these walks all the time, and Artsin's holding for him. But he's weak. Oh, K-Knight, a bullet between his eyes. Cortezia succeeds where his teammate could not. And now we settle into a post plant where MIBR once again find themselves in an advantage. YZ has an op. Deploying drone. He's going to have to find a way to make that thing sing. One way onto the spike is an annoyance BLG have to deal with. They know the site is going to be clear, but still utility left away on that spike. Note here, Shenum does not have another smoke, so as that dissipates, there is no other one-way situation, but the timing seems to be perfect. There's no way in for them to pull this thing off. Not with the operator in YZ's hands. You can't retake the B site. That seemed like coming out of the timeout, right? BLG have this idea to fight so heavily for the A space. It seemed like with how quickly MIBR reacted to
instantly punish onto B and hold against the lurks. You can't be dying to the spike there. No, that's tragic. But it seemed like MIBR had that contingency plan in the back of their mind set up during the timeout. If there's this heavy fight over A lobby, accelerate quick into B, go there for the first time this game, and also keep holding for the flank. I wondered, yeah, how much of that was a response to the aggression, and how much of that was just a call out of their playbook. Se seu humilde argentino consegue fazer isso, tenho certeza que a MIBR no shape bom, mano, quebra neles, mano. Durante o VCT Américas a gente fez até a análise durante o Stage 2 sobre como a Loud tentava dominar esse long. A Loud? E muitas vezes o Virt não A Loud! de domínio. Então se é para tentar dominar pouco mais forte. Map. That is a consistent pattern for BLG. His side of the map will be a little bit more cautious, so he's brought YZ over into him. This is where we'll see how MIBR deal with this. I think some audio of a drone going out of garage has been able to be heard by these players. You should run. And now the lockdown. तो नहीं है भाई सोवा का. They just kind of wait this one out. Yeah, that's one way to win an anti-eco. Yeah. Still YZ playing heaven, and now he's smoked off, no chance. He will get back into the line pretty quickly, but yeah, you're right. That Omen smoke will provide problems. 3 members heading onto the flank now. Verno के तो easy kill दे free. Okay, Verno. Into this, looking to secure it. Verno gets 2. पता ही था. 1 HP. 3 kills. He takes them all. The round is done. There's no way in. YZ has to save the op. Yep, it's another save. Levius will go into his death intentionally this time. Just a tough situation to be on. And BLG, I think now's the time where they need to make some adjustments. They've tested the flanks so often, both here and domestically. And MIBR come into this, well, you know, it is going to be BLG's map pick. MIBR know that the preferred maps of BLG are going to be Haven and Bind. So they've done plenty of homework on this. They'll know exactly what's up, and now they don't even have to worry about that operator. 11-2 for Verno, 1 off of having his Hunter's Fury online once more. Kid's a monster. And this is what it felt like when MIBR picked him up back in Stage 1. Remember, they weren't playing with this kid in kickoff. Right. Verno was wearing a different jersey with NRG. And it seemed like that signing from MIBR just made everything click. All of a sudden, they're winning everything. Again, a top 3 finish. While individually, he looked decent enough in Toronto. This is kind of the promise we had with Verno in the offseason. Aspas has an op, Artine has a Marshal. Or an Outlaw, excuse me. A little bit wild, but honestly, when I was watching BLG play, I think that on the attack side, an attack op really works against them. If you hold extremities, you hold that contain against the walk-up of, well, what is YZ doing right now? K-Knight's also gone for that. You'll see BLG walk down, see them walk out of garage. Those scope guns can be so good at shutting down BLG's playstyle. Man, 4 of them are on light armor. You see the Outlaw was put down in exchange for a rifle. Whew. That was close. He's setting off of that, clearing the trip, but A is BLG's. YZ steps on behind that drone. This is what makes BLG. YZ takes more duels than anyone else in China. It's a search and destroy mission so often for him. When he finds the openers, BLG's rounds just play themselves. The kill leader from his respective region for that reason. That trip's still hasn't been cleared. Now finally cleared. The TP, the dash through, the wall goes up, the spike goes down. MIBR come to life. Aspas waiting on the other side of the smoke, beckoning, demanding a challenge that does not come. Gets the dink though. Onto K-Knight, and still in the post plant, a Hunter's Fury for Verno. Nano's now being thrown down. Cortezia, a big fight here, has to be able to pull this off. If Flavius can relieve some of this pressure, it's a problem, but no, MIBR stand tall. 3v3 now, Rolling Thunder invested in exchange for the Hunter's Fury from a distance. As a second. चलो इस मैप के बाद जाता हूँ मैं. Another mark found, and another round for MIBR. Just insane there, getting up in front of the 7:30 बजे Hunter's Fury. मतलब 7:30 तक चलेगा ये मैप चल जाएगा I want you to watch in this post plant. First of all, Aspas gets a dink, then gets this shot with the operator. But then Shenum on the Omen steps in front of the Rolling Thunder, gets that kill first. That means so much. Leads to a Hunter's Fury kill.
leads to the round for MIBR and BLG's second time out of the half. Yeah, because imagine if let's say everyone else dies on site, Verno's still playing pretty far off. He's been using the Hunter. He can't quickly get into spamming smoke. You're doing this, that, or the other for the defuse. The play's gone. Oh yeah, you have to have teammates still alive. Verno can't win that round on his own with the way he played it. But again, that seemed like MIBR have a very clear plan. If BLG are fighting forward in A lobby, and I don't mean just hanging out, you know, that deep long line or fighting it with an operator bottom sewers. I mean they're up in lobby threatening your flank. As soon as that happens, what has MIBR done every round? It is a quick acceleration into the B site. They know that site has been weak, and they have punished it consistently. They've been getting into these post plants where they have good utility. Even though they're not playing any players on site, BLG can't get out there. It's not a matter of time and oh, they don't have time to defuse. No, MIBR are just slaughtering them. I was talking to Fraud prior to the series starting, asking him how he felt about the pick bans and how it kind of went down, and he had a smirk on his face and said, we got both maps we wanted. They picked our first choice. And I was hesitant to believe it, to be honest, and forgive me for being a doubter, but given history, I don't know, but yeah, he was right. And it just makes sense, right? MIBR have the extra time to prep. They know BLG's tendencies, and they're debuting a new comp. MIBR with the double smokes, now another fight into long, but this one, even between the two squads. And Odin rattles off right off the bat. No damage found, but a couple kills traded. YZ for Shenum, I take that any day of the week. We'll see what Levius can do in the corner here. Stinger in hand, not tagged up. He's been here a couple of times. Hold on, what is going on? Body block, Neff falls. But traded back again, the Stingers proving to be a problem. BLG gets another. They made a good adjustment out of the timeout. Very quick to respond and start threatening on this B site and into Garage. So you can see that scattered MIBR a bit. Their spike is still outside Garage. It's time to maybe regroup, play together. This was a bit of a half buy from BLG, but they're ahead of it again. BLG are already rotating into A before MIBR arrive. And they have the information too, know exactly where these final two players are. A gun for K-Knight. Just over 40 seconds left in the round. You do have time to play this out. You're not forced to commit A. Oh, pop, wall through. Last boss left to fight. We'll find his one. K-Knight down 3 on the round. 30 seconds for the duelist, left. and one more waiting on the other side. Dashes back, throws it in reverse, and gets another for MIBR. Just dancing on him. Ospas had no clue where that last guy was, but it doesn't matter. The Stinger cannot hold up against Ospas with the Neon ult. That kill from YZ at a distance is kind of insane. It's wild, but it doesn't amount to much of anything. This is now where we need to see the learnings taken from BLG in the timeout. They need rounds. They can't, you know, limp out of this half with 2 rounds. You've got to have something more than that. For the first time in what feels like forever, MIBR set their eyes on C. Right off the rip, too. Rashia, the paranoia is going to be really good. It's going to buy a lot of time. Rotation's coming through. The ult has been popped. Levy is the first to fall to Rashia, dancing around looking for another target. Cannot find it. But Knight from a distance does. 3v3 now. K-Knight's still so healthy. And this lurk from Artson. No utility to hold him down. He's a little bit too late. BLG are into the site. Bus takes a step back. And again, it's a slaughter. BLG Damn, bro. Find their way in. And again, that was off the opening from K-Knight with the ult. And it looked to me like Artson was going to be late, but that was YZ going into the site on his own because the 2 people behind him are his initiators. They're chucking out utility. They're stuck back in C-Link. Right. So Artson has a free couple of kills. You can see that dart ping. Helped out so massively. And it's a drone, and it's now turning around to deal with him. And MIBR just running the map. Yeah, we've sung his praises a couple times with that dart that you mentioned, setting up the kills. Oh, it's going to be a Clash B, isn't it? Swinging into 3, and all 3 found! Wow, MIBR. It's a slaughter! It's a disaster 10 to for half BLG. on BLG's map pick. Boss isn't done yet. Pushing the case, looking for another, will find it. This tournament doesn't make any sense, Doug. Think of the number 4 seeds upsetting number 1s. Even just yesterday, G2 went down to Heretics. And it's MIBR leading the first half. 10-2. A flawless round to close it out as well for MIBR.
This team didn't make playoffs in Americas, and they're already lighting up the global stage. No love between these two either. I mean, you see them stand up out of their seats, giving it back just in kind. A slaughter of a first half. BLG on their back foot. We're going to throw it to a quick break. We'll be right back. अगर पिस्टल हारी Eu acredito. Olha que, mano, olha como atirou o VAR no cara. Valeu, V7, cara. Tô aqui com o NAC, Atira a gacha, atira a gacha, atira a gacha. campeão de CS pelo MIBR em 2006, aqui em Paris. E NAC, a gente tava aqui Caralho. extasiado porque o MIBR tá jogando muito, que é buff de Paris, irmão. Será que tá rolando a magia da Cidade da Luz? E aí, NAC, você Da hora jogou demais. Valorant no início do jogo? Não sei se tem jogado muito, mas assim, a gente conversou um pouquinho antes E a das NAC. similaridades que tem entre o CS e o Valorant. Você pode falar A um ver, pouquinho pra gente vamos que ver o você, pô, análisis. absurdo jogando CS. Como que você tá enxergando o Valorant agora? Cara, agora tá mais semelhante ainda, né? Que o CS foi pro mais 12 também, voltou com o 1.6, mas assim... Microfone na boca, é Nak. semelhante, ao mesmo tempo muitas diferenças, a parada dos agentes e tal, tem muito detalhezinho, né? Mas assim, claro, a trocação de tiro, a situação de clutch ali, os enter, é coisa linda de ver, é da hora Tô demais. chalendo, mano. Você Papo tá Eu reto. curto muito o jogo e... गाना बज रहा है इधर तो When you've got a team of such high expectations like BLG, you look at a star to bring them back into this. And my eyes go towards YZ here, Christian. Yeah, YZ was just completely shut down in that first half, largely in part to Verno. Yeah. You can see down here with the Coinbase Econ report, this guy was absolutely torching BLG. And I think that MIBR's game plan really supported this shutting down of YZ, a guy that on defense so often will step forward and seek out those fights. MIBR were holding for him every single time. Now on the attack side of things, I need to see that YZ that was promised if BLG are going to bounce back. And BLG will require it. Take a look at how they want to approach this attack side, and they're just so far back. You have to play perfectly, really. I mean, if you want to get a shot just to get back into this thing. Yeah. Absolutely insane how things started off. The flawless rounds, I heard 3 of them right there. MIBR were so clean, but BLG gonna start things off geared up towards the seaside, which is light right now. Just a nano swarm to hold things down, and the poison cloud, of course, from Artzin. All right, I do think a lot of our attention will be, we mentioned YZ, and for good reason, but Neff in particular does such a good job of setting him up and unlocking him. So it's as much on his shoulders as it is on YZ's, in my opinion. It's gonna come down to breaking MIBR's hold over towards the A site. Boss on this forward line, not over peeking into lobby. Just gonna take a shot and fall away here. Cautious here. Shenum is close by, has a paranoia. But they're gonna go long. Not even really giving that angle. Does Levius walk into the double stack of MIBR garage? I mean, he's calling his team back into him. I think he expected rotations to hit a lot faster, but now that the turret's cleared, there are still 2 players here. And Artzin ratting it out in his cloud. Cortezia feeling a lot of the pressure. Artzin, his cloud goes down. He gets 1, make that 2. The frenzy tries to find a 3rd. Tucking behind the box, but Cortezia delivers. Now the paranoia out. BLG trying to will their way into a pistol, and they cannot. Next one MIBR 11 for MIBR. Claps BLG think themselves out of the round. MIBR didn't flinch with that double garage trap setup. They had started in those positions at the very beginning. Artzin and Cortezia never left each other until they decided to fall back into C. And that quick thinking, that reposition out of Artzin was so nice. The only thing that stopped him from killing everyone, the magazine size on his frenzy. 30 seconds left. Enemy remaining. This is now 9 rounds in a row for MIBR.
And now BLG have to force up into it. Yeah. Not even with the generosity of a spike plant. 5 Stingers, light armor on 4. K-Knight, the one exception. So double body shot from Aspas here, good enough. Take out Russia. Darts have been exchanged. A little bit of info gathered. But Aspas lies in wait. Yeah, no space on the map for BLG makes it really hard. They're gonna cautiously maybe test back into mid. But in their eyes, MIBR could be anywhere. This wall from MIBR just takes away so many options too. I mean, you take a look across the minimap. Utility C, garage, the wall B and A. BLG might have done the right thing, though, by making that noise B, by not showing anyone A long. They've now pulled the rotate away from Verno, so only 2 players to hold them right now. They've also let Levius go on a bit of a walk. Yeah, but Shenum's holding it on the other side. I mean, maybe with different weapons, you got a shot at this. Hard scene, feeling some of the pressure, takes a step back with the judge. And they try to brute force their way onto A, and so far, so good. They're succeeding. 30 seconds left. They've gotten the sight, they just don't have numbers, and they really don't have the guns. Chip damage well onto K-Knight. Look at Russia. He needs to keep going forward. He needs to find something for his team. Upgrades into a Guardian, entrenched in the smoke. Waiting for the challenge, and as it goes down, the kill goes up. Cortezia finds it, K-Knight. Dropping Verno down from heaven. Into 1v2, swings it, delivers a dink. Still more damage to be dealt with. Damn, Cortezia, so close. Disaster. But Adiya Cortezia saved MIBR. That was the force up as well for BLG. That was the NT, last chance for Russian, them. Knight. Just an absolute stunner to open things up here. Good hold out from Shenum. Bit awkward here with that flash connecting onto a teammate. As Wisey had to try and turn back around into the judge. He ends up eating up the breach blind. Nice! So BLG go back to the well. Again, it's not pretty. No, it's a shallow well, man. And now there's an outlaw in the hands of Osboss. Only half armors except for K-Knight. MIBR roof कुछ crazy कर रही है. Very unexpected shite they are doing. What can they do here? There's even an alarm holding this heaven jump. And they hadn't seen that one. They hadn't gotten that far up, and they've also only played, what, 2 defensive rounds? Look how quickly MIBR have started shifting over. Completely prepared. They smell blood. Oh, Genome with 2. Wisey's eyes as Shenum gets 2. Bro, they're gonna win a bonus. The spike is well out of reach here. अच्छा bonus क्या BLG का भी भाई ऐसा ही है खराब सा तो He यार. didn't even pick up the spike. No, it isn't. I don't know that he feels safe enough to at this point. And so Aspas can just hold it. I think he just missed it. He was right on top of it and didn't connect. And now it's being hard held by 2 players. You might be right. Tragedy. Bears spots it. K-Knight's head snaps back. As has been BLG's. MIBR. Crazy shite, dude. Crazy shite MIBR. The last time we saw MIBR Crazy. play this map on the चलो. international stage, they lost जाना पड़ेगा. 13-1. I'll be back They have by now taken down China's best either team 13-2 to open करोड़ up के the मिड तक Now they turn their या attention फिर over to करोड़ खत्म हो Corrode, चुका होगा. which was the arena they wanted. That's where they पता wanted नहीं. to play. That's where Let's they see. wanted to fight. चलो I'll be back Looks rough after for BLG. We'll see what half an hour और कुछ. तो करोड़ तब तक मिड आधा हो चुका होगा करोड़ या फिर खत्म ही हो गया होगा जिस हिसाब से MIBR खेल रही है. और अगर करोड़ पे भी ऐसा खेली जो कि उनका अपना मैप पिक है. This was BLG's map pick. Let me specify that. तो अगर अपने मैप पिक पे भी खेली तो gonna be dangerous और जल्दी खत्म हो जाएगा करोड़ भी. तो या बाय बाय, सी यू ऑल एट आइदर करोड़ या फिर सीधा फनाटिक के मैच में.
need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be alright. I just need to know what's on your mind. I just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. I just need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be alright. I just need to know what's on your mind. I just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's holy to the end. So pray tonight. So you won't know, yeah. For everywhere that we have messed around and I knew it. But I've been ready every day. Know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray?
Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be enough. You're safe, that you're here in my arms. I think that you should know that together we belong. You are not right all the time. I can play any reason. Go, 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 go. But I was born on the planet. I'm trying to miss you. Safe, now you're here in my arms. I think that you should know that together we belong. You are not mine all the time. I can play any reason. Go, 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 go. Boy, I was born out of glitters. I'm sorry when I miss you, babe.
You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're on my mind. Painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heartbeat to save it. 'Cause your love's underrated. 'Cause your love's underrated. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heart need a saving. 'Cause your love's underrated. Deep in my heart I know you're irreplaceable. Together unstoppable. And I feel your frequency, feel your love around me. I'm drowning in my mind, don't wanna let you down. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're on my mind. Painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heartbeat to save it. 'Cause your love's underrated. 'Cause your love's underrated. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heart need a saving. 'Cause your love's underrated.
Running back to my old life, but it leaves it burning. Speaking tongues in my head, yeah, that's the way you want it. She called me baby, you're not wasting time. But how could I let her go? Don't you know I might adore you? I'm gonna make the time move slower. We can do whatever, yeah, sun's out, make the clouds move over. We
Take me back. Take me back. Take me back.
what time is it gonna last? What if I try to push through my past, but I don't even know if I ever fall. Will they even notice? Never cared for all goodbye love. I just wanna be alone. I just wanna be alone. Oh, be alone. I just wanna be alone. Yeah, I'm truly a desperate lost soul. I got a feeling this world lost control. There's no more hope left. We're stuck in the unknown. It's the only thing I know. If I ever fall, will they even notice? Never cared for all goodbye love. I just wanna be alone. I just wanna be alone. I just wanna be alone.
Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah. I can show you, yeah.
I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I'd follow you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. I remember you. I remember you. When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I'd follow you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. I remember you. I remember you. Giving up, letting go. Times we might feel compelled. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control. When we feel like the world is against us, we're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the dark. The vertigo is getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for.
just trying to ask. There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake, and the risk we have to take. Will we know what is throwing off our balance? Trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the dark. The vertigo is getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for. Into the infinite that we must reach. 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 Can't lock him out of the game. Well, what an exciting क्या way टाइमिंग to पे आया हूँ start. I वापस can't wait to jump into Ascent, and I can't wait to throw it over to your casters, Mitch and Tom. Mitchman and Tom Well, it's Biz. the champs' debut for RRQ, who are back for revenge against the team that ended their run in Toronto. Rosters, well, they look the same, but we've got a new map pool, and with Corona वैसे लापता आ गया यार, इनोसेंट मोड भाई आ गया. exciting matchup. Yeah, I think also just you look at Fnatic going यार into टाइमिंग पे आया हूँ भाई वापस. general, मेरी their स्ट्रीम भी अटक गई थी, strengths haven't एनकोडर really been कुछ there, दिक्कत हो गई and थी. sure, a pretty hefty defeat, struggling on that attack side when playing versus this comp for RRQ, but defensively on this map, they've always been pretty good. So a defense-sized start for RRQ, this could be a very different story. And you've now lost what is that alpha year aggressive entry playing on the chamber and replaced it with a save. So I want to see what sort of
attack side ideas Fnatic have, because sure, I think this comp will be great on defense. Will it be good on attack? Defensive ideas from RRQ and the pistol भाई ये तो firing squad defend have होके been बैठे हैं. waiting for that spot. A few shots fired, but none landed. Will be Fnatic. And full पे चल रहा है तब भी As हैंड RRQ गर्मी just लग have रही to है. fall back now, play that more defaulty play, mid a bit more open, and looks like they might even be thinking about going in towards mid. Certainly with the reveal, here's some util following it up, but a lot of this is posturing from the defensive side. They're trying to make a favorable engagement happen, find something when the reveal pops off, but Fnatic are quick to deny it. And again, it's back to covering their bases. We know Fnatic are renowned for this slow style. It was mentioned by Wire, and I agree that getting into those post plants, they're going to be tough to beat, especially in a pistol round. That wall is going to be devastating, but they are walking into a stack up. 3 players on this side of the map. They're slowed as well by that smoke being into position. Actually, Alfia doesn't look like he's going to use that wall for the post plant at all. Oh, he's going up into the window as the exec comes through. Kayak already dropped, and here's Alfia's opportunity. He's been spotted, still manages to find one. He's pulling them back into this. Opening pick for RRQ, but an immediate response from Fnatic puts them into a 4v2 post plant. Yeah, this is going to be tough to break back in. That double entry's huge, but Alfia still on the wall, has been caught out. Chronicle in a fairly open position, but will just opt to fall back. Utility not really available for that attack, but a singular paranoia for MASS1VE. Could get them back through. Chronicle's just got his flashback online. There's the shot from Jemkin, though. Crashies, who is desperately low, is down. And it's the 2 players in Boathouse who have to pull this off. Chronicle with a pistol in hand. It might not be the classic, his signature weapon. He will find the kills nonetheless and put Fnatic 1-0 up. Yeah, he's definitely one of the players I want to keep an eye on, because even when they were in poorer form, you did start to see Chronicle coming back to that championship level. And we know that if they are going to be a contender in this tournament, he needs to be on. Like, he is that player. भाई I feel like क्या टाइमिंग पे आया मैं यार ये ईयरफोन की माँ का. And a solid start for him in the pistol round. Already seeing an idea or two, but गर्मी लग रही भाई मुझे. that idea at least I've been seeing since 2020. क्या भागते भागते. Obviously, we had some slower weeks from Chronicle over in EMEA as well, but he certainly found his form towards the end of the season. But that was something Uber was saying. You know, across the board, it's felt like regular season stage 2 has been that little bit of a drop-off for Fnatic. But this is their chance to put their best foot forward in terms of opening matchups in Champions. They've only lost the 1. It was their second appearance. Obviously, they've been to every single champs. It was back against 100 Thieves. Other than that, this team is usually undefeated in the early stages. In this round, they certainly should be getting away with it fairly clean. 2 pistols, so a big margin for error. And only अच्छा स्मोक है भाई ये तो बहुत सिटी क्रोसन का. Fairly hefty rotation, but they're not actually within the site trying to use the smoke to cross over, but it's something that Fnatic are well aware of. Posted and Chron. Chronicle already. Chronicle is on today, man. Chronicle is on today. Let's go. Hello Gautam bro, welcome to the stream. भाई क्या टाइमिंग पे वापस आया हूँ गाइस. मैं जैसे ही मैच शुरू होने वाला था उससे 1 मिनट पहले पहुंचा हूँ मैं वापस घर. Available as much as humanly possible for Crazy Guy. Well, you either want to try and do damage or ideally die to the spike. That's not happening. No, they're trying to buy time for Alpha to come back and grab that kill, but Crashies, his hand was forced in the end. They come in with 2 pistols. They leave And Gautam भाई क्या हाल है आपके? flawless round from Fnatic. Big money builder early on. भाई स्ट्रीम स्टार्टेड है ना, चल रही है ना. बीच में एनकोडर एरर हो रखा था, पता नहीं कब का, कितनी देर पहले का, कुछ आइडिया नहीं मुझे भाई. अच्छा अभी पता चल जाएगा कितनी देर के लिए था. Win the round for sure. You know, in terms of the ascent, the last time these 2 teams faced, it was pretty convincing. 1 hour 31 minutes, 1 hour 54, 20 minute के लिए था बंद यार. Holy fuck. When they played versus Paperex, they had a 1-11 attack. So this defense has to be solid, because whenever they've done even reasonably well on this map, it's been a defensive-sided half that has done it for RRQ. So that'll be the focus. And this is where they now have the weaponry to play with. Chronicle, even after a pretty stellar early start to this game, he's going to be left down to just a stinger, and Jemkin, well, he's going to be able to escape and have his teammate double up onto Alfia. A great start for this round. Yeah, not bad at all. Exactly what we needed to see. Fnatic being put in their place early on with that advantage that RRQ are bringing to bear. And as you said,
with the defensive side expectations we had. Rifles are left though, 3 of them with an upgrade that's being brought through. Make it from a corpse, I'll move towards this A side, but plenty of numbers here for RRQ. Full utility online towards this side and 40 seconds on the clock. Time to make a decision, and it looks like they might be making the right read. The thing is, that was their own thorns. It felt like Crashies wanted to push forward. 30 seconds left. But his own team's thorns have blocked him out from doing so. Fnatic like to run the clock low, but I wonder if this is just turning into a save. 20 seconds left on the clock, the spike pushing forward, but everybody else still with so much space to take. Boaster down. 15. And yeah, this has to be a save now, but it still seemed like at least आज MIBR को जिता दिया, फनेटिक को भी जिता दूंगा. तुमने कैसे जिताया बे? तुमने कैसे जिताया? तुम गए क्या वहाँ पे खेलने उनकी आत्मा में? The only thing is, because it's their first round victory, I don't expect them to hunt too much for these remaining guns. Yeah, no, it's definitely worthwhile just hanging on to what they've got. Even that one Guardian they've now got left with the upgrade for Crazy Guy. Koshi will just carry it forward. Hey, listen, that is a godsend of a round for RRQ. Great early fights, already showing dominance over that mid control and the patience on display late. That's what Fnatic were trying to force out of them, was a little bit of an over. सुटा मार रहा, सुटा मार रहा on stage, सुटा मार रहा है. हेल्पर सुट्टेबाज. अभी परफॉर्मेंस कम हो रही है. किसी ने इसे किया था MIBR जीतेगा, कल मैंने बोला था तब जीता. मैंने तो किया था. That was just a bonus, so even the couple of guns saved and a little bit extra is going to put them into a good position. Rez already online, so they can now be a little bit riskier. Saying that the shock dart that's been sent through early from Cushy has done a lot of damage. कर ली मैंने कोकेन की. I imagine the heal has already been administered, so Chronicle will at least be back to 100. Again, ground to a halt. This defensive setup is incredibly passive. They're not trying to give any of those openers on the other side, and because of that, with में चला जाएगा तो उनको भी इंटरनेशनल स्टेज पे ले आएगा. I think so. वो जिस टीम में खेलता है वो इंटरनेशनल पहुंच ही जाती है. चेक वहाँ जैसा भी खेले, but एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर जाती है. MIBR 2 साल से 2023 और 24 कुछ नहीं उखाड़ पाई. 25 में made it to 2 internationals, मास्टर्स, टोरंटो एंड कैंप्स पेरिस. इतनी देर का आते, थोड़ी देर और होती तो मैं तो माउंट एवरेस्ट से कूदने वाला था. कूद जाओ, अभी भी देर हो रही है. कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं. कूदो, जल्दी कूदो, मुझे वीडियो भेजो बना के कूदते हुए. मुझे अपने चैनल पर डालनी है, कंटेंट मिलेगा. कूदो, जल्दी कूदो. Rotation through from Jemkin, mid fully secured, and Fnatic are going to go for this late control. Alpha here wants to push deep into the spawn. He's got a guy on the rotate, trying to cut it off, and he'll grab one. That's the res online. Flawless. Let's go. गौतम वर्मा ने भी अच्छा खेला. आईजीएल पर आएगा. वर्मा आईजीलिंग कर रहा है, आर्टिजन नहीं? सही में क्या? मुझे आइडिया नहीं. जेन्युइन बताओ गाइस. सबको पहले तो वेलकम टू द स्ट्रीम. आज मैं कहाँ था? मैं काम से गया हुआ था इनोसेंट मोड में. मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया था. बीच स्ट्रीम में कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे उठ के जाना पड़ा. बट लकीली 1,000,000% लकीली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट. फनाटिक का एक भी राउंड नहीं मिस होने दिया. क्या टाइमिंग पे पहुंच. मैं जैसी घर पहुंचा, कमरे में पहुंचा और पीछे की स्क्रीन की तरफ जैसी देखा है ना खोल के लैपटॉप, स्ट्रीम स्टार्ट दबाते ही एसेंट स्टार्ट होने में 1 मिनट 1.5 मिनट बचा था बस. मतलब मैच स्टार्ट होने से मैच और पूरा मैप. हाँ, मेरे इंटरव्यू वगैरह, प्री गेम इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं, जो प्लेयर्स के होते हैं, इसमें मैंने देखा बोस्टर का लिया जा रहा था, वो मैंने मिस कर दिया. दैट्स अनलकी. वो मैं अभी इसके बाद यूट्यूब पे जाके वापस से देख लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं यूट्यूब पे पीछे जाके पीछे करके देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. मेरे लवली प्यारे बोस्टर का जो इंटरव्यू मैंने मिस किया वो तो मैं देख लूंगा. उसके अलावा अपना ये क्या बोलते हैं, उसके अलावा मैच 1 सेकंड भी मिस नहीं किया. 1 से 1.5 मिनट पहले पहुंचा मैं. जस्ट क्या टाइमिंग भाई, क्या टाइमिंग. आई एम सो हैप्पी भाई कि फनाटिक का मैच ना मिस करने का. मैं तो गाइस आपने इधर मोड से कंटेंट में लिए मरवा रहे हैं स्ट्रीमर, और नहीं तो क्या भाई. वैसे कहाँ पर रहते हो? घर पे यार, लकीली घर पे. Operator in hand. This is the benefit from having such a clean previous round, but that position from Poster, it's sneaky. If Jemkin steps back out, if Cushy tries to cross to market, they could be caught off here. Now has the idea that there's a player in position. Jemkin यूरो डिफ कर दिया कायक को. Just at the last second he's able to catch that kill. Poster not. छोटे जैन ने भी बोला इंटरव्यू में वर्नो आईजीएल. हाँ वो तो. अबे ये क्या हुआ? ये तो जिंदा होते ही मर गया. ये क्या क्रेजी कर दिया यार आरआरक्यू ने.
अरे भैया सिटी का नाम पूछ रहा हूँ। अच्छा सिटी का नाम देहरादून, उत्तराखंड। तो कोटेजिया तो क्रेजी खेला आज मैंने देखा है हेवन पे। तो दूसरा मैप नहीं देख पाया मैंने हेवन देखा, टीम की स्टार्टिंग पे हेवन वगैरह देखा मैंने। उतने मुझे काम का कॉल आ गया, मैं चली गया। मुझे लगा जब तक करोड़ खत्म होगा उसका शायद एक और मैप जाए। चलो नहीं भी जाएगा जब तक करोड़ खत्म होगा तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा यार। क्या आधा घंटा से 35 मिनट तो मिनिमम एक मैप चलता ही है, बीच में टाइम आउट वगैरह का टाइम सब मिला लो, एनालिस्ट वगैरह का। और भाई काम में इतना टाइम लग गया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि ये क्या बोलते हैं, इतना टाइम लग गया काम में कि शुरू होने से 1.5 मिनट पहले पहुंचा मैं। खत्म है क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। मेरा पीछे चल रहा है भाई, रिफ्रेश मारना पड़ेगा। तो अबे ये डेफिनेटली होके बैठा है अभी, कॉम्पी चल रहा है क्या? आई एक पहुंच हो गया अभी और आवाज क्यों बंद हो गई? ये क्या मैंने रिफ्रेश मारा कि मेरा पीछे चल रहा है के लिए और उसमें वो बंद हो गया। चलो मैं जब तक जरा रॉबर्ट भाई मैं बहुत इनोसेंट हूँ लेकिन नर्ड नहीं भाई। फर्क क्या है फर्क बताओ मुझे। फर्क तो कुछ भी नहीं है भाई। वेजी बॉय कॉम्पी में नहीं धोखेबाज। because he's trying to use the heal while running away. Like, that's so unfortunate, but also just wonderfully placed utility for the side of RRQ. Definitely a squad that चलो राउंड शॉट लेट्स गो। हाफ शील्ड्स वगैरह यार फनेटिक की तो एक बंदे पे सॉरी मैंने क्या देख लिया, मेरी आंखें खराब हो। अच्छा आरआरक्यू पे है 2 बंदों पे हाफ शील्ड। मैंने आरआरक्यू की साइड देख ली और बोल दो फनेटिक पे हाफ शील्ड है। तो भाई सच में नर्ड होते हैं क्या? नहीं अरे मैंने आपका केस लिया था ना। लॉल कौन सा केस लिया भाई? ये वॉल्यूम भी कम। ओए एल्फा लवली एल्फा चा मोद दे भाई, चा मोद दे आज चाय पिला दे। हाँ भूल गया गौतम है क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। मैं परोल पे कब बाहर आया परोल पे? अबे इनोसेंट मोड का क्रॉसर बीचों बीच तो आ गया। अबे यार मेरे हाथों में जहर हो रहा है क्या? अबे मुझे ये लगा ये आरआरक्यू का मैप पिक है। नहीं फनेटिक का मैप पिक है आरआरक्यू के एबिस है। Gate crash into the site for Kayak, and it looks almost silly that he's able to get that kill for free. Breaking back into this though, it was mentioned. It's not going to be easy. You're facing off against that vice. तुम मुझे बता ही दो। नहीं एक बार मुझे बता ही दो तुम में से। अभी तो पूछो ना भूसड़ी के, एक बात बता दो को 2 बार बोल दे पर सवाल एक बार भी नहीं पूछा अभी तक। पूछो आनी तो एक बात मुझे बताई दो, एक बात मुझे बताई दो। अरे बात क्या है वो तो बताओ पहले, तभी तो बताऊंगा ना। पूछो तो पूछ रहे हैं नहीं। Crazy तो इकोनॉमी हर्ट हो गई। bit more costly, but let's be real, it's not going to do too much in terms of the economy. Yeah, I liked what Boaster was doing there. Alpha was a little bit ahead of it though. Initially you see him clearing out main, looking for players in the corner. आज लॉटरी लग गया क्या? इतना एनर्जी आप पे? मेरे पे एनर्जी कहाँ है? अभी मैं तो उल्टा काम करके मैं तो थक रखा हूँ। मैं तो उल्टा काम करके यार मैं थका हुआ हूँ आज। कहाँ से एनर्जी यार? कैसी बातें करो तुम यार? उल्टी पुल्टी बातें मत करो यार, तुम उल्टी बातें क्या बोल रहे हो यार यहाँ पे? एफएनसी का मैच है इसलिए। गौतम भाई नोज ये इसके मुंह में क्रॉसर देके क्यों बैठा है? खुशी है ना सोबा? हाँ खुशी वो इसके ऊपर जो ये आदमी बना इसके मुंह में क्रॉसर देके क्यों बैठा था? खुशी की कुछ फैटिश गलतें लग रही है मुझे, गलत फैटिश है। Nonetheless, he's now got an operator of his own. Clearly expecting that aggression to come in. Early TP just to try and clear out switch. The run in. Kayak's already gone down. 1 hit per damage pada. Smoke going to be thrown Kayak back taken out down. to try and delay them that a little bit further, but it feels like now Fnatic are a little bit more committed. Boaster has made that move. अरे बोस्टर भाई गोली चलाओ, दिख तो रहा है वो। Still just trying to get through this choke point. Stuck by Munya Smoke. बोस्टर भाई ने गोली नहीं चलाई उस पे, वो स्विंग ले रहा है। बोस्टर भाई गोली नहीं चला रहे। Alfia's got a long wait before that heal's going to be available. In fact, we'll be down to the last 15 seconds of the round if that happens. And obviously for Chronicle with the operator, all he can really hope to do is hold the cross.
तुम मेरे को ये बताओ कि मैं जब भी डीएम खेलता हूँ और कोई हाई हीरो का प्लेयर में आता है मुझे वो हमेशा प्री मार देता है या तो फ्लिक मारता है, नॉर्मल में नहीं मारता भाई। प्री मार देता है या फ्लिक मार देता है, देखो फ्लिक का तो मुझे नहीं पता, फ्लिक तो उसकी फ्लिकिंग अच्छी होगी तो फ्लिक कर देता होगा भाई, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। बट प्री जो मार देता है उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा मैच के बाद, वेट करो जरा थोड़ा। मैं कल मेरा डीएम में बिंग्स आया था, नाइफ में तो कॉम्पी में आया हुआ 3-4 बार, बट सही है कैसा गया फिर, मारा नहीं मारा बिंग्स को या बिंग्स ने तुम्हें पेल दिया? Like, you could just throw that in just to confirm this round. I think clearing out all of the risky angles will just make this so much easier. And playing this as a 4 versus 2 retake, I think the gamble would be is if you left it down to Boaster trying to act nonchalant. Boaster Boaster is nonchalant, bro. Boaster is the most nonchalant guy I have ever seen. He's going to try and get aggressive, try and be surprising. They already know where he is. That surprise factor is gone. Alpha, though, still manages to land a shot. They know where Chronicle is. That was the problem. It's down to the low HP player. He's healed himself slightly. Oh, a shot, but not to the head. Shit. Puts him in the ground. Alpha could have won it, bro. 3 बार मारा मैं और मैं 2 मंथ बाद खेला था गेम। ये तो 2 मंथ बाद खेला, 2 मंथ बाद खेला, 1 मंथ बाद खेला, 9 मंथ्स बाद खेला मैं। ये सब मैटर नहीं करता है। ये बताओ मारा कि नहीं, और मारा 2 बार, वेरी गुड। एंड बिंग्स ने मारा कि नहीं, मारा तो मैं, वेरी गुड। दोनों ने एक दूसरे की मारी, डबल ट्रबल, गैंग बैंग, लेट्स गो, दैट्स व्हाट मैटर्स। अल्फा भाई क्लीन चेप बढ़िया लगते हैं, दाढ़ी मत उगाना अल्फा भाई, बिट्टे वो झांट जैसी प्लीज। And the couple of TPs not इन्होंने working out. FNC लिया, FNC ने ऐसी मन होगा उनका थ्रो करने का ना। Even still, 4-3 up on the attack side of this map. Already said defense probably better. And what a Hunter's Fury clock. Chronicles dead to rights. Nice start, in fact. Another tag to be had as well. Not as impactful when they have a Sage, though. Yeah, not so much. At least it will be the shield stripped away. A small benefit. अबे RRQ फैंस भरे हुए भाई वहाँ तो। For RRQ, they've been playing so गैंग में व्हाटएवर मी स्ट्रेट। अरे मुझे लगा तुम और विंग्स मिलके कुछ तो कर रहे होंगे डीएम में, तभी तो। Cyphers left to hold the other side. The last round they had 5 players on the A site when Fnatic were pushing through. This time it's 3 towards it. 1 of Jamkim close enough, and the ultimate. भाई अच्छा है रेज नहीं दिया अभी, वरना अभी रेज बर्बाद हो जाता। Inside of main, but there's no one to play on the back of it. That does feel like अच्छा है, अच्छा है। little bit of a throwaway. Alt wasted. From Crazy Guy. The res is still online. Yeah, I guess the expectation was that maybe somebody was a little bit deeper. They are wary of those salvos. That's what it is. They're using the res here. They're just expecting the salvos to just remove anybody else who's left. Shock dart over the top. Same wall. Getting ready to go. But they should be aware of Boaster this. got caught. Also holding the line into middle. Fnatic starting to fall flat once again. It's only really Alphia who's done anything. And well, Kayak now with 14 seconds, 4 players to fight. ये round तो गया, save. Not going to be peeking. It's a save, it's a save, it's a save. Equalize for the Pacific number 2. No wait, it sounds so wrong भाई, डीएम में हम एक दूसरे को हेड दे रहे थे, बस लग ही रहा था मुझे, इसीलिए तो मैंने गैंग बैंग बोला भाई। RRQ नूब टीम भाई, इक्वल राउंड्स ऑन द पिक ऑफ देयर ओपोनेंट टीम भाई, नूब कैसे, #2 इन देयर रीजन, नूब कैसे, क्या बोल रहे भाई। You can't pop that res because the ult can come through, and even after the ult's been put in, you're worried about the salvo. Crashy's just going out running backwards to take down a camera. Xvero giving the freest fights of his life. This is a time to take. भाई क्रैशिस का तो माउस भी मैच कर रहा, माउस पैड भी मैच कर रहा, जर्सी भी मैच करी, टीम भी मैच कर रही है भाई। लेट्स गो क्रैशिस भाई, फुल मैचिंग हां क्रेजी भाई, लेट्स गो। 2 rounds together. It's the most that we've seen since the pistol round and the follow-up. Yeah. But I think most importantly is the position that they've now put Fnatic in. With the 7th round being clean for RRQ, I think they took everybody out. The same here. Economy's going to struggle, and we'll see the first reward. Yeah, I think as well, like it's just the manner in which they're winning them. I think Bhai. really struggling to deal with Gemkim, currently 9 and 5 at the top of the board. His हट जा operators बैंड has के been लुट। tough to deal with, but also just a lot of those utility combos. I think getting out of smokes has been awkward. I think Xvero as well with his Cypher utility has made it tough just to break through these chokes. And if you get caught in any of the chokes, you run into Teo salvos, you run into these reactive pieces of utility. It's put, I think you could tell it's put Fnatic on edge. And sure, 4 rounds on the attack side.
with the compositions we currently have running, I don't think it's bad at all. I'd still put Fnatic in the driver's seat for now. But if this ends as an 8-4 half, which with how some of these rounds have started to go, I wouldn't be overly surprised. That's a little bit more of a problem. So they want to try and stop that early. Well, round 9 kicking off. A lot of weaknesses for Fnatic. See if they can turn those into advantages. Bye. It's unlikely, and with Jemkin having so much impact so far, since this operator's been picked up, he'll be a big piece of the puzzle. तो मेरा फोन कितना हैंग करता है यार, इरिटेट कर रहा मुझे फोन, इरिटेट कर रहा भयंकर वाला कतई. Maybe finding some information here will help them out. Slow start, as expected, but leaning towards the B side. FNC classic और शेरिफ. I wonder if this is down to the Steel Garden. One way to level the playing मैंने field हैशटैग would be बोलते to हैं use हैशटैग that उनको हरा ultimate दिया. with the weaponry. So if तो you यहाँ पे sit मुझे out लगता the है side, ये में then हैशटैग easy 3 to step back, it's a slow पैसे पे ult हैशटैग 2 को भी activate. हराएगा. And then कम you don't रैंकिंग वाली, lose बड़ी any रैंकिंग, of your ज़्यादा weaponry रैंकिंग from वालों, that बढ़िया back ज़्यादा end बड़ी रैंकिंग retake. वालों को हरवा You रहे can see all हैं, of हरा this रहे हैं मतलब. utility being expended, set up to बड़ी try रैंक and मतलब ज़्यादा pull things that बढ़िया little रैंक bit वाले more हार रहे हैं, awkward. कम रैंक वाले Well, there's absolutely nobody here. हरा रहे हैं और बड़ी रैंक वाले हार रहे हैं. तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे हैशटैग 3 वाला हैशटैग 2 वाले को हराएगा. दैट्स माय प्रेडिक्शन. लेट्स सी. और ये माचुद गई वाईफाई की बहन का लोड़ा 200 Mbps का लड़ भोसड़ी चोद झाटू माँ का लोड़ा. ये माचुद गई भोसड़ी वाली की मादर चोद. भोसड़ा चैम्प खत्म होने के बाद इसको तो मैं हटवा रहा हूँ बहन के लोड़े को. झाट का पिल्ला मादर चोद वाईफाई. ये देखो इसकी बहन चुदी है, देखो खड़ी खड़ी बहन माँ का लोड़ा. पूरा राउंड की माँ चुदी है, पूरा राउंड मिस, पूरा राउंड मिस. थ्रिफ्टी वो भी बहन का लोड़ा थ्रिफ्टी मिस, थ्रिफ्टी मिस. रुक जा माँ के लोड़े, रुक जा भोसड़ी को. तू तो दीवार से निकाल के बहन को नाले में पटक के मारूंगा माँ के लोड़े. और एयरटेल वालों की बहन अलग छोड़ूंगा फोन करके. I think he even tags up the next player, which the spam, helps out Bosa. So मादर चोद एयरटेल. मैं बताओ ये फर्स्ट सेकंड सीड क्या होता है, फर्स्ट सेकंड सीड क्या होता है अभी बताता हूँ यार. रुको मैं आपके बाद बताता हूँ. थोड़ा सा लंबी तो नहीं, वैसे तो छोटी, बट मुझे मैच डिस्ट्रैक्शन हो रही है. मेरे को मैच देखने तो मैच वैसी बहन करोड़ मेरा वाईफाई चाहते रही. मैं मैच देख रही हूँ, वाईफाई की माँ चुद रही, मैच नहीं देखने दे रहा. भोसड़ी चोद अच्छा खासा बहन चोद 50 राउंड की माँ चुदवा दी. तो इसलिए क्या बोलते हैं, मैं इसके बाद बताता हूँ जरा. मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे जरा राउंड देखने दो यार. भोसड़ी चोद 50 भोसड़ी का क्रॉनिकल ने सेक्सी शॉट्स मारे. ये वेजी भाई तो डिस्कॉर्ड होके बैठे हैं, मैच उधर डिस्कॉर्ड, फिर मैं नहीं बैठ रहा. भला FPS और खाता है डिस्कॉर्ड और रिसोर्सेज और खाता है बहन का लैंड. लॉल भाई आज क्या हो गया आपको, क्रेजी कुछ खा लिया क्या? पता नहीं बहन का लोड़ा, पता नहीं कहाँ का गू खा लिया लगता है बहन चोद. जैसे गू लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो ज्यादा माफी चूत. पता नहीं यार, पर पता नहीं क्या हो गया और पता नहीं क्या खा लिया भाई. मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो यार. मुझे उल्टा बताओ बहन चोद, मुझे बताओ मैंने क्या खा लिया. बोल रहा मुझे खुद नहीं पता. बार बार एक ही दीवार बनता रहेगा क्या अल्फा? कभी मार्केट वॉल आउट कर दे. ले क्रेजी गाय को तो होद दिया. Guys, Chronicle deals with him. Scout का खाना खा लिया लगता है. अबे मेरा लंड बहन के लोड़े. Scout जो बहन चोद फेमस भी नहीं था ना, तब से गालियां बक रहा हूँ मैं बहन के लंड का. गंदी बुरी. Scout का जब कोई जानता नहीं था तब से गालियां आती है मुझे. The rounds that they've been winning the last couple have mostly come off the back of him. The Sentinel now overtakes Jemkin. He's 11-3 right now. And really overshadows the job that was done by Kushi. The fact is, भाई Chronicle क्या पेल रहा है बे? डॉट क्रॉसर लगा रहा है. मैं भी डॉट क्रॉसर ही लगाऊंगा. He did phenomenal. मैं भी डॉट क्रॉसर लगाऊंगा. 2 kills from the backside, but making it through that smoke. Similarly to what Fnatic was struggling with, also seemed like a death sentence. नीचे बड़े लगते हैं अल्फा भाई. वो झांट जैसी दाढ़ी मत उगाना भाई फिर से. एकदम झाटू लगता है उन दाढ़ी में. मैं अच्छा लगता है जी मुंह पे झांट आ गई. बहुत का करली घूमी झांट. That op from Jemkin on the other side has slowed down. A timeout from RRQ. 6-4 on attack with Sage. चलो देखते हैं डिफेंस में कैसा रहेगा. कितनी झांट उखाड़ते हैं फनेटिक वाले डिफेंस में. My lovely Sada is also streaming. Let me watch his stream for a bit. Salario mínimo de franquicia, 100 है ये. $5,500. Salario por. तो भैं जो लैंग्वेज बैरियर है भोसड़ी का. वरना साडाक पे तो मैं पूरी वॉच पार्टी देखता अभी.
E a organização ainda tem que botar comida, tem que dar housing, né? Tem que fazer os vistos. Você não sabe o caro que são os vistos. राउंड स्टार्ट होने वाला है. Opposition. आप भी क्लीन चेप हो जाओ, मैं भी झाटू बन जाऊं. मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं भी मतलब 2 रुपए की शक्ल बचे उसको ही बहन का लोड़ा झाटू बना दूं मैं. क्या जी बातें कर रहे हो? रॉबर्ट पैटिंसन न्यू भाई मैं कि क्लीन शेप भी टॉयलेट वाला भी सेक्सी लगूंगा और दाढ़ी वाला बैंकर वो मुझे का नाम याद नहीं आ रहा पर वो दाढ़ी वाला भी अच्छा लगूंगा और बहन जो बैटमैन का मास्क पहन के भी अच्छा लगूंगा भाई. मैं द रॉबर्ट पैटिंसन न्यू भाई. मैं रिजुल तोमर हूँ. झाटू लगूंगा मैं क्लीन शेप 1 नंबर का बहन शो. वैसे दिमाग की भोसड़ी हो रही है आज. तुम फिर मुझे और भोसड़ा बनने को मत बोलो. बहन चो क्रॉसर इसकी माँ का चूत. माउस कर्सर क्यों नहीं हट रहा है भोसड़ी का? Fnatic won't go running brazenly into that, but Kushi's trying to take advantage of the gap. अबे बोस्टर भाई फिर ओपन में स्मोक. अरे बोस्टर भाई. About to set up a smoke. क्रॉनिकल भाई स्लीपिंग. नींद की गोली खा के आए क्रॉनिकल भाई लगता है मैच से पहले. But Chronicle reliable takes the pick. Jemkin super low as well, and yeah, the wall is tripped on B, but Fnatic have already put their eggs in this basket. The A site being taken. Next Pharaoh tagged low. And a jump around from Kayak will catch him off. There is damage done on the other side though. Kayak is relatively low. They've managed to draw blood onto Boaster. RRQ could make this costly, but I don't know how much impact that's realistically going to have. भाई कौन सी झांसी फैंटम यूज कर रहा है? बेंचो रिकॉन चला भाई. क्या चला रहा है ये? नई स्किन कैसे चला रहा है? तू प्रो प्लेयर है. तू तो रिकॉन चलानी चाहिए फिर. जैसे 99% और प्रो प्लेयर चलाते हैं. जैसे और कोई स्किन ही नहीं है भोसड़े फैंटम की. That was something they'd be happy with their old composition, with the chamber in the mix. I think now that they've added in the Sage, क्या हाल है युगन? This is looking incredibly dangerous for RRQ, of course. Looking forward in the Chronicle by caught sleeping, not even caught lacking. Man, caught sleeping. Kicked into Abyss, which I'll be honest, historically wasn't good for. So Fab Vendor's skin line is 2.0 is out. Either is out. Over the last few months, they've been 1 and 6, so I think कोई फायदा नहीं भाई. बहुत झांट लगने वाली है फैंटम. relatively low, but बहुत झांट लगने वाली है. That's my pre pre-made notion about it. बाकी देखते हैं असली में जब आएगी तब देखेंगे कैसी लगती है. But I am not happy about it. Prelude Phantom. I can't even imagine that shit. I don't know. मुझे imagine भी नहीं कर सकता कि कैसी लग रही होगी, कैसी दिखती होगी या क्या है, या कैसी आवाज होगी, कैसी शूटिंग साउंड होगी. सप्रेसर के साथ प्रील्यूड की आवाज. प्रील्यूड की आवाज ही वो तीखी, लाउड, नॉट वेरी लाउड बट परफेक्टली लाउड, परफेक्टली साउंडिंग तीखी वाली आवाज है. अभी तो जस्ट टीजर आया, तो गन भी तो आएगी किसी न किसी दिन. Crashies, but it's more importantly Alpha here with the spike. He's got 2. Alpha walls up, pops the res, uses it as a bait for another, but X-Pharaoh delivers. And a 2 versus 2 spawns from this with the ult from Boaster. The spike will be reclaimed, but look at Munyet. Giving his position away. Clearly aware of the potential paranoia to re-swing, but he's not won the fight. भाई 50 HP, 45 HP, 45 HP भाई. रे राउंड नहीं जाना चाहिए. Please expect a main someone. Be a tough one to win, but it will come down to the timing. If he can find a gap, find some space, maybe there's an opportunity down to just 10 HP. What? Boaster classic से मार देता भाई. 80 HP left. That is absurd. अबे 10 HP. A miracle play from X-Pharaoh. ये इतना वाइड स्विंग लेने की क्या जरूरत थी 10 HP बंदे पे? Nah, dude, nah, they don't wanna win. ये क्या शॉट्स थे भाई क्रेजी. I love the slowdown, the slow-mo on the voice lines, but that looked like it was done. A big swing from Alpha. He was on fire, but X-Pharaoh extinguished hope. I think bro was clip farming. Nah bro, nah. 10 HP बंदे पे था वाइड स्विंग. After what was around, that was definitely looking like it would turn into an 8-4 half. Nonetheless, it was still a good half for Fnatic. So let's go down with Lou, who's talking to Boaster's parents. Oh, Boaster's parents, let's go. I haven't seen. I have never seen Boaster's parents. Just join me, Suzanne and Gary. First of all, welcome to Paris. And the first question I wanted to ask you, Gary, is that we know that your son has been, handling the IGL captain responsibilities for a long while now. So do you feel like he always had that extroverted, fiber in him?
Well, it's difficult to say, really. Obviously, he just took over the gaming and went away playing games in London. So yeah, I think that's where he wanted to go. Yeah, he was enjoying himself since the very beginning indeed. Donc on le sait, Boster c'est l'IGL, le capitaine, il a des responsabilités depuis le début. Est-ce qu'il a toujours été comme ça, un peu extraverti? Yes, spaceship for sure. Il était à fond dans les jeux, il 1000%. partait à Londres pour jouer, etc. Pour profiter, donc je suis sûre. I think qu'il bro avait was keep ça en lui farming. depuis le Ganta man début. show. Yes, it's Boster goat. Suzanne is for you because your son is not only a captain, he's also a content demon, especially a dancer. So what do we think about his dancing skills? Where did he get them from actually? Is it from you? He's always loved dancing. He belong to a local musical theatre school and his favourite was the dancing, ballet, anything. And of course now the K-pop. He loved everything, any dance. Any dance he can do indeed, K-pop, ballet, that's insane. Donc on parle aussi des skills de danse de Boster, évidemment. Il est trop fort, il peut faire de la K-pop, etc. D'où est-ce qu'il tire ça? Eh ben, il est à l'école, d'une école de théâtre. Il adorait la danse, donc forcément il est à l'aise pour la K-pop, le ballet. Il sait tout faire. And let's see now if Natty can take the win on this map. Boster! I love the fact that we have just shown clips of Boster twerking to his parents. I'm sure they must look up on the big screen and go, yep, that's what he's done for the community. Getting into your The cutest VCD player ever. Before the next half, and Chronicle has to Lovely be the ace. highlight. He started Boster out is such a 5-0, vibe, ended the half 1000%, dude. I love this dude. 13-4. The man was hard to shut down, Tom. Yeah, he wasn't really dying at all throughout. Like, it made it just so difficult. The finances of Fnatic became so good all the way through, and it was him and Alpha, yeah, that I feel like really put up the majority of their rounds. Of course, going into the defensive side, you kind of expect more of the same. Maybe with a little bit more from Kayak. He's been a bit quiet so far, but obviously we say a lot with this attack side. It's very difficult getting into those sites, and that's where I wonder if Jemkin's going to be able to have the same level of impact. Like, can he now be as good on the entry as he was on the defense? Because it is much, much harder. Oh, Fnatic! They're giving them a taste of their own Let's medicine. fucking go, bro. 5 HP on Xpharaoh and 2 people down already. Let's go. And left Xpharaoh down to 5, a much more successful Let's start. fucking go, bro. Let's fucking go. Thomas, the man we're on board with right now, MASS1VE, he has had a tough first half, and a man we have high expectations for. I don't think Fnatic will get to see this side of MASS1VE for much longer, but for now, certainly a lot more to be desired. And with this pistol, if Fnatic win this, that's both pistols under their belt. That was quick. अब throw भी तो करेंगे. देखो तो जरा कैसे advantage throw करेंगे अपनी. Yeah. I think it'd be a bit more. देखो एक down हुआ अभी देखो. देखो ये भी एक आधे और मरेगा. Helped them out a little bit. A full blind shot for one of them. ये दूसरा down हुआ. 3v3 बना अभी देखो चौथा भी मरेगा. तो तीसरा भी मरेगा. Boster by said I'm not taking that shit anymore. I'm not letting this round get thrown anymore. Boster by said I'll do it myself. Crazy. My prediction gone wrong and I'm happy about it. Bro, the FNC 12 देखो मैंने बोला था ना पहले बड़वे थ्रो जरूर करेगा और 2 डाउन हुए अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइमिंग पे अलग-अलग किस्मत से वो ब्लाइंड में मर गया तो बोस्टर भाई ने रोक लिया. Do exactly what your opponents put into play, and we've seen this from Fnatic before. I'm a gardener. I got flowers and shit. क्या बोलता है भाई बोस्टर कुछ भी. To be honest with you, I don't know what that means. कुछ नहीं. Hell yeah, garden away. Fnatic 8-5. Strong lead, and they're up against Classics. For RRQ, farming those orbs early in the name of the game. You can see the crazy guys containing that A orb. अच्छा मैं तब पानी नहीं पी रहा था मतलब मेरा मॉनिटर और माइक गीला होता अभी वो भी गंदा वाला. A little bit of a ruse sold on the other side with the salvos. Of course, you can see the direction that they fly from, so doing it from the right side of the map is important. Already being tripped, and that's going to buy that additional little bit of extra time, but they are swarming in. A lot of pressure. Oh, 4 ace, Chronicle ace. Second shot, because it looked like
like it could have been all of them. It looked like it was one. Ace, Chronicle. As much as humanly possible, but that does mean there's an opportunity for the ace, and Crazy Guy does not want to give it to him. This man was confident enough as it is. His 17th kill already. Oh, Crazy Guy. He's trying to go around the world. It seems like Kayak. In fact, they're all trying to give the opportunity for this man to get the ace. Yeah! Let's go, Kronis! Lovely! Oh भाई क्या सेक्सी एस था भाई क्या क्रेजी शॉट था वो 3 बंदे कोलैटरल 3 बंदे कोलैटरल विद द गार्डियन holy shit lucky as if but one bullet at 3 hits bro one bullet at 3 hits and that's what you like to see from a team. Panatex should take some notes. I do feel incredibly bad for them though, because it's like you swarm in one player, 3 of you all line up for one. Look out for not shooting. That's why they are a team, man. That's why they are a team. भाई कुछ crazy reaction तो फिर आपके भी clips बनेंगे. देता था यार मैं लोड़ा कोई clips नहीं बने. Nobody fucking clipped any shit. No one was there on stream to watch any shit. No watching, no viewership, nothing. कुछ नहीं बना भोसड़ी का. चूतिया बना थे. Surely it's running out of time. There we go. He's back out, but Crashy's out of the round. He's taken down in market, and RRQ used that knowing that rotations will come through. Now they look to pressure towards mid. This is the right read. Fnatic are offering up a fight, and if the numbers from the attack go that way, they could have had a duel. Very heavily favored to themselves. In fact, they still might. Boaster's going to be walled up here. They've seen an audacious play, but he goes jumping on top of the box. The next Pharaoh in with the early punish. A 3 versus 5 now. I don't mind the idea, but the additional jump made it difficult. Chronicle on the other side, they're going to have at least a little bit of worries about that Guardian after the last round. Alpha yet, he's being watched. Well played by Munya, making sure that lurk can't come in from behind. And while it needs to be a 1v5, but it's not going to happen. A solid round from the side of RRQ, patient in their attack. But as we know, with how clean the last couple have been, स्पीड ने मीट दिखाई उसकी और भयंकर फैन फॉलोइंग बढ़ गई. मैं मीट दिखा दूंगा बैन हो जाऊंगा अच्छी तरह. चैनल वैनल जो ये बनाया जितना भी बचा कुचा भी छुट जाएगा, सारा उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा. YouTube सीधा बैन कर देगा. Like you said, this is a different flavor perhaps from Fnatic. 18 and 5 on Chronicle. He had a lights out start to the map, but there has just been next to no कर्सर क्यों नहीं हट रहा है यार? मैंने डिफॉल्ट भी करके देखा रीसेट. कर्सर हटता ही नहीं है. It'll be a slow methodical start from RRQ. Pressure towards the A site, but the spike still sat outside B. The salvos sent through to clear wine. It's all about just pushing Fnatic back, limiting how much info, how much control they have to play with. already, having to bait out some of that early utility, wall being used over into A main. This could be a big part of the game for RRQ with how much is online. Kayak, again, going walkabouts. The reveal will let him know that there's a couple of players to his right, but that's not who he's looking for. He's expecting some form of reaction. Feeling as though we haven't really seen RRQ caught by any of this. Each time they've been patient. But now with 40 seconds left on the clock, bear in mind that the Vice wall has also been moved into middle, so they have a lot of information on that part of the map. The push, though, not going that way. The drone already put through on A, alarm bells ringing. Fnatic know the hits coming in with that paranoia having landed. Kayak doesn't find much. A quieter performance continues. We look for another hero on this site. Alfier grabs some info, but swings into heavy traffic. Boaster isolated. They'll be taken down after one. Chronicle and Crashies. Okay, that shock dart makes it doable. I was already thinking perhaps the save call, but now they can go for this. I'm a crazy guy taking a fight alone. He's giving them a real chance. X-Pharaoh so desperately low. They'll play this together with a flash still in play for Chronicle. That's a good way to burst them out into this site. If X-Pharaoh doesn't break this one yet, be blinded up. It's going down below. Oh, it's going up top. Okay, they're clearing it. Now looking to fight together with the reveal.
They've seen one, they've seen the other, but xFaro lands the shot, and it's all onto Crashies. The drop down should be deadly. A double swing, but xFaro gets ahead of the play. Crashies running out of Let's go. And barely a second. 0.7, 0.69 something around time. 0.63, okay, that's fine. 0.06 से दूर था मेरा prediction. मैंने 0.7, 0.69 तक बोला, 0.63 था. That gets the timing perfect on the swing, but I think Rarely a करो. little bit of miscommunication. Scarcely miss. This shot dart was huge because, as you said, this was going into a 2 versus 4. Instead, भाई it बचा ends लिया, up with बचा one लिया, round बचा लिया. immediately taken out, and then the aggressive position Thank of you, Crazy Crashies. Guy. That is just a poor post plant. Like, I can forgive the guy planting the spike. You don't know that's coming. But from then onwards, you have one guy super aggressive. Then you get it into the 2v1, and from that point onwards, you just need to wait for the drop. That's a shame, and RRQ as well, with the margin of error that they had in terms of economy. This has pushed them to the limit. This could give Fnatic a little bit of momentum to carry it across the line, to at least push up She's the GOAT. a win here. 1000%, bro. I mean, put it this way, RRQ put a lot more pressure on themselves for this round. What could have been their redemption arc. At 9-7, the scoreline closing in, the walls closing on Fnatic. It's looking like a sprint to the finish line for the defense. One good thing is that RRQ have a lot of potential to pad the gap with ults. Hunter's Fury 1 away. The drone's crossing path, but not really finding out too much, and the pistol shots will be heard, but again, it's just trying to bait that wall being broken. As they now look to try and move back to the other side of the map, but this definitely has its risks about it. Fnatic haven't moved. They'll catch the burst, and actually that's wonderful from Cushy. Crazy. 2 players down, Kayak trying to rotate into position. He's hoping someone peeks off it, but they don't. Another control being taken. Crazy shots by Fnatic Cushy, can't bro. afford to fight this. Their economy was already on the brink after that last round. They're just going to have to hold on to their guns. Well, especially, I'm looking at that A-side take that RRQ were posturing for at the very start of the round, and I'm thinking, well, this is actually disastrous. If they run the same play, not only will individuals be a little bit more ready for that, but if the play goes even if it goes a little bit better for RRQ, the retake, they are playing in the world's biggest tournament of Valorant, यार. It's so तो much वहाँ के लिए stronger, qualify कर रहे तो especially the यार Steel Garden. It would have to be मारना तो convincing in that A push. And just instead, they like decide to go back to the B side. mandatory They for decide to them. push into the players who have those ultimates, into the heavier defense setup. Especially looking at Chronicle just as an individual and then with his utility. But the fact that Cushy finds not तो ये one तो but save both round of है. them, complete game changer. That's a course correction on what was a disastrous previous round. 10-7. 3 players save on Fnatic though. They'll be able to fight for this next one. Yeah, no, they needed all of those guns. With only Crashy surviving in the last round, he's the only one that has any. He's surviving in the last round. He's Hope the only one that some bonus cash. And even still, it calls into question if they actually want to go for this. तो देखो It's pocket not vision the you in my best of purchases if they do. They True, may opt true, to just true, play with the true, weaker guns that they true. have, and especially now with a अबे ये अभी भी Dimension डेफिनी है. Fury combo coming in डेफिनी for रहो. RRQ. I'd almost कितनी say बार it's आगे not चले worth गया the हूँ. risk. Love this as well. Boaster's giving the rifle over to Chronicle. He'll play with the Frenzy. That's a team player right there. When Chronicle's having a game like he is, you better be giving him the rifle. Not sure about peeking short with the Frenzy, but it's all for info. The fall back. Very early use of the drone as well from Crazy Guy. They're looking to really claim this space towards middle, but Fnatic are responding. They've started to push down through B round main. देखते हैं. Take some deep पोस्टर control भाई of पे their own. frenzy है भाई. It's not. Oh, it is being watched actually. It's Crazy Guy just posted on the angle. ये क्या आवाज आई भाई? It's the amount of delay that they currently have बोलो पाजी कैसे on हो? that A site. पर ये गंदी सी आवाज क्या है चिल्लाने की? Chronicle for कौन सा a है? lot of the rounds has been on this B बढ़ाने दो side, so तुम्हारी. they'll now deep बोलो. ball, which again will कुछ give नहीं, them मैं तो information if कितने the shot 45 मिनट break पे बैठा हुआ था डिस्कॉर्ड पे डेफिनेटली नहीं हटा रहे. position is clear, and instead they hit अरे set तो up a फिर मैं fire. हटाओ ये बोलो ना दो के बाद लिख रहे हो तो फिर मैं स्ट्रीम पे आया. सुनो तो मैं लिखने वाला था मैं लिखने वाला था मैं स्ट्रीम पे आया. मैंने देखा कि किसी से तो बात कर रहे लॉबी में. Around this position. लॉबी में किसी वार्तालाप चल रही थी तो फिर मैंने कहा छोड़ो क्या डिस्टर्ब करना. नहीं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ.
30 फिर मैं seconds थोड़ा left on 15 the मिनट और clock. रुक के फिर बोला Oh, there's nobody here anymore, at least with the weaponry. And this hold into mid, it could be a problem. That's a spike down. They need to run back into the hands of Chronicle. He's waiting, but he can't quite win the told you fight. guys, told you. Jimkin once अब next again round भी with नहीं another क्या जीतेगी बोलती massive पब्लिक round अमूल माचो individually. पहन के नाचो And for a second, that looked like that could get यार अभी chaotic, ये but वाला ह्यूमर मेरा थोड़ा ऑफ है it didn't even seem like a problem in the end. इसलिए मुझे फनी नहीं लगा जीतेगी फैनेटिक मैप ही है मैप ना Toटी जा रहा है ये make his way all the way onto that side through market to spot those players in the first place. Those are the guys who would Toटी be जा रहा है running down ओटी mid to pressure these attackers who've just lost their weapons. RRQ कमबैक कर तो रही है यार अब But देखते हैं instead, कब तक करेगी countering that steel guard. Hunter's It Fury was thrown 10 through and as 5 well. I guess या 10 and 6 था कुछ guys and then 10-5 I think it found its mark, but again, it's all तो about रहा है just देखो pushing those players out of position. Lack of comfort. Here is my Two pocket rounds sage running ahead to now are not Fnatic your as they pocket call a sage it's timeout. Kayak's RRQ pocket sage starting to heat up, starting to catch up with 2 rounds in a row. timeout And the way that the economy's Yeah. been, I mean, it's still looking pretty shaky for Fnatic. They're not on the same page fiscally. You could very well see RRQ push up to double digits soon. It's the right moment to take a timeout. Yeah, I think as well, just like, I think that RRQ have been very, very quick to sort Prelude of का वो adapt देखा teaser? to everything that's going नहीं on. अभी नहीं Like, देखा they know मुझे that चैट the में big बताया cost तो for किसी ने them will be if कि आ they गया run है late into देखो a भाई round and there's टीजर में तो the कुक किया मतलब thorns बंडल कैसा भी हो online, बट the shear टीजर is तो still कुक कर there, दिया भाई the उन्होंने sage wall चलो is देखता हूँ इस available, वाले and मैप each के time बाद you're watching them ट्विटर पे methodically कि through the round, इंस्टा okay, पे और we're gonna यूट्यूब पे भी figure डाल out दो where each दोनों piece जगह ही of the होगा मेरे puzzle साथ is, इंस्टा and पे then we're देखा gonna मैंने execute with ठीक है 35-40 seconds left. Like, they कितनी still अच्छी give ब्रांडिंग है भाई themselves enough फनाटिक की time, but by that फनाटिक point, की all है of the things that 2000 make it very awkward for them 2005 are से है gone, शायद because फनाटिक Fnatic आई have गेस had या to उससे पहले react से ही है in case they're gonna go diving लिक्विड तो into the 2000 same से है And लिक्विड you तो can see, I 2000 think से the मुझे main one पता है there was the क्योंकि इस साल लिक्विड getting rid of 25 the एनिवर्सरी thorns on जर्सी short लॉन्च and हुई then having that shear removed. The मुझे याद second नहीं आ that रहा was फनाटिक gone, का पर their execution फनाटिक भी बहुत picked टाइम up से आया तो pace massively. ब्रांडिंग ये सब तूने अच्छे से आता ही होगा यार मास्टर कर Barriers लिया are होगा going up once चलो राउंड again. देखते हैं Timeout finished. And we've seen फिर this भी trip a बच few गई times. It was in the previous round, and कितने actually सेकंड पे Crazy आप Guy was holding, letting them take the space, 130 looking हाँ to ठीक push है them as they इक्वल है tried to इक्वल walk around the trip or walk deeper into कायक the तो trip. बोस्टर के नीचे है And it's all just to deny बहुत that early दिन हो shock गए dart that's कायक ने being एक put क्रेजी through. And of परफॉर्मेंस course, दिया हो सही बता रहा Fnatic for now हूँ have बहुत no थक रहा है way देखो to know ये शॉट कायक that info is नींद में online मार late लेता round. है It's given RRQ a lot more to play ये with. तो The wall मेरे of जैसा defeat खेल has रहा been है broken so quickly. They know there's numbers here, but RRQ have been doing a lot of posturing. Yeah, look. That's Paranoia and मेरा और तो 1900 से पहले से है कौन सा और अच्छा No, they're very successful in terms of baiting out their बायर opponent's वाली utility and not overcommitting either. Sometimes you see that work out well half of the time, and the other half you're losing a और player or अल्फा two. कभी किसी को हील ही नहीं That करता doesn't है seem to be भाई the case for RRQ. आएगा ही Very नहीं उतना हील contained करने when they're baiting out that util early round. नहीं जा रहा है मार्केट I देखो think they've genuinely been fantastic. Not overdoing it. Not taking too many risks. They're now going to go back to the exact position कोसते that रहो they कोसते sort रहो of ऐसे ही baited out कोसते रहो before, the slows. एक आधी और गलती बताओ Delay them at least a little bit, and there are quite a few players टोको here for टोको Fnatic. क्या पता कर दे वही चीज कुछ नहीं राउंड जाए जा रहे हैं बस At least on मैप both, क्लोज they're करने में definitely बीटी not हो जाएगी ideal, और but क्या again, this is just posturing. कौन से And वापस now गया they're back पिटेगा towards Yes. Kayak. कायक He's been पिटेगा यहाँ having a पे rough game. They could definitely use him helping them out, and with the Hunter's Fury in combination, Oh, that bomb creates drop. distraction. Lovely. That's the spike on the deck. 15 फ्लैश seconds भी है left. अभी तो This कायक one's पे looking a little bit टाइम more नहीं rough. मिला They बेचारे need को to get a पहले ही move तुरंत on. कर देना And चाहिए था Alpha, इसको yeah, and नहीं नहीं Chronicle राउंड तो at the back फनाटिक of ही this जीतेगी site. All they need to do is Final hold boss the line खड़ा है at अभी तो least a यहाँ few seconds, and in fact, they've already got the thorns to do that. आ 3K क्या भाई फाइनल बता बॉस भाई क्रॉनिकल खड़ा है भाई अरे आपने वो गार्डियन 3 के देखा है आपने वो गार्डियन एस देखा एस देखा Yes, yes, आपने? yes, भाई yes. मेरी तो खड़ी हो गई टांगे ना चेयर से भयंकरी मैं उछल गया लिटरली क्या एक बुलेट से 3 को लैग तो राइडर वेजी खाली करवा दे मैंने क्या किया They get towards that site, and then Why you blame me, you're bro? playing a slow. he First blame you of all, because you appreciate the bundle then he you're thinks playing okay a it slow is good round and he against buys it Fnatic. नहीं मैं गलत बंदल से अप्रिशिएट नहीं करता भाई They know how to play against slow rounds. They play a lot of them. But secondly, you're running with 15 seconds left into a Vice setup, and that Vice setup belongs to Chronicle. Chronicle का गेम है easy I yes also want to say as well, I want to give credit और Chronicle to Valorant I is think at the easy timing of that mode Hunter's Fury. I think without it, they probably clear Kayak much quicker, and then maybe you have an Doombringer. extra 15 seconds on the clock. डूमब्रिंगर अच्छा है भाई to get फैंटम into अच्छी the है
rather than 8. Yeah. Which also comes back to शेरिफ जज होर्डिंग सारी है। अरे कायक भाई ये कैसे मिस कर रहे हो? कुछ उसको नजर लगाइए किसी ने तो बहुत भयंकर। भाई गंगा में स्नान करवाना पड़ेगा लगता है, जल्दी कल ही कराता हूँ। आज का तो मैच स्टार्ट हो गया है। रहने दो, गंगा का पानी गंदा कर देगा वो। क्या मतलब पहले गंदा है? मैंने तो कुछ बोला नहीं, नॉट माय वर्ड। देखता हूँ भाई, मेरी आइडिया होगी क्या करूँ। टिकट रेस करो और भाई ये कितनी फ्लॉलेस स्किन है इन फनेटिक प्लेयर्स की। W's
ये कह रहे हैं, एक बंदा भी चैट पे कह रहा है ये कितनी फ्लॉलेस स्किन है इन फैनेटिक प्लेयर्स की, दे नीड टू ड्रॉप देयर स्किन केयर रूटीन लाइक फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। जर्सी दे दो नई वाली स्किन केयर, तो भाड़ में जाए, जर्सी दे दो नई वाली। Position being created, awkward, and the openers for RRQ are fantastic. कायक को टारगेट कर रहे हैं लोग, कायक पता नहीं क्या कर रहा है यार, कितना टाइम हो गया उसको अच्छा खेले यार, वो लास्ट के 2 मैच भी टोरंटो से थोड़ा फेल ऑफ है, ईडब्ल्यूसी में भी नहीं खेला और स्टेज टोरंटो के वो फाइनल से फेल ऑफ, दो फेल ऑफ थोड़ा सा। Chronicle hard carry, Chronicle making me hard and carrying the team, true bro. कायक डिसीजन चार क्वेश्चनेबल चल नहीं रहा है अभी, जब चलेगा तो अपन ही उसको अप्रिशिएट करें, वेट करते हैं और क्या। हम इंडियन टॉक्सिक फैंस किसी बात के इसी बात के तो हैं। आई मीन कॉलेज स्टूडेंट हूं। वेजी भाई ने भी तो मिनिमलिस्ट का कुछ तो मंगवाया है, स्किन केयर पगलू। वेजी भाई स्किन केयर पगलू है क्या? स्किन केयर नहीं, मैंने सिर्फ वो मंगाया बस, एक फेस वॉश है, वो फेस वॉश मंगवाया भाई सिर्फ, स्किन केयर उसके अलावा कुछ नहीं मंगाया भाई। स्किन केयर रूटीन नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो अभी तक खोला भी नहीं है मैंने, अभी तक यूज ही नहीं करा है, साबुन से ही मुंह धो रहा हूं पिछले 4-5 दिन से। डिटॉल साबुन सबसे बेस्ट। Crazy Guy's utility in this round just made that B site hold so awkward. It forced a really aggressive fight. ट्रैक्स लीक हो रहे थे अभी मैपिंग देख के। हेलो राउड एक्सी 911 ये अमेरिकन हो क्या? Really rough time on the stage at the moment. Not He's been my caught words. up by Mon yet, but this is a player we expect to have large amounts of impact. गया बोला था Speaking ना of गया another though, that's a nice shot from Crispy. Alpha. What a shot. It removes that lurking कौन गया वो player. बोले मत, गया बोल दो, जो मारे उसको बोलना, देखा मैंने। पोस्टर को एनी टीम के साथ में वीसी में ही बैठ जाए, अबे तो वो एनिमी टीम को थोड़ी मार्क करके दे रहा था पिंक पे। स्किन केयर करने से बैडी पड़ जाती है, हां इजी। Any aggression. Yeah, I mean we're talking about pistols. बैडी के लिए भी 2-4 प्रोडक्ट गिफ्ट कर दो। मार दे प्लीज कायक, यस यस वी हैव यूरोल्ट एंड सेजल्ट एज वेल, कैन वी मेक यूज ऑफ इट? सेजल्ट तो यूज नहीं हो पाएगा मार्केट के बाहर, मुश्किल लग रहा, टाइम हो जाएगा वो। The Kayak's already got plenty to work with. This is now winnable for the defensive side, and RRQ need to tighten up the ship. They also need a pick, and that's what Jemkin gives them. Kushi following up as well. Revice. Now a 2v2, but the res will be used. Fnatic Revice. not looking Revice to your let notes. this round slip just yet. The flash pops, and I love the thorns to the back, but they don't get activated, and Kushi continues to deliver on the backside. Monster landing one, leaves Kushi alone. But it's a 1v1 टाइम थोड़ी है so यार। desperately low, and the clock drains. एस अब खुशी एस कोई राउंड नहीं निकालता भाई, कोई राउंड नहीं निकालता भाई। He has been so खुशी एस गाइस। 1 HP था, उस पे भी हक दिया था। There's been rounds that have gone late where you see him running and अगर get a मैं तो double. अमेरिकन ही हूँ, all किसी him. भी इंडियन के नाम में रॉबर्ट सुना है? नहीं 6 नहीं kills भाई। to be had in the round because of the अरे res. but पजामी भाई आप I don't think anybody throwers तो on the छोड़ो, RRQ side of things is going to be too they came worried from about all that Tidy one. and talk shit about streams Solid and throw hold to game। end अरे it out, moving him up to चिल्ला दो 19 चाहे था on the जो आज board, मेरे अभी overtaking चैट Jemkin. वाले इवेंट्स में था But this is भाई, why Fnatic लिटरली now वो have 15 साल themselves से ऊपर इसका नहीं एक होगा। साउंड आया न्यू चैंप्स का। उसने अच्छा है। इतनी टॉक्सिसिटी करी ना कल रात को, मैं ऑफ स्ट्रीम था तो ज्यादा बोल रहा था। Now is where they फट need से to रिकवर हो recover जाएगी, because RRQ 10-11 हो गया है, building to जेमकिन this अल्ट attack है। side. चलो भाई ये मैच, ये गेम तो गया है। Finding the info, Kushi finding the tags and और finding the अल्फा भी लो ITL है of Fnatic. He will भाई, ये lead from अकेला the बंदा death है जो कुछ screen, but करता है Chronicle भाई। able to trade things अरे back, हग्गे बेंच removing this एक extra 4v4 smokes in the late इनेबल round. मतलब इक्वल है अभी तो, चलो देखते हैं। मतलब कायक फॉर्म में था, अल्फा हग रहा था, अल्फा फॉर्म में कायक हग रहा है, मतलब यही करते रहे हम और स्ट्रगल करते रहे। Thinking about getting aggressive as the Rose Garden goes through. अंडर 11 बैठे सारे। Kayak, he's found one. A wall bang on the Crazy Guy, but चटका दिया Jemkin, उसको, he's keeping this सीधा डिफ्यूज कर दे वरना at least मारूंगा under बहुत। control for a आ moment, गया शॉट से even with दल्ला the मारने के लिए, pistol in 4 बंदे पे अकेला पे। play. Around for ना ना the ड्रोन Sparrow's ड्रोन going ड्रोन to be ड्रोन टाइम बाय all कर that रहा it comes down ड्रोन to, तो but डॉज कर रहा है he's got to वो, swing गया into a राउंड हार plan. पर गया। एक्सपेक्टेड तो रहेगा, Just cannot deny the diffuse हार गए from राउंड, देखा हार गए राउंड वो लोग। एक्सपेक्टेड तो रहेगा। Fnatic. They edge out this round. आप भी कुछ दिन पहले अबे अल्फा खड़ा हो गया, सही अब तो गया नहीं मैप ठीक है, गया। स्ट्रीम मेरी। अरे दीप भाई तुम आओ डिस्कॉर्ड पे, तुम Every single time there's a moment लिटरली that it looks जो like क्रॉनिकल ने RRQ बंदा gonna मारा get ना वो back into बहुत this. इम्पैक्ट Fnatic just फर्स्ट जो पिक find लिया an extra level, an extra little bit काइंड of ऑफ, मतलब जो form. बोस्टर का ट्रेड लिया सबसे उसने बड़ी हमको। बात तो ये हो गई कि स्मोक्स डाउन हो गए, तो वो हेवन आउट आना थोड़ा बेटर इजियर हो गया, और वहीं से रीटेक हुआ हेवन से, शॉट से तो रीटेक हुआ ही नहीं है। तो यस दैट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एंड गुड पिक देखा जाए तो। भाई खड़ा मत, तो तू मत खड़ा हो भाई, बाकियों को होने दे, तू मत हो।
ट्रॉमा हो जाता है मुझे। बच्चा टॉक्सिक मतलब अरे बहुत गाली गलौज जज भाई, बहुत कौन? गाली गलौज, बहुत गाली गलौज। अरे एक बच्चा है यार, उसने अभी नाम चार्ली कर रख लिया। चाहे कि जो बंदा अभी असैसिनेट हुआ उसका नाम आईडी का, तो मैंने देखा बच्चा है, चार्ली समझ लो। करके। Like considering they've lost both pistols in this game, it's been a fight वो back कल मेरे every आगे single टीम में time. आया था, भयंकर Kayak is gonna get पूरा himself गेम into the corner. इरिटेट। मैंने भी थ्रो किया Hello बराबर bro, फिर। bro, रोते hello. रह गया। Where are you करो bro? मेरा I'm main है using throw। the spike bro. What are you doing bro? It is. and You're once getting again, Euro dipped winning bro. that fight time and time Busy in again. getting Euro dipped. His sight hold though has been devastating. हम तो ऐसे 4v5 भी खेल रहे हैं ना, कायक को तो खाली एक बस वो पांचवा प्लेयर फिल करना पड़ता है इसलिए लिया है। भाई इतना टॉक्सिक मत हो भाई। तेओ मॉली करने वाला सेक्सी। Crashies has been pretty reliable. The utilities keeping them out of boathouse for now. The push comes to a slow W's for यार RRQ. crashes। बट ड्रोन नहीं करना चाहिए था They मैं। haven't set their sights on it just yet. The run through the smoke successful for Xfero. With Chronicle already gone. Boaster and Alpha have a difficult Fnatic is decision. winning this round, guys. Boaster redeeming himself. Oh! Yeah, another Well, one. it's no longer a Boaster's decision. lovely. No debate. Jemkin's down, and it's Xfero and Munyet Both sides, against guys, Boaster rush. and Alpha. Easy kills. One in smoke, you take shorty, you kill him. Back into the 2 versus 2. दोनों घुसो ना स्मोक में एक साथ। There'll be somebody within this smoke already. Alpha are not really willing to risk it, but eventually jumps through, but doesn't realize maybe there's somebody on the other side. Oh! Yep. And even gonna try it Okay, out. okay. We got this, guys. We got this. 3, 2, 1, dead. Let's go. Map closed out finally. Not choking it out. Standing once again. भाई जो बोल रहा हूँ सही हो रहा है भाई, मेरे 1 मिलियन हो जाए मैं रेडियंट Eventually, Fnatic, they got the job सब मेरे done. सब्सक्राइबर। It's a nail biter of a map, but Fnatic take it 13 They say to I got 10. throws in my Revenge Radiant denied for RRQ. came in now but up next, and throw the in your shake-up games. in the Act map pool immature. with You Abyss must and know Corone. him, I guess. It's Aim all labs to enjoy. play for after the break. ओह रिपगोर आया था, क्या हुआ? किसके लिए? मेरे लिए बोल रहे थे, क्या बोल? पजामी मेरे को समझ नहीं आया, हिंदी में बताओ ना। तुम्हारा अल्फा ने क्रेजी भाई, यस क्रेजी शो। इंग्लिश में जरूरी नहीं अपने को बोलने का। मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चैट में, तो आप मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं खाना लेके आ रहा हूँ, तब पहले आपकी बात सुन के जाएंगे, फिर अपन खाना लेके आ रहे हैं। बेट एंड अबे को एक सिर्फ एक डीएम खेलो। मैं हिंदी इज बैड। अरे कोई नहीं, आप बैड हिंदी लिखो, बट इंग्लिश तो आपकी मेरे बिल्कुल सर से ऊपर। हमें बस BLG का बैकलॉग क्लियर करो। क्या क्लियर करो भाई वो बैकलॉग यार? किसके लिए बोल रहा था? मेरे लिए बोल रहा था कि आपके लिए बोल रहा था कि मैंने उसका थ्रू किया? पहली बात मैंने थ्रू नहीं करा था, उसके डुओ ने गाली गलौज चालू करी थी, ठीक है। सेकंड थिंग, वो उसका रेडिएंट रैंक अप था नहीं। थर्ड थिंग, मैंने थ्रू नहीं करा था, मैं बुरा ही खेल रहा था उस गेम। बाकी अब उनको जो बोलना है बोले मेरे लिए। वैसे भी मैं कुछ भी बोलूँ। तुमको नहीं लगता ये स्टेज को ज्यादा ही स्मॉल? मुझे पता नहीं भाई। नहीं इसको बोला होगा हाँ, क्योंकि रिपगोर आई डोंट थिंक मेरे को ऐसा ओपनली कुछ बोल लेगा। लोगों को खिलाने हैं भाई, इसमें छोटा क्या है? ठीक तो है, इनफ तो है। सारे पीछे पे आ रहे हैं। ठीक-ठाक बातचीत है रिपगोर से, तो मेरे को कोई इशू नहीं। XP या क्रॉसहेयर इट इज ब्रा। अरे बसड़ू जेमिनी ले लिया है, दे दो अभी भाई, जल्दी दो। बैकग्राउंड में कुकिंग करो। He was talking about Peach Gaming and talking shit about people. अब दूसरे स्ट्रीमर्स का मत बोलो। I guess Peach is also used to it. She doesn't care as well. It's all right man. Part of what we do. Streaming है तो hate तो मिलना ही है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, कल रात ये गेम कितनी देर लेता है खुलने में? बच्चे ने बहुत थ्रो करा भाई। मैंने उसका नाम देखा बाद में जाके, एंकायरस उसका AG है, तो में है ठीक है, तो है वो। और आपको तो वो स्टेज भी नहीं मिला। योगन कूल बन रहा था, बहुत कूल बन रहा था। लॉल योगन को तोड़ दिस। चलो अब अगले मैप में बात करेंगे। मेरा पीसी हैंग हो गया था। हुआ क्या? चलो एक डीएम लगाते गए जब तक मैं अगला मैप चालू। और अगला मैप कौन चलाएंगे भाई? Match found. Surrendered. White flag. Flag 3 in VCT. करोड़ नहीं खेल रहा यार मैं, दिमाग खराब होता है करोड़ से। भाई कोई तो था जो मेरे से पूछा था कि भाई मैं फ्री फायर होता हूँ डीएम में, ये वो। अगर भाई अभी पूछना तो पूछ लो।
फिर बाद में दोबारा मेरे को तो भाई साउंड ही नहीं आता, कहाँ से बंदा भागते हुए आ रहा है। थोड़ा एयरफोन्स पे काम करो, एयरफोन्स ले वो नए ढंग के कुछ, अब होगा काम। गेम सेंस कम होगा, इसका कह रहे हो तुम? गेम सेंस कम होगा? साले मेरे से बज रहा है बे। Who are we? FNC. Get ready. ठीक है, का है हेडफोन? 3000 का हेडफोन लेके भी तुमसे आवाज नहीं सुनी जा रही। बड़े गु आदमी हो यार तुम तो। भाई उसको 140 दिया, मैं किल कर गया कोई और। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, कहाँ का इंसाफ है ये? पता नहीं, कुछ तो इशू हुआ है। अबे स्टीरियो पे रख रखा है कि मोनो ऑडियो पे कर रखा है? इन गेम सेटिंग चेक करना ऑडियो की। तुमने स्टीरियो सेटिंग रखी है कि मोनो ऑडियो रखी है इन गेम में? भाई क्या एंगल लगा के खड़े हो जाते हैं भाई साउंड सुनते ही। HRTF ऑन करना रे। नहीं, HRTF ज़रूरी नहीं, बिना HRTF के भी देता है आवाज़ अच्छी, देनी चाहिए इनफैक्ट। बिना HRTF के भी अच्छी ऑडियो आनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि HRTF ऑन होगा तभी आएगी। बॉडी शॉट्स What the fuck? कूद के मार गया भाई। स्टीरियो है शायद, कुछ स्टीरियो है, फिर क्या इशू होगा भाई? यार फिर तो तुम्हें देखना पड़ेगा यार अपना सेटिंग्स वगैरह में। 3000 का हेडफोन लेके तो आनी चाहिए आवाज़ अच्छी, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए। और कंपलसरी भी नहीं है HRTF, पता है? बिना HRTF के भी खेलते हैं कुछ प्लेयर्स, ऐसी बात नहीं है कि HRTF के बिना ऑडियो ही नहीं आएगा। अच्छा, इतना तो पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, आगे पीछे चलो सेकेंडरी बात है, लेफ्ट राइट तो पता चले कम से कम। फिर मैंने 140 दिया, किल कोई और कर गया। कहाँ का इंसाफ है ये मिलॉर्ड? कहाँ का इंसाफ है मिलॉर्ड? ये कहाँ का इंसाफ है? गेम ना बने तो इशू बोल दो। गेम ना बने मतलब? गेम डेवलपर हो तुम, गेम बनाते हो? बॉडी शॉट डीमन फिर से बोला, गाड़ी लेके बॉडी शॉट मारा जा रहा है। अबे यार फैंटम ठीक चलाने लग गया यार मैं आजकल। गेम खेलता ही कौन है भाई? तो ऑल्ट F4 करो, यहाँ के बैठे हो। ओ हट, मेरी स्ट्रीम से ऑल्ट F4 क्यों करेगा भाई वो? मेरी स्ट्रीम तो पूरी देखेगा ना भाई। गेम नहीं खेलता हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी स्ट्रीम तो देखेगा ही भाई। मेरी स्ट्रीम से ऑल्ट F4 करवाना चाह रहे हो तुम?
क्यों नहीं खेल रहे हो? खेलो ना, मेरा हाथ थोड़ी पकड़ा है, मैं थोड़ी खेलना। सरेंडर्ड अगेन। लमाओ भाई। Ten kills remaining. Go away. मैं तो चिल आदमी हूँ, कहाँ रेज बेट? किसको बेट कर दिया बे? वैल्यू में बहुत बेट होता हूँ मैं, मजाक से हट के। बहुत बेट करते हैं भाई टीममेट मेरे। कहीं मेरे टीममेट ही तो नहीं, कहीं मेरे टीममेट ही तो नहीं बेट कर रहे हैं भाई। नीचे भी नहीं पहुंचने दिया भाई, वहां पे लेफ्ट से शिफ्ट ऑफ करके पहले ही मार दिया। और ये भी शिफ्ट वॉक करके आ गया भाई शावर। वाह भाई, अलग ही ट्राई हार्ड है। ये देखो इतना शिफ्ट वॉक भाई। ये देखो एंगल होल्ड। अबे भाई थोड़ा पीक ले लो। शिफ्ट वॉक एंगल होल्ड ही करते रहोगे क्या? यू स्ट्रीम में 60 FPS दिख नहीं रही क्या 60 FPS में? बिकॉज या आई डू, मतलब अभी तक तो मैं 60 FPS 1080 पे 60, बीच में 1440 पे 60 भी कर रहा था, बट फिर से थोड़ा डिले सा आ रहा था, तो फिर मैं वापस 1080 पे 60 पे शिफ्ट हो गया। One kill remaining. ये भी देखो साउंड सुन के खड़े हो जाते हैं एंगल होल्ड करने, शिफ्ट वॉक करने। भयंकर इसी में रेडियंट जाएंगे। यूगन बुरा मान गया मैसिव है? मैं किस चीज़ का बुरा मान गया? या मुझे बोला कि यूगन बुरा मान गया, तो यूगन किस बात का बुरा मान गया? किस बात का बुरा मान गया भाई तुम हैं? भाई अबे भाई फुटस्टेप दे दो ना, अगर तुम फुटस्टेप की साउंड दे दो, इतना भयंकर हार्ड एंगल होल्ड करके बैठ जाते हैं और प्री फायर देंगे, बस खड़े हो जाएंगे भाई साउंड सुन के बिल्कुल साइलेंट। वियर्ड भाई। बट मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो 1 सेकंड में? कम टिगर पतन की प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? वीसीटी पेरिस वाला ड्रॉप कौन सा है यार? एक कोई ड्रॉप तो मिला था मुझे, कोई टाइटल था, वो तो मैंने कर लिया क्लेम, अब याद नहीं आ रहा उसका नाम। मतलब 2 बॉट तो रिलोड में निकल गए, 3 बॉट तो रिलोडिंग में निकल गए। मैंने अनलिमिटेड एमो नहीं कर रखा था। लमाओ 3 बॉट तो शूट करने को ही नहीं मिले। लोले। चलो मैप चालू होने वाला होगा वहाँ आई थिंक। एक हार्ड 100 एक और हार्ड बॉट ही करते हैं, होने वाला है। मैच लाभ ने बुलाया है? मैं एथलीट हूँ, मुझे कहाँ प्रीमेच्योर बोल, तुम ही बोल रहे 1 सेकंड लगता है एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या। और ये झाटू पाटू बनती कितनी है चैट में, तो मैं अगली बार से इग्नोर ही करूंगा पूरी चैट, ठीक है? मैच लाभ ने बुलाया, भांग भूसड़े ने चुदाया, माँ चुदवाया, जो भी है इग्नोर ही होगा। Is Mr. Veggie here? Or is Mr. Veggie still going for some food? Obviously, there's benefits of having the other util, but I don't know. I kind of wanted to see the double duelist flare come out of Fnatic with that Waylay in play. We'll see what ideas they have, at least for now. Kayak going walkabouts. White flag? भाई वाइट्स तो तुम्हारा झड़ता होगा 1 सेकंड में, जो तुमने बोला है भाई। Fnatic starting out confidently. They're going to be greeted by Xpharaoh, who's been there to punish them a couple of times on the previous map. That stun doesn't actually catch him. Ooh, Kayak. Jemkin to find a pick, but it's traded back by 2 and slowed down in the re-aggression through mid. RRQ, by the time they get through that choke, get up. Oh! Timing. Onto the stairs. I thought Fnatic would be safely out of there, but yeah, Kayak has been caught back to a 3v3.
She's just holding the angle, but doesn't manage to land. Pistol definitely not done yet. Bear in mind, Fnatic have won both of them so far, and that was seemingly the difference maker in terms of the rounds in the last map. All three players of RRQ grouping up outside this B site, and after a little peek in that direction, it feels like Fnatic have got completely the wrong read. This is going to be a free plant, and they're going to be as far away as humanly possible. I don't know what information they had that this was going to be an A hit, but whatever it was, it has baited them completely. RRQ have also done a great job of keeping their utility here. Munyet not burning up a paranoia. Taking this as a contact play now gives them a lot more to work with when it comes to this post plant. I'm curious to see whether this was going to be used in an aggressive way with the position of Jemkin to try to paranoia him through when they hear these steps of the retake, but instead कायक अलग मोमेंट्स बनाया आज कायक हाईलाइट मोमेंट्स ही बना रहा है आज कायक कुछ अलग ही बना रहा है and the recon as well, so there's a lot available for them. Paranoia alarm to try and have their sweaty little lineups. My Sadak is also streaming today. Watch party, so I'm watching his watch party stream too. Able to clear already. Potential, but it's just going to be the firefights for Crazy Guy, but it's worked out. One found already within the Smoker's Chronicle. He's trying to continue from before. नहीं होगा डिफ्यूज नहीं होगा. It's going to land himself another shot. It's whether or not he has enough time. He does not. 0.3 seconds. It was incredibly close for another Chronicle miracle, but instead it will be RRQ. आज रैंक में भी बंदे लिसनर बने, सुनने की शक्ति बढ़ा ले तो साले रैंक अप करवा ही लेंगे. नहीं सुनते यार, बंदे नहीं सुनते, पता है बंदे बहुत वो होते हैं. As you said, was the difference maker. When you look back in the previous map, they won. Fnatic won by 3 rounds, and they got a 4-0 start in terms of those pistols and follow-ups. Caralho, And makes all the difference. Maybe it will here for RRQ as well. This is, look at the descent last time, that was what sent them out of Toronto. They were 13-5 on it up against Fnatic. But now this one, we're going into unknown territory in terms of these two, Abyss and Corrode head-to-head. But I am curious to see in the rifle rounds how this comp is going to play out, because like I said, there was a lot of punish for the role that Jemkin is playing. Lol. Fairly quicker end to this round. All 5 players going down. They gambled on one side of the map. They got the side of the map wrong. They don't want to give the orbs over on the rotation either. So Yo, MASS1VE I'm back. तुम्हारा जब आए थे तुम तब मैं just उठा ही था चेयर से. They get to keep all their guns, but they don't gain any of the orbs for it. क्या कॉम्प देखना मेरे को. वेले खेल रहा है ना वो. हाँ. काया कौन वेले ब्रीच सोवा. And with 4 rifles onto the board, there's even an argument for buying up a 5th one, but they'll keep themselves the marshal. Personally, मेरे को थोड़ा better comp लग रहा है RRQ का for attack. Very early in towards this B side. It seems to be their favored of the two thus far. We'll see if that continues throughout the map. यार 3-4 प्लेयर तो वेले पे इतना कंफर्टेबल हो गए क्या. अरे गाली दी क्या अपने आप ही सेंसर कर दिया. नहीं मैं कह रहा था कि 3-4 प्लेयर वेले पे इतना कंफर्टेबल हो गए क्या मार रहे हैं. अच्छा मैंने सिर्फ तक सुना, फिर वो मेरा सेंसर हो गया तो कट गई वहां से आवाज. नहीं वो ये डिस्कॉर्ड पे होता है. थी हाँ आए तो स्टैग, नहीं आए तो हम हेवन पहुंच गए सारे. स्वर्ग सिधार गए वो. It sets them up nicely into the post spot. आपने कोचिंग दिया. हाँ दिए 5 players from Fnatic and still a decent amount of utility. Recon already being sent out to try and clear some of that backline, but in fact it's a much deeper post. Unlucky. Is the aim of the game. A 1-for-1 trade, but bear in mind what they lost it on last time. It was the time, it was the clock that went against Fnatic. अबे पुल भी आ गया. नहीं अच्छा, आपने तो एक्स्ट्रा ही नहीं. गया राउंड. ओए बच गया. वो अच्छा हुआ शॉट कनेक्ट नहीं हुआ. I don't think it's quite as close this time around. It is less than a second. मुझे भी लगा सेंसर हुआ है. मुझे भी वैसा ही फील हुआ. What's up? Nothing much, Rohit bro. Nothing much, man. That's unfortunate for RRQ, but they make that one crazy competitive. Can't call WhatsApp only. Opening pick and then pushing into the site in a 5v4. Numbers against them. Junmin तो बहुत मस्त खेल रहा है भाई. They managed to run that clock way down. That flash popping just a millisecond. Not a fan of Aspas, but Aspas played last season only. Last to last season. उस पे खेला था पॉल पे.
I clearly remember अच्छा भी खेला था. Taking away a few of the credits. First time seeing Kaya कौन वेले मेरा तो. Slow defaulty approach. वो खेली पहली बार रहा है. That's what I was going to say. Look how passive they are. मुझे लगा I missed something शायद. They've not taken any of that early control, so even the aggression that's come out from Kayak is not really going to tell them too much. Shock darts even being put through or being taken. Like the ruse is that, okay, if our Sova's on this side of the map, likelihood is that's where the push will be going. Does make me a little bit nervous that इस पे तो एनआरजी ने खुश कर दिया भाई क्रेजी वाला. आज भी पहले कहा था हाँ पता है मुझे. मैं बस वही बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आज के लिए अप्रिशिएट नहीं करना चाहता उसको. They've sold a double fake. इसलिए मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है. Then when the drone goes through, of course, Fnatic are going to rotate another player back to the other side of the map. आज कैसा खेला सेकंड करोड़ मैप पे? And the drone contact will probably be a quick scurry आसपास में. back to the A site. और वही मिस कर दिया मैंने. हेवन पूरा देखा जिसमें हागू कर रहा था स्टार्टिंग में. कोटेजिया एंड जेनोम एंड वर्नो ओवर कैरी के लिटिल. वर्नो ने 18-3 ड्रॉप किया. आसपास सेकंड ड्रॉप था कुछ 15-7 ऐसा कुछ. RRQ, I mean, Fnatic tried to deny RRQ the opening pick, and they still get it. That's a crazy on 1 HP. Wow. Look at Alpha as well. He's 1 HP. Like the spams have done so much तो नहीं आ रहा damage मुझे लगता है. to the side of Fnatic. But getting back into the site is going to be a difficult one. They're still going for it. They're still trying to make that space. Kayak's actually won the opener. That's not a bad way to find themselves back into the round. But it's this late wraparound from that could cause the problems. The fight on the site actually ये तो बहुत पीछे से आ रहा है. The way of Fnatic and an old school cam and the spike is going to be a nasty surprise. That means once again they haven't been Someone able to expect, get on it. please. Have they heard Mun yet? No, they haven't. Someone expect, please. Chronicle the god, bro. Chronicle gets the job done. इतनी देर तक ओमन ना मेन पीक लिया ना साइड पे तो someone has to expect it, and that's none other than Chronicle. Can you give me tips how to reach ascendant from gold? Get better, bro. Hello, Razi baby. They realize he's been missing for a little bit too long. The drone sent up top. But it wasn't even the tag, it was just a wild spray through. Hey, Kushi, crazy guy. Crashy's path out of there. अच्छा मार रहे हैं. This is our map. We have a map. Love Shruti massive. We have a map. Nice retakes, boys. That was a big conversation. दो नाम नहीं डाल सकता पीछे भाई. सिर्फ अपने बीच में और किसी थर्ड पर्सन के बीच में पता कर सकते हैं. Bye bye Kaushal Kul. Fnatic have always had a home ground. I think the most prominent in my mind is always going to be. जैसे दो लोगों के बीच में करने के लिए आपको पहले नाम डालना होगा, फिर # में लव, फिर मैसिव, या मतलब जिसके भी नाम के बीच में आपको जानना है थर्ड नेम. It's not as niche. I like the aged one. Well, already. Phantom लगी मॉन्ग के हाथ. So the weaponry, well, the only rifle that's had is going to be the upgrade. I said I wanted to see those stingers. Well, I've got it in map number 2. Shock dart out, but a single bullet onto any of these players would be certain demise. Even still, though. Try तो करके देखो जो मैंने बोला. पहले नेम, फिर कमांड, फिर एक और नेम. Sorry, Razi. Bet on. It's been a much better start for Munyet, and it looks like he'll have pressure on him spot again. that thumbnail change. करो views कम आ रहे हैं. Up and fired through. Here comes the flash. He'll be caught by it. Hunter's Fury though sent through as a response. Drop down is good for Boaster. He'll find it first. Munyet surrounded. Picks his fight from the corner. Boaster though putting the pressure on, and Munyet will be taken out by the Outlaw. Fnatic, they started this out on the back foot, but the lead is now theirs. Yeah, they've looked better and better as the retakes have gone on. I think Boaster being able to bait the player in main, the Hunter's Fury not quite having the impact that they would have desired. Even still, from a low buy, it's not bad, but it's the committal of the ults late that definitely makes me say that it's a bit more costly than you might think. You look at 5 stingers and you go, okay, that's fine. बचा लिया. Hello Ash. KKS baby कैसे हो आप? I can't move, Alpha. Call आ रही है एक सेकंड. It worked anyway. 3-2. A retake after a retake after a retake, but RRQ, well, they probably feel like the B site after it being half a second and a slightly missed shock dart might be the better of the two. They're heading there early. Knife is broken. Jemkin though already in, taking the space, but Kayak's there to punish. We've seen this before. He just gets out. Happy with his opening pick, with the advantage claim. The spike making it to backside. This is normally the aftershock goes down. This time they try to deny the close plant. The wraparound from Vignette catches them in that transition period, and it's a 4 versus 4.
RRQ चलो have trip a पे बच late गया. flank coming in from Xfero as well, covering all their bases. There is still a trip covering it. These players on site could be under pressure. Kayak, that ult's not quite going to hit Munyet up in heaven. Xfero and Munyet both finding theirs. And then now that flank putting so much pressure on Fnatic need to be quick. They got to चलो run ठीक है, 2 forward. राउंड जीते हैं, सबसे 1 राउंड There's हारना gaps in the बनता. play, and Thank you Arshid for the RRQ membership. are exploiting them. 3-3 now, leveled back, and it seems difficult to separate these teams in the early stages of any map. Yeah, no, I really like that every round we're seeing a variation of those late flanks coming through. Like, they haven't always been successful. Alpha, But this fight for Xfero rare is alpha miss. everything. And I think Monya and his positioning has been sublime. Like, he's the reason they win this round. He's able to get a little pick on the corner and then maneuver up top outside of the ult and find another as they try and switch सेकंड in. इंसान की Because आवाज of that, लग रही है they're ये. slower to कौन get सी the जो kill. डिस्कॉर्ड पे आ रही है जो स्ट्रीम पे आ रही है? Onto Kushi. Great round और from him नाम भी सेम individually. है, निक्षय निश्चय. That trip निक्षय निक्षय दोनों निक्षय हो. If they had swung that उसका corner, नाम निश्चय है, that मेरा man was निश्चय certainly है. dead, but अरे एक लेटर का फर्क है. he got it done in the end. Already you can see they've spotted Boaster, and they know with the knife popping that no one is on अरे the वाह side. यार, Very जमकिन ने quick क्या to take स्पेस the लिया भाई. space. Well, there's the trip. ड्रोन पैक के Jenkins पीछे. landed himself up top, a different route than was planned for by that trapwire. Hunter's Fury Oh, active, but denied immediately. tagged The two ult from people. ठीक है, KO बट 2 बंदों को taking टैग करा, all कोई the बात नहीं, अल्ट abilities, वेस्ट भी all तो उनकी the भी तो होती ultis है. away, and buying so much time. Fnatic will have to now wait. They've got so much util for the retake, but that clock is going to run low by the time they can use it. It has been running low every single time. Oh, cancel कर दिया. Making out the idea, and well, Kushi's just swung into the. Oh. That's messy. Oh. But somehow managed to find 3. This round was looking done, but it's left all on to Munya. He's been revealed. They know where he is. But he wants to Oh, take भाई that बोस्टर one. पे विप कर दिया सर. बोस्टर ने नहीं विप किया. वेरी रेयर मोमेंट. भाई साहब. again, and this time plenty on the clock to be able to get it. एक बात बताऊं, मैं सिर्फ 3-4 राउंड जो भी रीटी को सारे RRQ ने थ्रो करे, सारे थ्रो करे. और लेजेंड थ्रो ही ऐसा भी नहीं है कि नहीं कि उन्होंने अच्छा मार दिया, ऐसा कुछ करके नहीं हुआ है. ये लेजेंड प्रॉपर प्रो है भाई. ये कुछ ने बहुत अच्छे मारे यार, 2 क्रेजी. ये देखो, ये जो जेमकिन ने किया ना, ये बोस्टर और ये बोस्टर भाई 3 किल. पट 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 पट. फिर 2.0 कमिंग. यस यस आई नो. हेलो मनी. पोस्टर मास्टर क्लास भाई, ट्रू. हेलो ले कर दे रहा था ये आप पूरा टाइम. अरे उसका सिग्नल वीक है ना, थोड़ा आवाज कम आती है. पूछना पड़ता है बार बार हेलो हेलो करके. हेलो हेलो. मेरी वीडियो दिख रही है. We're gonna have the Blade Storm activated for Jemkin. Deep play towards the A site for Good check Fnatic. play. Early doors taking a lot of control. Now RRQ hasten their pace as a response. Straight through mid. There's 2 players quite passive on this B side, ready for the fight. Crashies slowing down the players in mid, making a bit of an accordion effect. This is leaving more isolated battles. Alpha Year dies after just 1 though. But that utility अरे तो down. रोटेशन आ रही है और मोनिएट बिल्कुल ही लर्क पे जा रहा है. The round completely. ये तो स्पॉन पे 3 मर जाएंगे अगर ये तो मोनिएट प्ले बना गया तो. You've talked about the late round flanks. Well, Munyet ओए might have बच the गए. best one yet. He's low on HP, so he has to pick his moment. I guess नहीं इस बार नहीं हो पाएगा. रीटेक. भले एक्स्ट्रा वॉल है. मोनिएट की पोजीशन बहुत क्रूशियल है ना यार. वो लो भी अगर थोड़ा भी हक दिया तो हो जाएगा काम. बट एक तो लेके ही जाएगा फॉर श्योर. मुझे तो मल्टीपल लग रहा है. बस एक ही मिला. एक्स्ट्रा बॉल है, वो शेरिफ शॉटी वगैरह है भाई. निकाल. एक्स्ट्रा बॉल तो गई. मर ही गए. एक वैंडल थी, वो भी साला ले गया. भाई क्या बैक एंड फोर्थ चल रहा है भाई. 2 मिनट का टाइम आउट दे रहा हूँ. आपका आंसर मैं वापस करूंगा. 1 मिनट के बाद आप बात करो. मदरबोर्ड में A3 यूनिट में This is spot. Every time you see him there in the post plant, he's able to. कुछ अंडररेटेड है सर. एपैक के तो बहुत प्लेयर अंडररेटेड है यार. एपैक को रीजन ही भयंकर अंडररेटेड है. प्रीलूड का करम्बिट नहीं भाई. प्रीलूड का भी करा. कितने करम्बिट करोगे यार. 4-4. Look at the economy as well. नेपच्यून आई थी, फिर VCT करम्बिट आई. RRQ should be retaking their lead. Oh yeah. क्या लगता है प्रीलूड में कैसी नाइफ आएगी? मैसिव. प्रीलूड में मुझे यार प्रीलूड में क्या ही दे पाएंगे यार. प्रीलूड में चेन्स लगेगी अच्छी. लगेगी. चेन अच्छी लगेगी प्रीलूड की. एग्जैक्ट.
क्योंकि फिनिशर में भी चेंज है तो मुझे चेंज का आइडिया थोड़ा लग रहा है। ब्लेड ही देना पड़ेगा, ब्लेड तो गंदा है। बटरफ्लाई तो अब भी जस्ट है भाई। बहुत सारे गोल्ड रैंक भाई प्रिल्यूड साइथ ना दे दे, मैं तो इंस्टेंट कॉप कर दूंगा। देखते फैंटम, आपको कैसा लगता है प्रिल्यूड फैंटम कैसी रहेगी? अच्छी लगेगी क्योंकि मेरे को डूम ब्रिंगर फैंटम भी सही लगी है। अरे बात डूम ब्रिंगर फैंटम नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि कंपैरिजन रहेगा वैंडल से नहीं, बट हैवी रहेगी ना, अच्छी लगेगी ब्रो चलाने में। चलो देखते हैं, वो पूरी अच्छी रहेगी। कॉज प्रिल्यूड के लिए जो लव है वो किसी और स्किन के लिए नहीं है भाई इतना। फैंटम भी आई विल लाइक इफ इट विल बी अ गुड एंड नॉट अ दिस, क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट टू द प्रिल्यूड नेम। साले की फिर अल्ट आ गई, of avoiding this play early on. 3-4 बंदे मार गया ना अभी। Still online. Alfie is far enough away to चला not दे get गोली caught by the null command, but they will find भाई him बहुत before लड़ they कर रहा है run इनका on into साइफर। it. Late flank being set up as well by Xfero. गया। He goes down, that is a Sniper rifle diff. gifted over, but Alpha is going to have to really tick all the boxes to clear उसका it गन out. नहीं दिखी। Saw the pistol, but ओह साइफर डिप हो गया, बट उल्टा वाला। कायक भी मारने वाला है, कायक भी एक चप्पल देगा अभी। but RRQ get ahead अरे of it. यार सालो, फ्लैश came out of syllabus. Finding the double, a big Your team, advantage now. my team is Fnatic. I am the head coach of Fnatic, brother. If you do, just letting you know. Is the one piece of the puzzle, and keep that in mind. I designed this play. That's for sure. क्या था भूल गया? And for Alfie, it then gets to the point of like, okay, do you just hold on to the weapon? How much damage are you really hoping to do here? The answer is absolutely nothing. And Chronicle with no orbs needed to be gained. I think the only thing he can either hope for is a rifle or the taste of the spike. 5 on the board for RRQ. The lead reclaimed, but I think most of us are expecting the next to go to Fnatic. Not because of their comp or their economy or the way they're playing, just because of how this game's been. Yeah. Back and forth. Plenty of games of tennis here. Yeah, I really looks like another. I want to give credit again. करोड़ पे मिलते हैं। अबे रुक जाओ, एक राउंड का बैक एंड फोर्थ ही तो है अभी। करोड़ पे मिलते बोल गया, सबर करो थोड़ा सा। पहले ही जीजी बोल देते हो, मुंबई सर्वर रैंक्ड प्लेयर हो क्या? Is just a kill trip somewhere on the corner. They're checking and pinging for the cams. Like, they are not aggressive in the way they're doing things. They're smart with it. Very enjoyable team to watch. A set play though being thrown in for Fnatic. The util force क्या इवेंट डिनाई कर रहा है भाई सेट यूटिल के साथ, क्रेजी। Nobody caught in the stun. And RRQ don't just run to the other side of the map. Pranam, Knowing now that bhai, they're bhai. facing in to that rolling thunder, they'll still compete for the orb, but with 4 players Diet here, Sprite भी आती है क्या? it's going to be the exact same round minus मैं the लाता हूँ फिर, null मुझे command. बताओ ब्लिंकिट वगैरह भी मिलती तो अभी मैं ब्लिंकिट को That Grocery. rolling thunder will be put through. It almost sent Munyet off the map, but Jemkin instead ले गया ये it round. sent him into the waiting arms of Chronicle. But a 3v3, and again this mid play. Alpha got the better of Xfero last time, but this time it's revenge for RRQ's Cypher. The B site now open as we can see. Oster getting his rifle out. It looked like a little late, but he'll end up equalizing things. भाई Astra ult है अभी। Chronicle didn't move. I can understand tweet why में you've उतना कुछ seen काम a नहीं kill है on the other side of the map. You kind of had the expectation that they go the other way. He's now started to claim some control. Perfect position, but it's a little bit labored. It's given Final an boss opportunity. गया मर गया। Crazy चलो crazy guy's guy been able to get out. W1v2 भाई। Well, because of that, he gets that early fight. थोड़ा पीछे हो जाएगा, Both has been wrapping around the back line. Ult भी Going है। all the way around the map to try and get in from behind. He does have Nice try, Boaster. available, See you but later, placing brother. it while in the open would be a massive risk. He's just trying to make his way into the site, and Crazy Guy, well, it's been too long. He started to realize that he has to be coming in from behind. The tap on the spike reveals his opponent's position. But the clock is Boaster check! The Boaster, though, will just about be able to take it. He's been good in these late round scenarios. And who would have guessed it? 5-5 and another retake of sorts. It was 100 Fury online though for RRQ for Crazy Guy. 1v1 में अंडर फ्यूरी कर नहीं सकता यूज इसलिए बेचारा, उसकी गलती नहीं है। Pressure on Boaster. The fact that he goes for the tap. Hello, Terreno. Bye-bye, 10 spotlight. Instead, trying to bait out the player. It was a great read. But this guy would still be sticking around up close. मेरे चैट में सब लिख रहे हैं बोस्टर का गोल्ड रैंक का इसलिए ट्राई हार्ड कर रहा है। badly for Fnatic, but instead a further lead is denied. The IGL's on his feet. Boaster's having a good game so far as well. And at 5-5, both teams dumping their economy into this one. This round may well be a fight for the lead. For RRQ. At halftime. They're going to
take some early space. It will be spotted. There we go, just a little bit of patience. Jemkin still looking like he wants to challenge this, maybe expecting a reaction. The A-site split, not something we've seen too much of. It's a very tight angle to try and make your way through. That's why Crashies is just happy to try and hold this one. Dart up, stun, keeps them locked in, and well, the players attempting to make it through A main are kind of stuck until they get through this choke. They have done a great job so far on the attacking side. RRQ हक तो नहीं रही चैट 5-5 बहुत अच्छा है उन्होंने जितना he's getting a lot off those traps, constantly being destroyed. Not bad, not bad. Push through. It will be the same again. He's using this Fnatic to clear mid. Fnatic group up here. 4 players moving into heaven, but RRQ want to take the fight to them. Boaster and Chronicle though, good for the duel. In goes the Hunter's Fury. It's a narrow laneway. अबे क्यों? Doesn't land for more than the one though. 4 versus 3. Oh, Monyet! He's just delivered a double. Managed to find them, fall back, and then the trap on the other side reveals one of the last players, Boaster, the one that was unknown. अबे ऊपर बताया नहीं क्या उसने? साइपर अल्ट में दिख तो रहा था ऊपर 2 बार. Back and forth as it went. It's क्या? RRQ for 6. चल बोस्टर ने नहीं ध्यान दिया क्योंकि उसका आगे वाले पे ध्यान था, मारने पे, फोकस पे, उसके पीओवी में नहीं था, बट यहाँ तो साइपर को तो दिखा. पता नहीं यार, या तो फोकस ज्यादा होगा एक एंगल पे तो नहीं ध्यान गया होगा कहाँ पे है. It was a close first half in the last map, and the pistol was what made the difference. It seems like it might end up being the case again. Of course, RRQ were the ones to take it in this one. और हेड भी नहीं मारा उसने. अगर उसका एम होता तो मार पाता वो. वो नीचे देख रहा था घुटनों पे अपने. लगता है उसको गठिया भाई है घुटनों में. स्पाइक के साइड. अपने घुटनों पे देख रहा था मैं कह रहा हूँ. एक तो दर्द था अपने घुटनों में थोड़ा. Him deliver on either. Another 5-7, but this time for RRQ. And what is a fast-paced take once again for RRQ? Jemkin looking to harvest souls, caught by the stun, yet he still survives. Koshi again, but it's Boaster with a double, breathing life into Fnatic. But in a 2v3, still on the back foot. He loves the cam on the spike. And it got down just in time. That shock dart landed just a little bit too late. And Crashies will have no more chance to play with the bow. Last man standing Alpha here. He's got a classic now. Stinger at range. Well, better than the classic, perhaps. Well, maybe not, actually. It depends. Certainly ended up with a better rifle. That is what RRQ have been so good at. They're not going to give him a single fight. Just jiggle peeking, baiting him into taking awkward positions. He doesn't have anything to play with. The time against him. And look, even at the end, the cam will be what decides the round. Just making sure that there is no fight to be had. The half will be won by RRQ. It was a good attacking comp by RRQ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 2 राउंड लेस भी हुए हैं They डिफेंस पे. stopped all those retakes from happening again and again after the last few rounds. It was a razor's edge between triumph and tragedy in that first ये खुशी बहुत लकी हो रहा है. वो 2 किल नहीं मिलनी चाहिए पता. मना मैड एडवांटेज पे एंड करता है ये फाइट में. क्योंकि बोस्टर ने 2 मार लिए थे ना उधर. बोस्टर को चेक ही नहीं किया उन्होंने. बोस्टर ने बढ़िया रोक लिया. अरे वो स्मोक के थ्रू वन टैप लग गया उसका. रैंडम. Cushy stepping up to new heights. सॉरी भाई बहुत अंधी बारिश हो रही है. You really look at the entirety of RRQ and say they have got a chance when we get to halftime or half number 2 after the halftime break. Et on a des fans de toutes les équipes ici en France, y compris RRQ. Hi, Maxime. I'm glad to welcome a French RRQ fan. I'll be back in a minute. The first question I want to ask you is, how did you discover RRQ? What gave you, faith in them and want to follow them? Donc, première question, c'est étonnant aussi d'avoir un fan de RRQ, une équipe qui vient de si loin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de les suivre? Je suis tombé dessus un peu par hasard quand j'étais en Corée du Sud. J'ai regardé un match, ils ont gagné. C'était preuve de résilience, c'était juste incroyable en termes de gameplay. Je suis rentré, j'ai acheté tous les billets pour le reste de la régulière saison 2023 et je suis allé à tous les matchs. C'est pas compliqué. So it's a love story. Back in 2023, I started following them a bit randomly. I went to the arena in Seoul and I loved them. They had like such a big resilience, so I bought all the tickets for their future matches. Back in 2023, and I never stopped following them. So that's beautiful dedication indeed. And this might be a tough question, but I want to ask you, what is the best region in the world? Are you going to go for EMEA, for Pacific? C'est quoi la meilleure région du monde? Bon, certainement pas les Américains. Ooh, definitely not the Americans.
On aurait tendance à dire IMIR, mais il y a quand même la meilleure équipe du monde au Pacifique et RRQ, donc... Pacific? Bah oui, bien sûr. So yeah, maybe I would say EMEA, but I have to stick with my boys from RRQ here. And last question, who do you think will carry this Abyss maps on the side of RRQ? Qui va carry cette carte pour RRQ? J'aime beaucoup Xero et j'aime beaucoup Ewok aussi, c'est des pierres angulaires du projet et ils sont là depuis le début et je les supporte depuis le début et c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose devant, c'est sûr, c'est certain. So yeah, I love Xfero, I love the coach too. I think they are really like Stone Miles in that team, like very, very strong player and coach. So I'm definitely rooting for them. Merci, Maxime. Thank you very much. And let's get back to the game. Well, it's time to get back into the game very, very soon, where RRQ are now leading. I guess the pistol really does make the difference as we get into the Coinbase Econ report. And you can take a look at Boaster. A lot of talk in the desk about his performance throughout the regular season, but he has certainly stepped it up here today. Yeah, no, he's definitely had his moments. I think especially on the defensive side, being able to get into those positions to basically get them back into the site that they'd lost, because every single round that they won was based off a defusal. The plant was going down, they were playing the retake. I think he's going to be pivotal in those post plants. I'm back. I love seeing I don't think it's true. this map. When I think kill. of Astra, I think of him, I think of Boo. Like क्या having पता शायद those माँ भी struggle ही कर post-plant रहा होगा. gravity wells to Skill fight issue that तो है little bit भाई, of ऐसा extra नहीं है time can make a massive amount अभी of एक लॉन्डे ने difference. रेडिएंट करा The माइनर fact नाम is, का though, I'm MINER going to be looking at Not RRQ and what they've got on this defensive side. I think they've had a उसने अभी great करा है start कर to रहे this हैं map. मुंबई में भी करने वाले But if they want to survive going into that lower bracket, they need to make sure that हमारा they नहीं हो close रहा this one मतलब out. हम हैं थोड़े लैग तो कर रहे हैं. Well, this is their best chance so far. The lead by 2. The pistol round from Fnatic. Have to have ascent. It was a bloodbath to start it out. Cushy. White Mouse में मॉन्स्टर वगैरह नहीं पीता. He's been tagged up. It's time to fall back. भाई Same जेमिनी for कौन से Crazy ब्राउज़र पे Guy. लॉगिन करा है? Microsoft Edge में. Taking some scars early on, but yet to drop a player. Question is, do they have the read right? As we see a lot of this defensive side flock towards Did you the watch B Demon side. Slayer and it mini? certainly FNC seems today like game for up the पर. moment, that's where Fnatic want to take it. But I am seeing Boaster clearing a lot of space on A. तुम लोग स्ट्रीम लाइक करो. Oh, it's almost an early pick. Kayak eventually will find काया को one, but he's कुछ हुआ traded है out भाई by कसम से Cushy बता रहा हूँ again. कुछ हुआ He है. seems to love this B site. एक किल मिला वो भी क्योंकि वो With space हेडिंग था being इसलिए. held, this was something that the old दूसरा भी लो था उसको भी नहीं मार Fnatic on पाया. this map love to do. They just leave Boaster in the spawn. भाई खाना खा के नहीं आया मुझे. Regis though has been caught, looking like maybe he हेलो wanted to try मंदिर and get out of इंस्टाग्राम पे there. देखा मैंने Instead, स्टोरी they're now डाली walking है. into a side माउस that पैड की I लास्ट नहीं imagine है. they believe to be clear, but Xfero definitely still waiting. And actually, he's in the perfect position. Now they try and split back through. Oh, Boaster by Deal with it, but in 2. fact, Boaster's caught a couple. One of the remaining players incredibly low, but they need to And get the this third. plant in. And Boaster holding the line. भाई अरे स्टन करेगा शायद already, but ऊपर. he's the स्मोक कर last दिया लेकिन healthy उसने. player. Alpha down to 25. That Sheriff. स्टार और बचा नहीं है तो मारना ही पड़ेगा आई गेस. ओ ना मान रहा. अरे fourth. Nearly an ace. 15 and 7. You never doubt my. Oh कुछ नहीं मैं ही बोल रहा था पिछले गेम का कुछ. Sorry. कुछ नहीं बोल रहा. Yeah, no, impressive stuff. And as said, like when you look back at their old composition where they had that double duelist, a lot of the time they would leave him behind as this hard lurk if he's setting up utility. Crazy from भाई, afar, basically 4 पे not लिया भाई allowing पिस्टल you to push across the map. में. This वो भी though was disadvantage story. था. ऐसा भी He नहीं completely took the A site on his own. टीम ने कुछ And पहले then से ended मार up के रखा clearing हो. out the players as they went to rotate. A brilliant round from Boaster. And well, we mentioned the importance of the pistol rounds in the last map. They're even in this one. Yeah. 4v5. Yep. Conversion Hug here. दिया. Oh, Alpha under pressure. Hugga. He's been taken down. Huggu. It's only classics from RRQ. But now they've managed to find themselves a Marshall. Alongside damage, that can be a very valuable weapon in a round like this. But they will be forced into the retake as the plant secured on this A site. And the question for Fnatic is, how do you want to play this? Especially with the range advantage going back towards mains. Not a bad idea, but conscious of MIBR being able to just smoke them off. They want to stay a little bit aggressive, keep some control. Nice but the flag. Cam has spotted them. They know exactly where to fight. RRQ have all the info. They're putting the pieces together. And it's Fnatic coming crumbling down. That late Cam from Xfero has given them a chance. कुछ तो खा के आया भाई आज ये. To save the कुछ तो सीक्रेट सॉस खा के आया. ये क्या नाच क्या रहा है? वेंडल उठा भाई.
भाई रैंक 2 था ना बोस्टर भाई, अभी तक 4 मार्क की गाली पड़ गई होती। Maybe for him that's a nice little confidence boost. Not that it seems like he needs it. भाई मुझे वो बताओ, रिप्ले बाद में दिखाना, उसने बैंड उठाई कि नहीं? शायद उठाई, वो रुका तो था। एक बार खड़ा होके वापस आगे गया था कुछ तो करने। हाँ उठाइए शायद, उठाइए। नाचने लग गई मेरी क्यूटी पाई। Then just winning those fights with the classics, that's a dangerous spot to be from, and by the looks of it, थ्रो कैसे भाई? अच्छा मतलब बोस्टर मार दे, अच्छा तो back into this one. बेचारा एक मैच खेल रहा है, खेलने दो, अप्रिशिएट करो उसको। थ्रो था, घंटे का थ्रो था। वो तो तब होता है जब हारते, राउंड ही नहीं हारे तो थ्रो कैसे काउंट होगा? He's got one up top. भाई निकल ले। एक और वो आ गया अपने पास, यूटिल निकलने वाला। It's double connected, and he's hungry for more. Blood in the water, and he's swimming straight towards X-Sparrow. अरे मरेगा। Just about manages to survive that engagement. The Cypher healthy towards the spawn, but a 5 versus 3. That investment for Fnatic paying off. But that was the man we wanted to see. अल्फा पीछे तो देखो। नहीं करेगा एक पे। Trying to take space back through. अरे करेगा सब, ये देखो। This is not going to be easy. Maybe it is. There's a बहुत अच्छा किया। A spot for him to take a 5. ज़्यादा एक्सपेक्ट खुशी किया। आज खुशी का कुछ वो भी खा के आया है, कुछ बोस्टर और खुशी सेम लंच किया है। साथ में लंच करके आया है। Already that time. ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? लाइव गेम। ये क्या देख रहा हूँ? किल करो, गोली चलाओ। वेजी भाई ये क्या देख लिया? Locking it down there on the stage. Didn't see the same reaction from Chronicle, but I think he's still pretty happy to take this round. And you see the idea. और ये क्या था? फेड अवे शॉट देखो। As soon as they tap the spike, they know the knife didn't hit anyone. के अंदर आग लग गई। Well, we need to push. आज तो नाम आंदा बोस्टर। राजी भाई कैसा लग रहा है आपको? Turning into a monster. Oh my god, Jakey. वो तो बिना मान रहे कह रहे क्या हो गया इससे आज? सब लोग कायक तो पागल हो गया है। That is literally like. कायक तो बोलेगा ही बोस्टर से कैरी होना पड़ रहा है क्या दिन आगे करियर के। Which is funny because Bosa's parents are in the crowd. Yeah, and I think Kayak. एंजॉय कर रहा है, अरे वो हार गेम एंजॉय करता है, भागता है तो भी करता है। बस वो ये कि वो हारता है और एंजॉय करता है तो लोग ट्रोल दूर खेल लिया। Defensive side of RRQ. They need a moment to gather themselves. भाई उसको तो डबल रैंक का फैन है, क्या बोलूं? बोस्टर ना मान रहा। And I don't blame them. Wow, yeah, it's looking like after Angels retired, Boaster's just absorbed all of that extra unk energy and is just taken over. 19-7. This has definitely been his map. The scoreline definitely still not out of the realms of possibility. There's only a singular round between them at this point, but that was a bonus round where in the prior only a single player had survived, and that was Boaster. And even with some heroics from Cushy, he's been having a great game overall. बर्गर खा रहे हो क्या? हाँ जी। I'm sure they can start to feel this game slipping away from them. And क्या लैंग्वेज है भाई? as we've already witnessed, there's been plenty of upsets, plenty of teams falling into the lower bracket. With Billy, China #1, currently sat down there. I don't think RRQ want to join them. I think especially going down like this. I mean, look, it's still a very tight game, but now they've got pistols. You should be looking at a 9-7 scoreline. And, you know, if Chronicle's the one digging your grave, well, hey, listen, plenty of people have fallen into that pit hole. Alpha, up for contest as best player in the world at one point in Kayak, the guy coming up from the Tier 2. Looking remarkable, the young gun, but you're getting diffed by Boaster. That's something that I think you know. He's a young man. He is, yeah. And as the desk was highlighting, his stage 2 performance was lacking a little bit individually. But we've seen that. The guy's got a lot of responsibilities. Right now, it seems like he's the brains and the brawn down on that stage. Oh. Kayak taking the space once again. कौन सा वाला? This is Junior उड़ता पंजाब वर्ग. Might be a chance for him to farm. He already has ult online, but I think the confidence far more valuable for Fnatic at this stage. The duelist trying to get their way back into the game, and that's exactly what's happening in this one. Clean up with only 2 standing and plenty of utility denying anybody swinging that planter. मतलब बैंक भी whiff कर देगा उसमें, इतनी गंदी है वो. For the remaining players, can they do any damage? That's not a bad and start, Zeppa? but Alfia quick to respond.
some easy rounds for Fnatic. वो तो recon में ही कर देता है. And you look at Fnatic there, they do give RRQ a lot of opportunities. A bunch of individual fights, taking swinging into Sheriffs, it's risky, but for RRQ, they're not getting the shots off, and that's a problem. Because now you start to talk about confidence on one side for Kayak, building that is huge, but you go into a round like that, you see, we had the chance. They're disrespecting us now. They're starting to just run it down at us. भाई फाइनल में कोई स्लॉट मिल जाता भाई बैंक को कुछ भी मत बोलो. On the attack side, but a 4-0 मैंने आप सुनते हो राजी भाई मैंने क्या बोला है? Many times we've seen that team end with 4 or 5 rounds in the half. This is RRQ's chance to prove that it was just a hiccup, an early half upset. The big thing for me is the operator. When that came into play on the defensive side of Ascent, it was a massive game changer. That's where Jemkin really did the damage. The problem thus far. There is a reason I hate them, Vijay bhai. Beginning of the season where Fnatic played, I think it was versus Gentlemates. मच्छर बहुत आने लग गया जब से बारिश हुई है. मैंने रैकेट चार्ज भी नहीं करा यार. Seems like they've developed a taste for B. Bro, imagine you playing there. Counter Strike में Valo में like ही नहीं है तो करता नहीं मैं imagine. Water that stagnates. It's time to Alpha switch two it up. different sides. Fnatic straight to the B side. The off shot not landed and quite a bit of damage done in return. अल्ट पर क्या है कि अल्ट करके मरना भाई. मैच के बाद बताना मेरे को ओके. क्या इनोसेंट मोड भाई? थोड़ा फिर से बताओ क्या क्वेश्चन था आपका? क्या ये crazy guy trying for the punish. क्या वेलेस होगी? बूस्टर साइड पे रुका वो सब पीछे चले गए. एंड ही गेट्स वन. बूस्टर को रख रहे हैं साइड एंकर करने के लिए. एंड ही गेट्स वन ब्रो. Double digits पूछा था को फिर से एक तो फिर से लिखो ना. 2 घंटे पहले जो आपने पूछा था याद नहीं रहता ब्रो. Starting to Need to look type it again. pretty damning for RRQ. The attack side looking stellar from Fnatic. It started with clutches, it started with individual brilliance, but now it's मुझे अब ऐसा लग रहा है all but dominant. Easy openers and breathe, guys, breathe. Was committed in that round by Kushi. That was one of the few ults that they had available to them. अभी breathing space time मिलेगा तो. भैया छोटे प्लेयर्स के साथ वैल्यू कब खेलोगे? कब खेलना है बोलो? A chance for Ewok to try come up with big changes. ने मुझे तो मना कर दिया था खेलने के लिए. कब मना किया था? Started fairly close, but that one बोलते छोटे प्लेयर साथ नहीं खेलता मैं. Well, indeed, and we already saw that pause called earlier by RRQ. छोटे किस छोटी चीज की बात कर रहे हो आप? प्लेयर होने की. Now they're starting to drift out of this game. फिर तो तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे. हाँ तो वही तो बोला तुम्हें मना कर दिया था ना छोटे प्लेयर साथ नहीं खेलता बोल के मैं रिएक्ट कर दिया था. फिर तो तुम मुझे मना करोगे इस लॉजिक. नहीं भाई ये उल्टा है. Half won 7-5, but now it has been 5 in a row, like you say, 7-10. भाई मैं मुंबई सर्वर डीएम करता हुआ डायमंड वालों से मिल जाता हूँ भाई. Momentum. The IGL delivering, whether it's in clutches, whether it's in opening tools, the guys been. पता नहीं क्या मूवमेंट करते हैं बंदे अजीब वगैरह मेरे से डीएम में बंदे नहीं मर रहे भाई. Victory here, of course, the next matches will be that upper bracket, but of course there is a day break tomorrow. FNC for the win, FNC for the win, FNC for the win, FNC for the win. Hello मोती भाई क्या हाल चाल है रे गौरव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम यार. Yes, let's go bro. FNC for the win. Hopefully they close this out soon. Sooner than they close it out Ascent. And yeah. बाकी व्हाट्सअप नथिंग मत करो. टाइम पास चल रहा है बस. अभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए भाई. बहुत सारे मैचेस होते हैं जब सामने वाली टीम फैनेटिक के अगेंस्ट टाइम आउट भी नहीं लेती. लिक्विड वालों ने 14 था ना Ascent पे. The cam already spots Jemkin. The door has to be broken open, and as he fades away, Munyet fades out of the round, trying to cover his teammate. अरे मैं तो भाई गाली मत देना स्पीकर पे है. Grouping and hitting मैंने तो नहीं दी वैसी बहन right call. It's what you want to see happen from our perspective, and you can see they've made that call. Yeah, the worry as well is like the next buy. ये राउंड तो आना चाहिए. 4 sheriffs, no ult even. Potential for every single ultimate bar, maybe the neural theft to be online for Fnatic. Like जीती क्या MIBR? ने तो बहुत गंदा तोड़ा था यार. जीती क्या MIBR? अबे जीती नहीं. पहल के जीती. डोमिनेटेड. हेवन तो बिल्कुल ही ऐसा डोमिनेट किया कि मतलब और BLG का ही मैप पिक था ब्रो. मेरी तो आंखें फट गई. करोड़ में देख नहीं पाया. हेवन वाज अ फीस्ट टू वॉच. एक्सपेक्टेड भी था उनसे ऐसा. At least the ults will also be भाई वर्नो ने 100 पे 18-3 मारा है भाई. 18. अरे एम तो चलो वर्नो का है बट द कॉलिंग मुझे पता भी नहीं था वर्नो आईजेल कर रहा है. अरे 19 साल का लौंडा आईजेलिंग कर रहा है. अच्छा वो कायाक था मुझे लगा बूस्टर है. फर्क नहीं पता चल रहा है थोड़ा मुझे. Well played by MIBR. True. Falling बहुत अच्छी थी. हेवन पे पता है एग्जीक्यूट बहुत अच्छे थे यार अटैक के जो बंदे के ना.
बहुत ही Going अच्छे. down to the spike is the correct play, but now back against the wall. It's been 6 straight rounds for Fnatic. A pause just called in the previous by RRQ. This is what they will have talked about. The rifle round has to be theirs. Yeah, but again, you're going to have to break through all of those ultimates, and sure, they have some of their own, but... Moyet! Hello, Moyet! Look at me again! Hello! Look at me again! पहले ही करता रहता है. Oh, he's not. He gets scared. He also has headphones on. It would be worrying. ये तो FNC जीत रहा होगा. This map right now, yes, they are 4 rounds up, but कब throw कर दे कुछ पता नहीं है, तो let's see. This time, Munyet's revenge hasn't really looked like it's taken its toll. 4 rounds ahead. 6 वैसे in a ये row. स्क्रीन टेयरिंग हो रही है. स्क्रीन पे स्क्रीन टेयर हो रहा है क्या? High impact ultimates ये on OBS board. रिस्टार्ट मारना पड़ेगा यार. रुको इस राउंड के बाद मारता हूँ. Fnatic though are taking mid control. It's been a challenge in the last couple, but the success hasn't been there. कार्ड का कुछ इशू होगा. रुको देखते Pushi's हैं. been one of the few glimmers of hope in this map, and Boaster's just walking it down on his own. Well, that is a deep play. The Rolling Thunder catching it for the mid split. The next Pharaoh able to survive inside his cage, at least for now. Hunter's Fury not finding its mark. Pressure applied as Jenkins rotates. Cut off. Boaster in there with a 3rd kill of the round. This Damn, guy's Boaster off again to a 3K? flying start, and it looks like soon to be a finish for the attacking side. अबे ये तो ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया बूस्टर भाई. क्या वाइड चुनने की. 12-7. स्ट्रीम घूमेगा ना फिर. ये थोड़ी देर बफर होगा जब मैं OBS तब तक रिस्टार्ट कर रहा हूँ. बट मुझे बताओ कि अभी भी हो रही है क्या टेयरिंग? The thing I love about that is अभी भी हो रही होगी तो Fnatic करूँगा, decides नहीं हो to रही throw होगी in a ठीक set हो गई होगी play. तो नहीं That's where you have the करूँगा. Rolling Thunder that forces the players. We've seen them play on this close B box so many times. So Rolling Thunder forces them in, and that's why Boaster is running it down mid. Because if he knows if he gets in behind them here, they're going to be stunned up and being flown in towards him. Because they're so worried of the players coming in front. That is a gorgeous set play from the side of Fnatic. And while we spoke about the fact that this needed to be the resurgence, there looks like there is no resurgence to be had. This attack side from Fnatic has been flawless. Not a bump on the road so far. Remember, this is RRQ's pick, and the conversation that's been going around about Fnatic being in the weakest state in terms of their map pool so far, well, we might have to reconsider. कोई बात नहीं नोट भाई. थैंक यू फॉर कॉलिंग इट आउट. In the second half of जल्दी this, बता it has देते. been कोई इशू नहीं था. मैं anything तभी but. देख लेता इसके बारे में कुछ 7-5 इशू down. जो भी था रिजॉल्व करने Now का. just 1 round मुझे away नहीं from पता victory. चलेगा मोबाइल पे हूँ. मोबाइल पे भी दिखेगी वो मतलब स्क्रीन टेयरिंग नहीं है, वो थोड़ा मोबाइल का इशू है. पर मेरे OBS का इशू है. फाइनली वेले अल्ट कर दी. Could be many to fall. Ult clear कुछ and पकड़ा ही right, but नहीं गया वहाँ. Pharaoh's still alive, but now they know it. They know exactly where he is. He's got both trips just. बस भाई ये पॉज ले लेते हैं ना, सामने को एंजाइटी देते हैं जो. They now will be, or at least the first one. If anybody's jumping across, Boaster could go flying off the map, but it may not even matter in the end. GG's. Not a single round. Just one. Let's go. Crazy guy. Booster master class. Needs a crazy finish, and he भाई will not साहब live to tell the tale. इतना जल्दी आज 10:30 बजे दोनों गेम खत्म हो गए गाइस. What a dominant play by Fnatic and MIBR. Single round dropped. And well, for a map choice of RRQ, they're left with egg on their face. Fnatic off to a hot start here at इनके तो जूते भी मैचिंग हैं. and it will be RRQ and their champs debut, whose flesh कौन से जूते पहने हुए उन्होंने? अगर RRQ जीता ये मैच तो आपको 5 मेंबरशिप गिफ्ट. अबे कुछ ढंग की बात तो करो यार. ये बोलो Fnatic जीतेगी तो 5 मेंबरशिप गिफ्ट. They've stepped on the champion stage but never touched the trophy. Well, they are here. Hello. With one goal in mind this time. Hello. Unfortunately, MIBR 2-0 जीता. अबे हेवन 13-2 या 13-4 कुछ है. Yeah. The fun thing as well is that this now Lazy sets खेली आज मैं भी. हेवन पे तो खास कर. on a path to face off against Aspas once again. We're running it back, so that should be a very exciting upper bracket matchup. And honestly, the display, at least in that second half, is the level that we expect to see of a powerhouse like Fnatic, a team that has been at every single Champions. This is hopefully just the start of what will be a long run for them. Sorry, what? पजामी पहन रहा, बताओ ऑन स्टेज. वर्नो को बफ किसने दिया? वैसे मुझे लगता है FNC ने थोड़ा अपना छिड़क दिया उस पे दिमाग. आईजेलिंग कॉल्स. I feel like we've just caught the end of whatever was going on there, and I don't know what we've just seen.
That's got to be a first on the champion stage. What time से 2 नहीं किया आ जाओ Dropping trial for मैं the तो खेल ही नहीं parents. रहा All right, we love to see it. Fair play. मैं तो watch party करने आया था was the सर man to give us हो a गया ना खत्म surprise. अभी। Well, it's time to throw it down to the stage where there is an इंटरव्यू देख के interview आऊंगा with Chronicle 10 मिनट standing वेट by. करके Let's कर लो give this over to Lou Le for the joueur le Horizon plus post-match titré interview. de l'histoire de Valorant vient chercher sa première win à Paris avec Fnatic. Team, do you have time for me? 10 मिनट रुक रहे तो रुक जाओ Can I bother you for a second, Chronicle? पता Of नहीं course, congratulations तुम first बोलते of रहो all मैं क्या बोलूं for this उसमें huge victory against RRQ. And you are आसपास indeed a very निकाल big दिया मैच। pride for EMEA, one of the best flex players in the world. We've seen some Vi, some Breach, some Viper, but deep down, what's your favorite agent to play? Harbor? Harbor! We never. I'm just joking, not Harbor. Harbor. Give me a serious answer. Sova, 100%. Actually, Sova, ok. Donc, première question, c'est l'un des meilleurs flex du monde, une fierté de l'IMEA. On a vu la Phantom Vice, Nami, de la yes, yes, Viper, I du know, I Bleach, il know. peut tout jouer, mais c'est quoi en vrai son pick préféré? Il nous dit Arbor pour troll, évidemment. Mais en réalité, Sova, and the second question I wanted to ask you is that on stage, इमोमेंट का क्या हुआ क्रेजी नहीं खेला ना नहीं क्रेजी भी नहीं खेला बट बुरा भी नहीं खेला ही बस फ्रैगिंग गुड ऐसा नहीं है तो टीम नहीं जीत पाई कन्वर्ट नहीं हो पाए राउंड थोड़ा डिफरेंट बात है बट ही प्लेड डिसेंट do we see you in such a shape today? I don't know, Jake was popping off crazy with some emotions, I think. One round we actually had to chill him down because he couldn't get a gun. Like after he was like, yeah, we won, like started screaming up, but he forgot about the taking gun. I was like, God bless, he took it. But I mean, our emotions are crazy right now. I think everyone's excited to play champions since obviously for everyone is a big target. Big goal, and yeah, it feels great to come back on stage again. Boaster gives the goofy main character from anime vibes. To diffuse, you know, given how Don, बोलो ना। excited he was, but this didn't सुनना कल happen आप indeed. ऑल्ट Donc, पर comment खेले est-ce और que ça हारे s'est passé बहुत pour vous? Vous êtes de retour. आजा क्यों तो कर रही थे भाई तब Des तक âmes d'enfants sur le 10 जन्म लगते हैं तो मैच मिलने में oublié de ramasser une arme à un moment donné, donc on a dû essayer de le calmer un petit peu, mais voilà, on est trop content d'avoir gagné. And last question. I know that you're a team player. I know that क्यों कर दो props अच्छा to यहाँ other से players. चले So गए apart from your teammates, who do you see हाँ having क्यों the तो कर दो potential to be the लियो तो best चला गया player परिवार of रिटायर हो the गया tournament? Best player of all time. Of the tournament in Champs Paris? In my team. No, outside of your team. Oh, that's tough. पर G2 तो हार गई ओ क्या कह रहे थे बहुत टाइम बाद क्या Just to jinx them a little bit, you know? Just the region, right? The region as a whole has the potential. Donc, qui pour toi, à part tes teammates, a le potentiel d'être le meilleur? La réponse de Chronicle. Thank you so much. Merci, Chronicle. Congratulations again. That's it for us on stage. Let us sit back to the analyst desk for some more discussions. Wait a second. First of all, shout out to the Calpano cosplay. I don't know if you spotted that in the background, but that was kind of I think that's kind of an upset. They had me believing after that first map, even though they lost. I thought it was really impressive that RRQ on their worst map that they're playing. कैसे bot की तरह जा रहे हो आगे? So close against Fnatic with Chronicle in prime form. And then they go into Abyss, their map pick. They played it once this year. It was a loss. I was hoping for so much more, but I don't think their game plan on attack गाने सुनूंगा really एग्जाम had फिनिश the depth पेपर खत्म to reliant on a रनिंग lot of सून those एल्फायर ये मैं YouTube पे जाके देख लूंगा बाद में one player. Obviously, Boaster had. एक कॉम्पी खेलते हैं गाइस फिर उसके बाद निकलते हैं Yep, bro did the right thing. आवाज भी नहीं आई भाई तुमने बहुत रिस्क लिया रिकॉन ना करके गुड राउंड हेलो इट्स मी लेजेंड रैंक ब्रॉन्ज 1 अरे भाई क्योंकि वो वेजी बॉय का व्यूअर है ना इसलिए Like, how did you all join us put Death, but my head says I sit on what's this up, man? Alpha? This bow has taken men and beast alike. I have found there is little difference. यस आज ही खत्म हुआ कल एक दिन ब्रेक लूंगा फिर वापस पढ़ाई चालू है फिर से पढ़ाई चालू किस बात की पर मैसिव हाँ बोलो कैसा लग रहा है कंपनी में ये तो चालू तो उन्होंने
अरे वैसे खेला मैं बीच में ऐसा कुछ वो नहीं है। दूर है छोड़। भाई शेरिफ स्किन है। ओमन भाई आप लिंक से खेल सकते हो क्या? स्मोक भी दे पाओगे, मेरे लिए फ्लैश भी दे पाओगे अगर है तो। ये राउंड नहीं है, नेक्स्ट राउंड चलो। वॉकअप हो रहा है कहीं पे। ये हो रहा है। अबे बाप रे। भी हो रहा है। स्मोक। आए नहीं। वापस जा रहे सारे। रोटेट गाइस, रोटेट। अरे मैं किल मार रहा था। यूरू 60 ऑन क्लो। एक ऑलरेडी ए पे है, बाकी 2 मिड पे थे। इसको मैंने ओवर हील पे 60 मारा है तो पता नहीं। लिंक से आ सकते थे पीछे। ये दोनों मिड थे ये। इजी सो तेरे। साउंड है क्या ए पे? नहीं बी में ना आ सकते होते वो घूम के बिल्कुल। 30 seconds left. Last player standing. कैसे बंदे ये लोग भाई, मिड आके वापस जा रहे भी। Spike planted. बहुत एक हेवन की तरफ क्या होगा? क्लो इधर था ऑलमोस्ट। अरे फाइट तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था। एंटी I got your backs. Just, from the front. हट यार, मल्टी किल हो सकते थे आप मेरे। अच्छा अभी बात चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है। यो में 4 मारे भाई। क्या भाई प्लेस? उन पे डाइव ड्यूलिस्ट नहीं है ना लोइक। यूरो तो है। Called off CD. Spike planted. Last player standing. 104 डेडलॉक लो है तो। क्राउच करके पीक ले रहा है भाई। छी एम ऊपर था। I want yours head. चलो क्या खेले? पहले स्मोक, फैंटम, शील्ड, ब्लाइंड। ठीक है ये वैंडल लें। डिफेंस में फैंटम ही लेता है। चलो सुनो उन लोग पे योरू है, बहुत फेक करेंगे वो लोग। फेक पुश, कोई लर्ग आएगा, कोई क्या करेगा। एक मेन के बाद उन पे स्पेस वाले एजेंट नहीं है। बैठो कोई भी पे, मैं बैठ। नॉट इन। देख ले राइट अपना, मैं देख रहा हूँ। योरू भी पे टीपी गया। बी स्मोक रिटेक रख स्मोक नहीं दे रहा हूँ मैं। चल दो आ रहा हूँ। सिटी ब्लाइंड है मेरे को। रिटेक बोला मैं। रिटेक लगाया था। Spike planted. You had your fun. My turn. देना गाइस डिफॉल्ट Reloading. मेन स्मोक दे रहा हूँ।
डिफॉल्ट ब्लाइंड देगा मुझे ऊपर। One enemy दिया remaining. मेन आउट गुड राउंड। अरे मैं टीपी लगाया था मेरा। चलेगा कोई नहीं राउंड आ गया तो एक जगह जाएंगे यूटीपी लाएंगे Reloading. होल्ड करेंगे। हेलो व्हाट्सअप फाइनली फ्री हुआ कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग फ्री यू मिस टू वेरी ग्रेट मैचेस एक का तो मैप खैर मैं भी मिस किया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बट क्या बोलते हैं क्या रिजल्ट रहा MIBR 2-0 अबे मैं बोलूँ डिस्कॉर्ड डिस्कनेक्ट करो इसको पुट करो अगर मिड पे है तो तेरा स्लो वाला यहाँ पे डाल हाँ MIBR 2-0 BLG एंड फैनेटिक 2-0 RRQ दे रहा हूँ अभी शायद बी फेक कर सकते हैं Shadows traveling. फेक है। ब्लाइंडिंग अरे साइट ऑलरेडी है अंदर साइट कैसे है यार वो 80 यूरो टाइमिंग हुआ राइट से गया वो ब्लाइंड थे इधर वाले दोनों यार Spike planted. यूरो 80 बैक साइड फैला से Last player standing. One enemy remaining. Flash placed. Not ready yet. दिखा था डिफॉल्ट गन दिखी थी भाई छोड़ो I hate to say it, but यार हेल्प करने का मैं अपना आराम से जाऊंगा so what's the plan? छोड़ो भाई दोनों ब्लाइंडेड हैं यहाँ पे वही यार थोड़ा हाँ अरे सीन कुछ ऐसा हो गया ना इतने यूटिल आ रहे वो लोग मुंह पे आ रहे वो टाइम ही नहीं था भाई कोई नहीं I heard Cron Goat played well oh very well दोनों नहीं पहला मैप तो कुछ क्रेजी किया और गार्डियन एज था बहुत क्रेजी देखते तो मजा आ जाता The footsteps Shadows traveling. not committing in अभी Blinding prep. Flashing. गए आ फ्री है एक भी नहीं मार पाया मैं शेरिफ आज एक वीक की भाग दौड़ आज अप्रिशिएट हुई अच्छा लगा मतलब किसने करी घर वालों ने दैट्स गुड Reloading. Retrieving flash. Reloading. Close right. Last player standing. रिश्तेदारों ने ओके दैट्स नाइस Control the space. Control their choices. यार ब्लाइंड नहीं आया चलो कोई नहीं बिना ब्लाइंड के खेलते रहा हूँ अभी तो शायद भी हैवी होने वाला है लग रहा है मुझे कोई नहीं मैंने पूरा रिटेक्ट मेरा भी अल्टा वाइस सुबह भाई एक काम करो ना आप इंटरव्यू उनका रिकॉन दे दो ना मैं हेवन से मारता हूँ स्पैम ओके यहाँ पे दे दूँगा इधर से खेल लो भाई ट्रिपल साइड खेल रहे हो मेरे साथ कोई और करो ना स्पैम के लिए बैठ एक बंदा बैठा है भाई साहब बैठो ना आजा मैं रोड करता हूं सोबत तो नहीं बॉल है Who's next? अरे कमिट कर Cover going out. कोई नहीं करने दे आजा मेरे पे अल्ट है मिड फेक है टीपी मार लिया पीछे मिड आ सकता है गाइस Slow down. यार बिना 70 टैग No more. एक ही था फेड ही था डोंट लीव बी तुम्हें किसने मारा कोई और ने टीपी मारा शायद हेल्प करो ना उसकी साइड पे नहीं अभी ऐसे फुटस्टेप्स नहीं है कुछ गाइस चल एक बी पे लगी है
अर्देन स्मोक देता हूँ। 30 seconds left. Face your fear. एल्बो लिंक करो। Spike planted. गन्स नहीं होता। आज गौमूत्र पी। आज रोटेट। तुमने गौमूत्र पिया या ट्रोल कर रहे हो? One enemy remaining. डिफॉल्ट। नाइस राउंड। सुनना। वैसे ही जा मैं बीमेन पे अल्ट मार। ये तुम पीछे मुड़ के क्यों आए वहाँ पे? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया तुमने जब उसे स्लो किया तो। मैं कहना वो पीछे मुड़ के फिर योरू से कैसे मरे वो? अरे वो थोड़ा सा कॉल दे रहे हो भाई थोड़ा सा। क्या हुआ? सोवा और रेना भी आओ मेरे साथ। हाँ इधर रेना नहीं जेट जो भी है कॉम्बो करता है ये। कॉम्बो नहीं किल दे अर्ली तो किसी ने थोड़ा तो इंस्टेंट अल्ट मार रहा हो। बीमेन से ही स्टार्ट कर तुम लोग दोनों बीम जेट एंड सोवा। मुझे पता नहीं था कि वो दे रहे हैं पंडित जी वो है स्मेल में तब से रियलाइज हुआ। यहां तक जा रहा है तो कोई नहीं जस्ट रिलीजियस बिलीफ डू व्हाट यू फील लाइक डू व्हाट योर रिलीजियस बिलीफ फास्ट दैट्स फाइन। साउंड है बस बैठ सोवा बैठ Shadows traveling. गलत स्मोक हो गया। एल्बो स्मोक दे रहा हूं चाहिए यहां से आ रहे हैं The hunt begins. Nice and slow now. जाओ ब्लाइंडेड है 4 ब्लाइंड है ब्रो। My territory. आई गॉट ऑल 3 देयर Last player standing. यार सब थे वहाँ पे यार 5 ब्लाइंड किए हैं मैंने यार वेले। अरे अल्ट में पहले मारा मैं ब्लाइंड मैंने कॉल दिया भी था यार यहां से आ छोड़ो भाई तो ये अल्ट मारा था ना। छोड़ो भाई कोई नहीं वेले के बस की ना है। हाँ मतलब इट इज बट स्टिल नॉट अ रेगुलर थिंग फॉर मी। मतलब आप वैसे सेंस में कह रहे हो स्लो में मेरे को मार दिया एक वैसे सेंस में कह रहे हो कि इसलिए तो ब्लाइंड करना था ना नहीं मार पाते फिर ये तो तेरा एज था भाई वहाँ पे। अरे ब्लाइंड के साथ ही मारा है मेरे को। क्या बोलते हैं मतलब मैं समझ गया आप उस सेंस में कह रहे हो कि इट्स नॉट नॉर्मल एंड रेगुलर फॉर यू टू डू तो उस चक्कर में आप You're close top mid up can be linked here bro. No charges. Cover going out. I have 2 bullets left. On the left. तो मुझे लगा राइट बैठा हूँ। 64 deadlock 94 fate। तो लेजेंडरी मॉड डिनर करके वापस आ गया भाई। तुम गए थे बताया भी नहीं भाई ऐसे चलेगा। ये कैसे बंद होता है भाई? 94 है वो आराम से मार। NT I demand what I'm owed. बीमेन का लेन को लेके पुश करके बैठता हूं। बीमेन पे हां फाइट लेना पड़ेगा। वुमेन फ्लैश भी दे सकते हैं। ये राउंड तो नहीं है फ्लैश नेक्स्ट राउंड बाय करूंगा। यस वही समझा माय बैड कोई बात नहीं। अभी मैं कुछ कंप्लेन वाले वे में नहीं बोल रहा था मस्ती वाले वे में बोल रहा था बे कि गए यार मतलब नखरे टाइप्स वाले वे में कि गए तुमने बताया भी नहीं कैसे थे मॉड हो ये वो। बी रश करना है क्या? मेरे पोजीशन हां बी का सीन स्मोक दे दे रिकॉन तोड़ना। ओमन फ्लैश Cover going out. चेक किया। Hello? You bro, how is he not fucking dead? Spike planted. Last player ला standing. बॉडी शॉट डीमन ले 3 बॉडी शॉट मारेगा। मन कर रहा है कि एक वेलो खेलूं लेकिन हिम्मत नहीं है अभी बहुत थक गया। थकान में तो मत ही खेलो थकान में अपना एम भी नहीं चलता दिमाग भी नहीं चलता। हाँ फिर भी कैसे नहीं हो रहा भाई वो तो फिर थकान वगैरह में बहुत दिक्कत होती है इसलिए रहने दो। फुल्ली फाइट लो मैं तो बोलता हूं। अरे यूरो ते को लाइन अप आते हैं ये वाले यहां पे अपना जो भी होता है उधर। हाँ आता है भाई यूरो बोल यूरो बोल यूरो ने वेल ले इसमें अच्छी बात बता देना
अरे क्वेश्चन तो तुमने दोबारा लिखा ही नहीं तो बताऊं कैसे? ये ओमेन फ्लैश देना पहले यहाँ पे। अकेला था फेक के लिए। बस पीछे आ जाओ मन, अरे पीछे आ जाओ भाई 3 बंदे मुझे स्विंग ले रहे हैं, कैसे पीछे आ जाए इंस्टेंट? नहीं पहले को बोल रहा हूँ, वो देख क्यों स्टिक कर रहा है भाई। लिखा था मिस कर दिया होगा, फिर से लिख देता हूँ, लिख दो यार। भाई ब्लाइंड बंदा भी नहीं मारा, फिर क्या बोलूं? इसने वही तरफ ट्रैप लगाई है। पे दे रहे उन लोग वो उसके पीछे। चेक तो करना पड़ता ही है ना, मतलब और कैसे पता चलेगा कि पे नहीं है? ये जेट क्यों गया पता नहीं। पॉपटी थोड़ा स्केल अप। स्कैनिंग अहेड। 40 दिया। गेम में मुझे आईलो के प्लेयर करीब हैं, इसमें क्यों मारते हैं? मैं गेम कर रहा था। अच्छा ये आपने पूछा था, अभी बताओ। मैं सेकंड फॉल्ट गया हूँ, नहीं गया बॉल एंटी। पर ये बताओ ना, डैश नहीं किया क्या तुमने मेन? तो क्यों नहीं किया? ब्लाइंड का ही के लिए करवाया? ब्लाइंड के पीछे ब्लाइंड से अरे छोड़ भाई, गलत कॉल था भाई। बोल रहा भाई, अरे कॉल तो सही था, ब्लाइंड हुए हैं, एक ब्लाइंड हुआ एक डिस्प्ले। तो ये डैश मारेगा तो मिलेगा ना इनको, इधर कुछ पकड़ेगा। अब ये तो भाग के जा रहा है पैदल पैदल, तो उसमें फिर क्या बोले? अबे बोलते रहे ना बेंचो में, कब से बोलेंगे? चुप करेगा? मैं तो उसको बोल रहा हूँ, तू क्यों चिढ़ रहा है? अरे छोड़ो 4-8 कर दिया। अजीब ही चोदू है भाई। बी स्मोक बी दूर स्लोड है पिक लो। Face your fear. Last player standing. Spike planted. Close right over. 55 मैंने भी दिए यूरो। मैंने आसपास की वेले देखा इंस्टा पे यार, मैंने नहीं देखा, पता मेरे को ना काम पे जाना पड़ेगा तो मैंने मिस कर दिया भाई। मैंने ना मिस कर दिया यार, मेरे को ना उसका काम से जाना पड़ा, मैं करोड़ नहीं देख पाया। पर मैंने उसका नियॉन पूरा देखा, मैंने वर्नो का सोवा देखा, कोटेरिया का केजे देखा भाई, और आर्जिन का वाइपर भी अच्छा था। आर्जिन ने भी अच्छे पिक्स निकाले भाई, पता है अपने उसमें अटैकिंग में लर्थ करके वाइपर ले गए, तो काफ़ी सही था यार भाई। MIBR बहुत क्रेजी खेली यार रोनिन भाई, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था यार। BLG #1 चाइनीज टीम पर आ देगी यार, बताओ। ओ शिट, Shadows traveling. My territory, my rules. 150 वाई साइड है। All running back. फेक Cover going out. अरे अभी से भाग रहे थे वो। 140 ड्रिल ऑफ। कितना? 140 मिड पे ड्रोन है। एक इधर है, सब भी है। I'm leaving B. Spike down A. One enemy remaining. Knife na kade. Scanning ahead. TN1 team versus team people said doesn't deserve to be here. True. अबे एक बात बताओ, CN#1 हार गई APEC कह रहा हूँ अमेरिका #4 से। कल अमेरिका #1 हार गई APEC #4 से, EME #4 से, ठीक है। आज APEC #2 हार गई EME #3 से। तो टेंशन मत लो तुम लोग, एम एंड डब्ल्यू करना, ओमेन फ्लैश ले लो चाहिए तो। और मिड पे भी स्मोक नीचे में कुछ नीचे में। जस्ट मैंने आसपास लास्ट मैच देखा मैं MIBR का, मैं वही किया था।
अच्छा जाओ जाओ एम एंड डब्ल्यू करो जाओ। आजा आजा पिट मत जाइए तो बस आसपास किल मार दो। Flash placed. Blinding. रश नहीं कर सकते। Reloading. अभी खेलो। There they are. चार है निकल जाओ। चार है बी चलते Reloading. निकल लो। सुनो बी फेकर क्या हो ना, बी फेकर के वापस आओ। चलेगा यार। होल्ड कर। ओमेन मिड होल्ड कर। मिड पुश होल्ड करो ना मिड आके। जा रहे हैं निकल जा निकल। चलो भैया घुस दो तुम। घुसना पड़ेगा तुम गाइस। आजा Cover going out. मिड पकड़ने की कोशिश कर। One down. Someone's in defender spawn. एक और आ रहे होंगे, फेड भी आ रहा होगा वहां से। अरे ओमन मेरी तरफ है। Cover going out. Last player standing. One enemy remaining. EME #1 हार गए, ये पैक #4 से। हाँ EME #1 हार गए, ये पैक #4 से। भाई बहुत क्रेजी चल रहा है भाई ग्रुप स्टेजेस पर। अभी ये है कि इसके बाद अभी एक मौका और मिलेगा, तो देखना पड़ेगा भाई। ग्रुप स्टेजेस क्रेजी जा रहे हैं। चैम्प कब से स्टार्ट होगी? चैम्प सबसे स्टार्ट होगी, मतलब कैंपेन स्टार्ट हुआ है। व्हाट डू यू मीन? टूर्नामेंट स्टार्ट है कह रहे, कब से स्टार्ट होगी? व्हाट डू यू मीन ब्रो? Shadows traveling. यू रिस्पॉन्ड टीपी है। रिस्पॉन्ड मिड पुश कर रहे हो। तो ऑलरेडी आ गया भाई मेरे मुंह पे। Spike down mid. Last player लॉल standing. चैम्पी तो चल रहा है मेरे चोला का नादान बालक ना। नेक्स्ट वीक का लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट वीक क्या कल से तो है? अपन नहीं, कल से नहीं परसों से है, एक दिन छोड़ के है। My quiver is never full. और बाय करते हैं, ये भी ले लेते हैं। अरे वो क्यों नहीं आ रही? हाँ लेज़र के बिना मज़ा नहीं आता रिकॉन चलाने में। अभी जो रहा तो स्विच स्टेज ऐसा कुछ कहता है ना, तो मुझे लगा चैम्प चला गया इससे। अरे भोसड़ी के स्विच स्टेज है या ग्रुप स्टेज है या प्लेऑफ्स है, तो है तो टूर्नामेंट के अंदर ही, अलग कैसे हो जाएगा? हाँ भाई, क्वालिफायर्स भी टूर्नामेंट के अंदर ही माने जाते हैं, पर इसके क्वालिफायर्स नहीं होते हैं, स्टेजेस के थ्रू सिलेक्ट होता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। ब्लाइंड दिया साइड, ब्लाइंड दिया जाए। Deploying drone. Gun here. Reloading. Spike planted. Yikes. Reloading. Reloading. Shadows traveling. One city push कर रहा हूँ। Overhealed. One enemy remaining. हाँ मतलब वो वीक टू कंसिडर होगा। हाँ एक दिन के गैप में बाद वीक टू कंसिडर होगा, क्योंकि वहाँ पे शायद मुझे याद नहीं आ रहा यार कैसे काउंट करते हैं। बाकी मैंने तो तुम यहाँ, बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, उसका मैं बताऊँ कि आपको फ्री फायर ही पढ़ता रहता है, फ्री फायर क्यों पढ़ता रहता है, आपको जाना है ये वो। तो जैसे आपने मेरा SGDM देखा है ना, आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है, क्या बात ऑब्जर्व करी है? सबसे ज़्यादा क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या देखा है आपने? क्या कॉल थी? नहीं थोड़ा होल्ड करते। फोन पे टीपी करेगा यूरो देख के। कौन देख रहा? 6 मिनट तो बोलना।
एंगल होल्डिंग है, साउंड पे शिफ्ट बॉटम वॉकिंग। स्मोक करेगा यहाँ पे। यस, तो वहाँ पे मैं क्यों मरता हूँ इतना ज़्यादा बेवकूफ़ की तरह? ड्रोन है क्या? जा नहीं जा तू पास जा फ्लैश दे रहा हूँ। क्लोजर एक क्लोजर चलते मारता है। My turn. आने दे मेरे को, राइट लाइन आ दो बता, खड़ा रहे यहीं खड़ा रहे, आने दे। पीछे से Last player standing. अबे इसमें भी वेट कर रहा है यार तू। Down A. वेट क्या, मैं फ्री फायर। ठीक है भाई, फ्री फायर बढ़िया फ्री फायर था। अच्छा तो मेरा भी यही रीज़न है क्या मैं वहाँ पे क्यों मरता हूँ ज़्यादा? क्योंकि मैं बहुत फुटस्टेप देता हूँ, साउंड देके जाता हूँ, एंगल क्लियरिंग कम करता हूँ, और शिफ्ट वॉकिंग तो क्या मेरे से होती नहीं। और मैं बोलूँगा मैंने शिफ्ट वॉक करने को, बट बोलूँगा कि छोड़ भाई छोड़, मेरे को मत सुना। पर क्या करता है वहाँ पे, क्या होता है, क्या करता हूँ मैं, बहुत फुटस्टेप देके जाता हूँ, भागते हुए जाता हूँ, हर वक्त वाइड स्विंग लेता हूँ, तो क्या होता है वो साउंड लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, मार देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कैसे मार देते हैं, आप फुटस्टेप ज़्यादा देते हो, इसलिए आप फ्री फायर क्या है, फ्री फायर है कि भाई आपको पता है बंदा वहाँ से आ रहा है तो आपने पहले गोली चला दी उसके पीक लेने से भी पहले। आप फ्री फायर डीएम में देखो, हैक तो लगा नहीं रखे, कॉम्पी में हो भी सकता लगाए हुए, बट डीएम में तो लगाए नहीं है। तो मेरा भी रीज़न का, हाँ मतलब मेरा गेस तो यही है, दैट्स माई गेस। क्या मेन आउट Take flight. Launching thorns. No more thorns. Last place. One enemy remaining. main If you can't do something right, don't do it at all. तो मेरे को लगता है कि यही मेरा एसिमिलेशन है, यही मेरा अजम्पशन है कि आपका ऐसा इशू होता है। दैट्स यू कैन ट्राई, तो यू कैन ट्राई। और मेरा एस मिस हो गया यार, मैंने ध्यान नहीं दिया बातों में, मेरे 4 किल्स हुए हैं। वो रेना मेन पे मारता मैं तो एस होता भाई इतने दिन बाद। लेट्स गो। और फ्लिक का तो मोस्टली ये है कि ओमेन के फ्लैश में विले बैक साइड डैश फ्लिक का तो मोस्टली है, अभी बताता हूँ इस राउंड के बाद। हां ठीक है रिकॉन डॉज कोई नहीं रिकॉन दो ना साथ में तोड़ेंगे। रुक जा ये तोड़ दो यार, मैं तोड़ता हूं Reloading. फ्लैश कर दूसरा लिंक दूसरा तो ब्लाइंड दिया मैंने। दो लोग हैं मेरे साथ आओ जाओ खेलो तुम बैक साइड ब्लाइंड रेडी है, मैं कॉल करना बस। अरे भाई एक करके Face your fear. Last player standing. Who's next? Not flashing. Good hit. मैं माउस हट गया। जी टेंस का याद दिला दिया। कहाँ पे राउट पेंडिंग भाई? Defenders win. जी GWP। हाँ फ्लिक का मैं अब बोलता हूँ, मैं थोड़ा राउंड में इंट्रीग हो गया था। फ्लिक का क्या सीन है, फ्लिक मेरे को भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो फ्लिक का ये है, फ्लिक में आपका कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। फ्लिक में मोस्टली ये रहता है कि यार किस्मत का बात है कि आप अच्छी लॉबी में हो, अच्छे बंदे, उनका एम अच्छा है। अगर आप विफ करोगे या उनको मारने का मौका दोगे अपने को, तो वो पलट के मारेगा, काफ़ी तेज़ या जल्दी मारेगा। एंड दैट्स माई गेस। यूकन भाई सॉरी अगर बुरा मान गया तो। यूकन भाई है नहीं अभी स्ट्रीम पे। रिकॉन रैंडम प्लस ये मिस क्रेजी बैंग जेपा टेक्सचर मीटियोर इंस्पायर को वैसे मैंने रिकॉन चलाते हुए देखा नहीं था। इंस्पायर को मैंने नॉक्टर्नम बहुत चलाते हुए देखा है। और कौन सी देखी मैंने इंस्पायर को चलाते हुए? अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं इंस्पायर को रिकॉन ही चलाते हुए रिकॉन ही रहा हूँ, अपने क्या बोलते हैं उसको, नॉक्टर्नम चलाते हुए देख रहा हूँ। हु एल्स कैन आई नेम?
मतलब बहुत बंदे हैं, एवरीवन इज क्रेजी, उनको देख देख के कुछ तो सीखा ही है, चलो ज़्यादा नहीं तो बट कुछ तो सीखा ही है। हाँ, उनको कॉन्फिडेंट भी रहता होगा कि मैं हूँ, मेरे से बेटर कैसे हो जाएगा ब्लैक डायमंड का प्लेयर। ये तो बहुत ही गंदा, या गंदा तो नहीं बोलूँगा बट गलत मेंटल है, गलत थिंकिंग है, दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। क्योंकि यार ये तो गलत थिंकिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि until unless you are radiant #1 on the server, you always have a room to improve, you always have a space to improve. यहाँ पे देखो, यहाँ पे DXC ट्रिनिटी है, बहुत साल से esports प्लेयर है इंडिया में, tier 2 लेवल पे, अभी इंटरनेशनली देखा जाए तो tier 2 लेवल पे बहुत टाइम से अच्छे लेवल पे प्लेयर है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो tier 1 लेवल माना जाएगा, कंट्री के हिसाब से इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन, तो tier 1 बोला जाएगा कंट्री के तरफ से। इंडिया में देखा जाए तो tier 1 लेवल पे है, ठीक है। सियाग ने ये रेडियंट पे हिट किया हुआ है, रेडियंट रह चुका है, रेडियंट गनबडी वगैरह है, रेडियंट रैंक पहुंचा हुआ है। मेरा दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए आउटफ्रैक्ट मोस्ट ऑफ देम इन द लॉबी। ये CLE एकेडमी का प्लेयर है 11, ये भी अच्छा खेलता है, ये भी रेडियंट पी है शायद, और CLE एकेडमी में भी प्लेयर है, तो tier 2 लेवल पे किसी एकेडमी टीम में भी प्लेयर है। मेरा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आउटफ्रैक्ट देम या आई प्लेड बेटर इन दैट मैच। तो वैसा रहता है बात कि यार क्या बोलते हैं, हेलो गनर, आपका there is always place or space to improve, there is always place to improve। क्या बोल रहा है? साइफर खेलेगा? हाँ चलेगा। क्या खेलना है, क्या तेरे को? साइफर ही खेलूंगा। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत थिंकिंग है, प्लैट डायमंड क्या कर लेगा ये वो, ना ऐसा नहीं है। मैं SG सर्वर खेलता हूँ, वहाँ पे मारते हैं प्लैट डायमंड के बंदे भी। अब बात क्या है कि वो यही रहती है कि वो वहाँ एंगल है होल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसलिए आदत डालनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ेगी कि आप एग्रीमेंट बना के भेजूंगा पर तो वर्क पार्टी के लिए, ठीक है भाई, कौन भाई भेजना, पक्का भेजना। तो क्या कहता मैं, हाँ तो ये तो मेरे को गलत सोच लगती है कि मेरा ऑन या कार्ड लेगा या ये वो, सो बट द थिंग इज देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। आप ऐसा सोच के खेलो। और बात ये है, बात मैं कहता कि प्लैट डायमंड के बंदे मारते हैं RSG में, क्यों मार लेते हैं वो, क्योंकि उनको शायद ये वाली बात ना पता है कि अगर हम ज़्यादा फुटस्टेप करेंगे हम डिलीट होंगे, मरेंगे, पिटेंगे, फलाना 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 फलाना। अरे मैसिव तो प्रो प्लेयर है भाई, सामने भी फुल कॉमेडी लोग आ गए अभी। तो काफ़ी मतलब उनको पता है ये चीज़ है, तो इसलिए वो काफ़ी होल्ड करके एंगल क्लियर करते हुए साउंड पे कैप करके या साउंड होल्ड करके ऐसा ऐसा मारते हैं, तो उनको शायद पता है ये चीज़, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। हमारे ये सर्वर पे लोग कम पता है, सिर्फ हाई रैंक वालों को पता है। जैसे आपने हाई रैंक वाले मुझे ऐसा मारते हैं, आपने ये नहीं बोला कि मुझे हर कोई ऐसा मार लेता है, हम सिर्फ हाई रैंक वाला वो करा स्पेसिफाई। तो ये चीज़ थोड़ा है, ये आप देख सकते हो कि एंगल क्लियरिंग पे ज़्यादा फोकस करो DM में। Spike down A. You. Both I think. Yeah, both. One enemy remaining. Good wonder. Okay, time for a break. जाने वाला आ गया क्या? जाने वाला आ गया, जानने वाला आ गया। हाँ होगा, मुंबई सर्वर है ना, होते ही हैं यहाँ पे लोग लेते हैं। एनर्जी क्लासिक अच्छी लग रही थी यार, ऑरेंज फनेटिक की याद दिलाता है, तो ऑरेंज एनर्जी की भी ऑरेंज है ना चाहे, पर मुझे फनेटिक की याद दिला रहा है, मुझे अच्छी लगी यार। अब ऑलरेडी फ्रेंड्स कैसे मिली? अभी तो मेरे को नहीं मिली है, मैंने मेल डाला था, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, तो लेट्स सी, 4 दिन हो गए। A smoke, A flash. Police. विनर भाई का एम। One enemy Damn. remaining. Last player standing. हो गया डिफ्यूज तो, और किल भी हो गया। लेट्स गो भाई, रीना भाई ने पेल दिया भाई।
अरे मैं रिएक्शन वॉच शॉट ही कर रहा था 3 दिन से, पता नहीं कैसे मिलती फ्रेम। मैं भी रिएक्शन ही करता था पहले, बट अभी तो आप बिना फ्रेम से स्ट्रीम कर रहे, कोई इशू आया यार? अभी 4 दिन से नहीं आया, बट आ सकता है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो आई विल से टेक इट ऑन योर ओन। मेरी बातों में आगे कुछ मत करना, टेक इट ऑन योर ओन। अच्छा जी, नॉट लकी बूट कैंप पे? कौन सा बूट कैंप है? Take this. थैंक यू। Teşekkürler. Thank you. TH ने G2 को क्या बढ़िया हराया था कल भाई। अबे हाँ यार, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड क्रेजी शिट थी। बे यार Bro, what the fuck? B. Planting A. Spike planted. वेट नियॉन को मारता हूं मैं। Last player standing. One dead. You didn't lie. एक तो मारा भाई। TH cooked G2 and TL losing was surprising. One more, bro. अबे MIBR cooking BLG was also surprising, bro. बहुत सरप्राइजिंग है guys। आपके चैनल का जीजी हो गया तो ये तो जबरदस्ती बोलने वाली बात हो गई यार। मतलब ये तो थोड़ा जबरदस्ती वाली बात हो गई यार। क्यों बोलना है ये सब? कर रहा हूँ ना मैं चिल करके, अभी आपसे बस छुपा भी नहीं रहा, एज अ फ्रेंड ब्रदर समझ के बता भी रहा हूँ। फिर ये सब बोलने की क्या जरूरत है? लेट इट बी। I'll break the gecko flash, bro. Just go. Oh, let me break it up, Sheriff. Nading, no? Enemy spotted A. Where are you? Neon आगे rubble. I'm not peeking. I'll fall back. I'm getting out. Chill. We chill. 3 more remain. Actually, all four. Low है. One enemy remaining. Spike down A. Flawless. देखो मिस ब्लूम भाई, अच्छी आवाज है यार इसके फिनिशर की। And I hit 140 on the race? When did I hit 140 on the race? What? ठीक है, एनआरजी ने ईडीजी को रहा है, वो भी क्रेजी था। नहीं, that was not that crazy. तेरा क्या एनआरजी के लिए रूट कर रहा था, द वे दे डिड। मैं भी एनआरजी के लिए रूट कर रहा था उसमें। मैं भी एनआरजी के लिए रूट कर रहा था यार, टू बी ऑनेस्ट। Come, take A control, come, guys. A control. Come. I'll find you. I'm blind, fuck. I'm done as fuck. अरे स्विंग ना यार, रेज वो कोने में ही बैठा है यार, और मैं हेल्प करने स्विंग ले रहा हूँ यार। आई एम नॉट पिकिंग नाउ एनीमोर। परफेक्ट, मैं नहीं ले रहा फिर। वैसे मैं डाल दिया मैच के। हाँ, इसका तो कोई सीन नहीं है। मेल में डालता जहाँ सबमिट टिकट करते हैं ना, वहाँ पे उनका जो सपोर्ट का मेल आता है वहीं पर डाला मैंने। स्टूडेंट ने जो कमबैक किया वो क्रेजी नहीं था? हाँ भाई, बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी था। My ultimate is ready. एक मार के फटफट नहीं निकाल लेता हूं। मैं एस्किमो लॉबी खेली है, मुझे लगता है उनका एम एडजस्टमेंट एंड थोड़ा ज़्यादा गेम ज़्यादा अबाउट पिकिंग टू बी प्रिसाइज। हाँ, एंगल क्लियरिंग वो वहाँ डालते हैं, दैट्स क्रेजी। मैंने तो मतलब वहाँ डाली है। मैं 100% गारंटी नहीं बोल सकता कुछ, क्योंकि मुझे भी अभी रिप्लाई नहीं आया। 3 दिन हो गए, रिप्लाई आया नहीं अभी तक। आई ट्राइड, पता नहीं। NIGR कह रहा हूँ मैं, NIBR MIBR एंड NRG ओनली 2 टीम्स कुकिंग। नहीं यार, ऐसा नहीं है। Go tree and spam, no? उसने भी तो वो किया, लिक्विड को किसने हराया यार? जो लिक्विड को जिसने पेला है यार अपना, आई मीन एनए यार। एनए की बाकी 2 टॉप टीम तो भूल गई ना। और वाइस और तो अननोन यहां पे 4 तो हैं। 4 guys here, 4 guys सी। Where are you? Mark one. स्पॉट हुआ। वही ब्रो, बट दे गॉट ओन। वही बाकी 2 टॉप 2 टीम्स तो पिल गई ना। GX SSN वाज गुड या TL वाज या। हां, TRX ने TL को जो कुक किया वो भी क्रेजी था। Spike planted.
3 होगा. Close to the smoke. Dead. Glowing. 3. We have smoke. We have smoke for 3. Arey, in the smoke, in the smoke. Both right side. Both main. Both main, both main. Have one of these. One enemy remaining. Catch your fun. My turn. One enemy remaining. Last player standing. अभी तक तो टीएल वाला रिजल्ट है, जीटी वाला रिजल्ट ही मेरा गलत हुआ पिकम्स. अरे पिकम्स अभी फर्स्ट मैच जीतने का नहीं था. पिकम्स तो इसका था, क्या बोलते हैं कि क्वालिफाई कौन करेगा प्लेऑफ्स के लिए, तो उसका देखते हैं. चलो सी यू अराउंड, हैव अ गुड स्ट्रीम, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द स्ट्रीम. Thank you. Let's not give first pick, bro. Stay out of my home. क्या कह रहा है? Let's not give first pick, I'm saying. On buy round. Yeah. We'll catch them. Hey, Rush. Remove. My ult is ready. Bring them down. I'll find you. Mark one. Close AFK, guys. अबे यार सैचल करके आ गया यार. Spike planted. लेकिन सीड का तो है #1 है #2 का. हाँ वो तो है, क्रेजी ही चल रहा है भाई उसका. Last player standing. Shit. यार कल के क्वेश्चन भी करने थे, मैं तो घंटा नहीं कर पाया. तो देखने वाली बात है. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? एमएन पे चीज तो 2 हुए थे, फिर पता नहीं डिटेल बहुत ज़्यादा है उनके पास, तो काउंटर कंट्रोल ले रहे हैं वो. चलो मैं भी तो स्ट्रीम देखूंगा. बाय बाय, गुड नाइट. लेकिन अरे डिस्कनेक्ट, ये क्या हुआ? इधर क्या करना है मैसेज? पता नहीं, कुछ बोल के नहीं है. Amen. Where are you? Mark one. Right is. ट्री पिक मत करना. Bring them down. Bring them down. Bombs, guys. No idea. Nothing Even even. was last spotted doors. एमएन अभी तो कुछ नहीं आया. One प्राउड है ना. enemy remaining. Nice. Spike down A. I'll find you. On the right. Main. So much for their elite agent. साइबर लॉबी में किसी Where is बोल के नहीं गया Gunnar? ब्रो. कॉल कर रहा क्या? अच्छा आ रहा है क्या? गुड नाइट टू एवरीवन इन द चैट एज वेल. गुड नाइट, गुड नाइट. ओके. क्या फैंटम स्पैम लगा बे? लॉल. प्रे लॉल. ये वांट टाइप वाले लाइफ में अभी तो नहीं ब्रो. ब्रो नॉट एज ऑफ नाउ. Let's make some chaos. कैन गो सी. यस टू प्ले मेड. नहीं उठा रहा. See. लगी रहा था. Multiple. Fire in the hole! Where are you? Like I never left! Mark two. One Ben, one main. One enemy Right remaining. where I thought. I don't know. And below. There. We have bomb. Spikes here. Holding man.
CT. Where are you? नहीं चलानी अभी तो फैंटम चला रहा है. One dream ends, another begins. ओके ओके. चलो राउंड तो निकाल लिया, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. एक और निकालते हैं. थैंक यू भाई. They are mine. Where are you? Doing. Oh yeah! Monster on the loose! I have problem for city. Can we fade out and retake? Waiting for the smoke. Bomb buddy out. Reloading. I'll take size. Spike planted. I tagged 5. Tagged 4. I have 5. I'm ulted. Take hold. Risk, can you ult? I'll go with you. Yeah. Main smoke. अबे कर दे भाई. Smoke. Last player standing. ये 3 बार बोला नहीं है. नहीं सुनाई दिया भाई. पार्टी में बोल रहे क्या? NT. टीम में बोला भाई. पता नहीं सुनाई दिया तो बोला भाई. नहीं एक बार तो मुझे सुनाई दे गया था. अबे मैंने तो टीम नहीं. उसके बाद अल्ट का आवाज आना बहुत पता नहीं चला फिर. मार्क 5 मेन का स्मोक होता. 2-3 किल थे बेंड पे मस्त. I'll find you. वन 140 नियॉन ग्लोब भी वही है. बाकी तो मुझे कोई नहीं दिखा. नियॉन 1 HP दो. इनसाइड नियॉन आ गया. साइड आ चुका. ऊपर से पिक करेगा सर. नहीं 10 HP क्यों करेगा ऊपर से. पहली बार कोई बग इसमें किया है मैंने. क्या हुआ? मुड़ा के टीम पर एक ग्लिच था, वो पड़े रहता है जमीन पर और कैरेक्टर मूव नहीं करता, बट मूव करते हैं. फनीएस्ट ग्लिच. बॉडी पड़ी रहती है जो मेरे साथ हुआ है. 10 HP यार वो. 10 HP है वो. Last player standing. One enemy remaining. कुछ नहीं है मेरे पास. ईशो भाई वो UE5 का ग्लिच है. गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम रिटो. हाँ वो मेरे साथ भी हुआ है. Spend everything. I have experienced that too. I have experienced that. I have to experience that. हाँ भाई बॉडी पड़ी रहती है जमीन पर और फिर हम हवा में उड़ रहे होते हैं. ना गन दिखती है, ना कुछ, ना बॉम्ब, ना टीममेट, कुछ नहीं दिखता. मेरे साथ भी हुआ. मेरे साथ भी हुआ. Seen. Hi! I'm pissed! Bring them down. 130. What the fuck? Find you. Spike planted. Last player standing. रिकॉन बहुत जल्दी चलेगा. मेरा टाइम ले लिया स्मोक आउट जाने में. क्या ही कहा जाए. मेकिंग बिलियन एंड गिविंग मिलियन डॉल. You know what we should do? I'll tell you. क्यों? We should win. ये शील्ड भी आ गई. यूटिलिटी फुल आ गई एक के चक्कर में. लॉललेस का क्या ही कहा जाए. ये तो मैंने पढ़ ली चीज़ें भाई. रिटो वालों पे वैल्यू पे कभी खर्चा नहीं करता है. दे ओनली फोकस ऑन लॉल. भाई जो नई स्किन आ रही है इसके लिए सैलरी देनी पड़ती है पता है. कस्टमाइज करो कॉस्मेटिक डिज़ाइनर एंड ये एंड वो को पता है. नो दैट. Play slow, no? Let's make them dance. Someone's logging in. Just play slow. Bring them down. Chill. Reloading.
Might be pushing up B. I think he's here. I have nade. Oh, nice shot. Come back. One on side. 51 vice. Spike down. C. Vice low. Coming back. 2. Arey, why are you peeking? My bad. अरे हमारे ज़माने में होता था अनुशासन शिष्टाचार उन्हीं IN आया करती थी कुछ कॉपी पेस्टिंग छी। अरे भाई अरे ये वो सब तो आएगी उससे ही तो पैसा आएगा उसका खर्चा किया होगा लेकिन गेम के बग नहीं हटाते. That's true. Last player standing. Hey bro, Raze, why would you pick that, bro? Why did you pick that, bro? ये क्या बात है? इतने के लिए अरे भाई मैं एक का रोटेशन का कॉल ले रहा था हाँ तो गेको को मारा ना भाई. Keep fighting. गेको को मारा तो उसने ट्रेड ले लिया मेरा. चलो कोई नहीं. साइबर खिलाओगे भाई तुम लोग. अरे तो अभी और क्या ही बोलूं ये गन्नर चल दिया. रैप को तो जीतने नहीं दूंगा भाई अभी खेलना पड़ेगा. एक चलो कॉल दो बताओ किधर यूटिल चाहिए. Their line can't hold forever. My camera is destroyed. Where are you? Can we chill? तीन B. Come see. Leaving. Nice shot. Nice shot. वापस भी क्या? No, come see. 2B बने. Bring them down. City. Spike planted. 2 city. 55 minus. Who? Gecko minus 55. Bring them down. 2 city, 1 waterfall. Take hold. राइट आ गया यार मैं रिलोड ही करता रह गया. Last player standing. भाई सेफ प्लांट ही तो दूंगा. तो सीटी का कंट्रोलर्स में कुछ भी नहीं है तो सीटी पूरा ओपन है यहाँ थोड़ी प्लांट दे सकता है. ये बात पता. प्लांट की क्या ब्लेम है भाई. ये क्या लॉजिक है. व्हाट. ये भी सही है भाई. यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिला तो कुछ भी रैंडम चीज़ पे बोल देगा ऐसी ब्लेम उठा के. जो सीटी ना तो स्मोक था ना कंट्रोल था. स्मोक तो यहाँ का था वाटरफॉल का. तो यहीं तो प्लांट करूँगा सिर्फ. बाजी का ये भाई खुद ही कर लियो प्लांट. अब एनर्जी क्लासिक पास है. पता नहीं टीम में होगी किसी के पास. मुझे आइडिया नहीं. Bring them down. I have the spike. क्या कर रहे हैं. इधर उधर घूमता रहता है ना. कॉल देता है ना कुछ. कहाँ जाना है कहाँ नहीं कुछ नहीं. Go get him. I can recon bend यहाँ पे. I'll find you. Enemy spotted. C. बैठा है इधर बैठा है मेरे मार्क पे बैठा है. Can you open door? I'll open. भी जाना है क्या. I can come. Wait, pushing. Oh yeah. Come big. Nice. Good trade. Bring them down. We'll catch them. Hunting. Spike planted. Where One are lick, one My lick. ult is ready. One enemy remaining. Was C. Oh sorry was B. मेरे को तो B में से मारा था. गेट खोल रहा है. Here.
ओडिन है अब डाउन रखता हूं। Not fucking picking it. भाई वो तो भाग गया है अब डाउन छोड़ के, तो फिर साइपर के कांटेक्ट पे पीक लूंगा। वो बीमन मार गया लॉल। लेना ब्लाइंड का प्रॉलर इजी माउंट कंट्रोल। यस सर। Still waiting. I'll find you. छोड़ दे गन मर गया। मेरे यार इतनी कैरेक्टर की तरह है पूजा राजू जैसे, किल्स फरहान जैसी, राम तालिन जैसे कहते वंशुक वांगड़ू जैसी, लेकिन करम रांचोड़ा जैसे, पर दोस्त ही है रांचो जैसे, दोस्त ही है रांचोड़ा जैसे। सैड रे। ए पे वो फ्लैश करता है, यहाँ रुको, वो फ्लैश पे कोई डिटेक्ट नहीं होगा, उसके बाद अपन वॉकअप करेंगे जब वो उठाते रहे। I'm Cool. here to stay. Give the bomb to Fade, no? I have the spike. I can crawler rappel. Did they cross? नहीं जंप स्पॉट देखा। Enemy spotted. No charges. Nice shot. Prowlering in. Very close. Bring them down. Hey, two. Enemy spotted. A. Bro. Nice. एक door. One more. Healing. One stairs, one door. One link. हाँ. लिंक के अंदर क्लोव है। You want me to recon or prowler link? मारना Gecko was city. लिया सकता तो Sound दे रहा हूँ। Gecko आ रहा है वो, होल्ड करो। Enemy remaining. Where are you? I'm going up. Spike planted. Bring them down. स्मोक कर रहा हूँ उसको। मेरे कांटेक्ट पे स्विंग लेना ना। टैप पे पिक कर लो दोनों। लोग और रेना डुओ है क्या पता नहीं यार, मैं पे वो नहीं है यार, डेली वेल लॉग्ड इन नहीं करा मैंने अभी तो फोन पे, तो मेरे को पता नहीं कौन क्या किसके साथ खेल रहा है या क्या है। वो ढूंढते हुए मुझे जरूर आएंगे, पर उधर मेरे मांगने वाले मतलब अच्छा उधार मांगते हुए ढूंढने आएंगे, उधार मांगने के लिए ढूंढते हुए आएंगे। लॉल यार ओडी हेवी करते हो तुम। बाय नहीं यार, सेम करेंगे शॉटगन On my mark. Careful here. Let's clear left, please. They found my wire. Pew pew. Bring them down. Drop in a. One side prowler. Enemy spotted. 2 or 3 at least this side. वैसे वॉक बैक कर लो ना। नियॉन बी है, नियॉन बी के बाद वैसे यार क्या वैसे प्रॉब्लम हुई थी वो साइड वैसे इनसाइड। गेको भी वहीं था, गेको भी था तो क्लोव का इन्फो नहीं है, बट वो भी होगा, नहीं हो सकता कुछ कोई। नियॉन वाज बी, वाइसन गेको वर है, क्लोव ने स्मोक दिया, ये तो नहीं होगा क्लोव। ये रहा सी है कैसे आई हैव अ प्रॉब्लम। ये साइकिल कर सकता प्रॉब्लम के पीछे साइकिल नहीं, बेंड ले जा रहा हूं, चलेगा बेंड बैक साइड गेट पर डेड वन साइड इन स्मोक। बेंड ये सेकंड I'm blind as fuck. इनसाइड मैं आउट वाटर। Last player standing. One enemy remaining. अबे क्या ऐसे मर गए सार। इनोजन छोटे पैसे निकाल। I don't have satchel, कॉल दे रहा हूं तुझे। हां बोला वो नहीं है मेरे पास, नहीं है वो, पैसे भी नहीं थे लास्ट राउंड, क्या करूं। बोले जा रहा है चूती की तरह। प्रॉब्लम तो एक ही है, इनोजन छोटे पैसे क्लोज एंड भाई तूने पढ़ ली। आएंगे मुझे जरूर आएंगे,
म्यूट करने से चल नहीं उधार मांगने वाले नहीं है तो कॉल चूतिया बहन Careful here. अल्ट कर सकता हूँ पास ले रहा हूँ वाईसी खेल रहा है उसने अपना नेड एक कर एक और स्पाइक यूज होगा यार रोटेशन है Walk in B, no? I'll come with you. मेरे पे बॉम्ब है मैंने वो छोड़ दिया इन्हें में तो बूमर भी नहीं आएगी ये लो 69 पैसे एक ही स्मोक है कॉल होगा सर टेल मी क्यों ना बोल ये कौन है Open door. ओपन हम सारे बी के बाहर खड़े हैं गाइस आई कैन टपर इन लिंक ना रुक और लाउडर दे रहा हूं मैं कल ट्रेड है वो 3 लिंक गाइस 3 लिंक 2 लोग लिंक के अंदर है 3 लोग हैं यहाँ पे गो ऑल हियर Go. First. His wall is tripped. One out, waterfall. 10 seconds left. Spike down. C. उसने पूरा सेटअप -100. Last player standing. अबे ऐसे एडिट कर दिया तो उसके बाद तो घुसी जाओ ना कहाँ पे Walled off, no? ब्रो वॉल्ड ऑफ हो गए ना सारे उसके बाद वो लोग ने यूटिल डंप कर दिया उसके बाद नहीं सी जाना था हमें फास्ट जाना था टाइम हो गया मार दिया ना उससे देख मैं बताता हूँ मैंने अल्ट मारी थी ना यार 3 लोग थे लिंक में गेको ने ऊपर से अल्ट किया था और वाइस ने यहाँ से अल्ट किया था लिंक से पूरा सी खाली था या एक जो भी सारे ही मार दिए सही में We'll catch them. I'll find you. I have the spike. Reload. Reloaded. Two peeking. Spike down A. Last player standing. Nightbot Amazon Watch gifted $69,420 to Shisho. Lol. Foolish. Match point. Surrounded by minha família. स्टन करता है भाई यहाँ पे आपको सैचल करके वो फाइट जीतना पड़ेगा वो वॉक करने को कॉल देते हैं भाई मैं तो सैचल करूँगा क्या दिक्कत है फ्लैश डाल रेना फ्लैश कर मैं करता हूँ सैचल मैं केस देता हूँ क्रॉसिंग के लिए मैं यहाँ पे फूल डाल रहा हूँ फूल डाल रहा हूँ वहाँ पे बाद में नेट फेंकता है वो Their fears betrayed them. स्पाइक देना तो दे दो अल्ट है अल्ट ले लेना Catch them. Drop हट जा भाई Where are वन रबल भाई मेरे को ब्लॉक क्यों कर रहा है भाई पुश कर रहा हूँ Spike down A. Last player standing. Last player standing. On. Indeed. Hey, don't play race, bro. Bot. भाई तू ब्लेम कर बस तेरे को खेलना तो आता है नहीं लॉल इधर तो एंड में ब्लेमिंग फ्लेमिंग हो गई चलो मैं भी गेम खेलने जाऊंगा बाय बाय ब्रो टेक केयर चलो एक शील्ड है वो भी यूज़ कर लेते हैं भाई अरे एचजी का लग रहा है मुंबई भाई 2 गेम 35 विंग पे खेल दिया अब थोड़ा ही ऐसे चलेगा गुड नाइट ब्रो गुड नाइट Match found. भाई आज तो दोनों टीमों ने
खेलने का एबिस फिर वो एक्स्ट्रा ओमन खेलने का इसका तो क्लोक खेलने का कुछ होगा तो Wherever they run, I will find them. हमने क्लोक लॉक कर लिया। ओमन भाई तू ओमन ले लेगा तो डबल कंट्रोलर थोड़ा दिक्कत हो जाए। सेंटिनल ले ले रेंट के लिए। हेलो ब्रदर। इसको बोल रहा है भाई, कौन है इसका ब्रदर? हेलो ब्रदर। हाँ नहीं पी लें जरा तब तक। ये लास्ट, इसके बाद फिर बंद करके 12:30 बजे तक। काम करने जाएंगे। Do you the gift to radiance? साइफर है ना? We're finally Okay. free to use our power. अबे Blinding crack. Flash placed. Shock dart. Reloading. Scanning ahead. Reloading. Blocking sight. Spike down A. वन मोर बैक साइड। ना तो एक पे है। Last player standing. Spike down A. चलो भाई जी हो गया ये तो ये रीमेक हो रहा था, इसके साथ मैं बंद भी कर रहा हूँ। ये तो हो गया भाई उसका। May the wind guide your blades, Jet, and my arrows. रीमेक हो गया तो फिर मैं 12 बजे बंद कर रहा हूँ। कौन इतनी लेट? अब थोड़ा काम भी कर लेंगे। 600,797 चलो 10 मिनट अपने पे 10 मिनट टाइम पास डीएम मारते हैं। प्रमोशन कॉपी है नहीं, कर लेते हैं। Excuse me. Nvme playing Swift play बहुत टाइम से खेला ही नहीं है। जैक तो शायद खेला ही नहीं, पिछले भी नहीं खेला। अगर मैं थोड़ा खेला बहुत टाइम से Nvme में खेला ही नहीं। उनको भाई 8-10 हरी रैंक झूलम झाली यूवी वेब आई बॉट 27 पर सूट। काम करते हैं आज, खेल लेते हैं।
अगर ये खेल रहा होगा तो हम भी खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। Match found. रिप्लाई दे देगा डीएम के एंड तक ये तो ठीक है, वरना हम अपना 12 बजे निकल ही लेंगे। Current champions Paris September by October 5. Death match. Warm up. Move in after I strike. That's when they're weak. After I strike, that's when they're weak. Hit them when they're not looking. अबे एडजस्टमेंट नहीं कर पाया। क्या हकू किया था मैंने? वन फोर्टी होते होते रह गया, बस गया बाबू बस। रिप्लाई तो दिया नहीं। Lights out. क्या भागा मैंने? दस डीएम के एंड तक देखना है, रिप्लाई कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। You're done. मुझे तो राइट से आवाज आई आपके वो खचक खचक होने की, खचक खचक। Idiot. 3. और 140 मोमेंट हो गया बे, सैड हो गया।
121. ये कैसा बेचता हूँ? Dead. Three. 4. Dominating. Don't get up. Ten kills remaining. होल्ड करा था, होल्ड रखता ना, काउंट भी दिया। 3. ओ 120, 140 भी नहीं, 120 भी होने लगा है भाई अब तो फैंटम में। Anyone else? Back off. 5 kills remaining. Die. Dominating. One kill remaining. One left. जी जी भाई जवाब नहीं दिया यार ने को भाई ने तो। चलो देखते हैं, एक और कर लेते हैं, 12 बज जाएंगे, 5-7 और 5:15 तक की कर लेते हैं, निकलते हैं। आयदम खेल रहा होगा, मैं तो कुछ नहीं भूल गया, थोड़ा 12 बजे बंद कर रहे तो कर ही देते हैं। अरे वेजू भाई वो खेल रहे तो खेलते हैं। हेलो। हाँ लगा दो लगा दो। डीले है? नहीं लगाओ फिर। ठीक है लगा रहा हूँ। क्या डीले लगा के आया आगे में से? Match found.
dodging. Fuck this map. Nah, you are dodging because player 5 is in the team. Who's player 5? Buttercup. Lock कर दो फिर. Yes, you go neon or raise or euro खेलना है or, गेम. or jet. यार ISO खेलता हूँ मैं यार. चलो. Bro, what? He already has picked Sova. Okay, dodge कर दो. कर दो आप फिर. डॉज हो गया? एंड मूवमेंट पे है मैं बस. उसी ने कर दिया, आइसो नहीं कर दिया. अच्छा तुमने सुना नहीं? नहीं मैं तो एयरफोन अभी पहने. मैंने तो अभी पहने. हाँ क्या बात हुई? Wherever they run, I will find them. अरे बताते तो बात क्या हुई थी पर. हाँ तो वो आइसो जो था वो ऐसा बोल रहा था कि fuck this, I'm dodging this map, I don't want to play Karod ऐसा. तो मैंने वो लॉक करा. फिर मैंने ऐसी जानबूझ के बोला कि no you are dodging because player 5 is in team. ऐसे था कौन प्लेयर भाई? मुझे भी नहीं पता था कौन. लॉल. Maybe if we kick their asses hard enough, they'll stop bothering us. वैसे मेरे साथ खेलो ना, कॉम्बो करेंगे. पार्टी की छोड़ के साले. क्या स्कोर? चलती. It's not. Spike down B. We have the spike, guys. Where are you? मल्टीपल है. स्पाइक इधर है लेकिन. वो एक बहुत दो ही बंदे थे भाई. Thanks to Jet. Thank you Jet. आया था. Scanning ahead. One enemy remaining. Flawless. No one left to send a message. Oh man. Sweet, that went well. All right, same thing this time. Strike से करते हैं. अभी नहीं, अभी बोनस में नहीं करते. I mean इको में नहीं करते. आ रहे हैं. Revealing area. Spike down B. Found them. One enemy remaining. ए पे मुझे और लेने में. मारो नहीं मुझे और लेना है. Gun here. Spike spotted B.
ऑफ करेंगे। तो मेरा स्क्रीन पे सबसे माइक नहीं था। जेट वैंडल एक्सचेंज करो दो। ये ले क्लोव ये ले। नॉट बाइंग नॉट बाइंग। क्या ही करूं भाई। शेर दे भाई शेर दे। पी जाओ ना एक बंदा माफी दे दो। ए कुछ सब देके जा रहा हूं। साइड खेल रहा ना तू। मैं ज्यादा देरी बचूंगा नहीं। छोड़ दो फिर जेट आ गया देखो पीछे से अपने। Revealing area. Enemy spotted. Spike planted. I have a drone. It's like it. Down. Reloading. Shock dart. One man out. One enemy remaining. Okay, nice. भाई देयर जेट गाइड से मैच गलत मारा है भाई उसको। हाँ है मैं कर उसको लाइक अभी पे हेड मारा है दिस नीड टू Reloading. My ult is ready. Got it. We're clear. They're supposed to be fighting back, right? वुमेन को आगे 131 द हेल। फिर से ट्राई करते हैं अगर कुछ से देखे आए तो। ठीक था ना चलेगा ना वो। भाई मेरे को हाँ ये वाला स्मोक दे रहा ना तुम्हें बढ़िया था। तो मैंने केस के लिया था बट इसको कॉल दो। हाँ इसको कॉल दो। These attacks aren't very professional, huh? Again same. Shock dart. मैं जब आप होल्ड कर दे। देख रिकॉन करके आते हैं चलेगा। हां कर ही रहा हूं रुको। Scanning ahead. Nothing woman. Spike planted. Reloading. I have a drone. One garden drone. Last player standing. Thrifty. एक खेलो ना यहाँ पे ठीक। आलगो भाई मैं बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा हूँ। Just taking a wee cap. मैं हेवन से खेलता हूँ। मेरा ट्रैप का हेवन वाला इजी किल से ऑन तो साइड फैंटम बता दूं जरा मूड नहीं है। ये मिल रहा है उनको। Revealing area. रिकॉन में तो कुछ नहीं आया अभी। यही है शॉट से आ गए इन्हें। शॉट फाइट कर लेते हैं साथ में। समन प्ले मिड ना भाई 3B क्या है भाई। 3B कहाँ है भाई। चलो तो मेरे ड्रोन के वजह शॉट जाते क्या? Deploying drone. नहीं जाना शॉट रहे तो बोले। Spike planted. शॉट क्लियर है। Last player 140 standing. human. Human 10 HP यार फैंटम मोमेंट हो रहा है। Indeed. Then commit. साइफर भाई नहीं होल्ड हो रहा है तो पीछे हटाओ किल ट्रैप्स लगा दो भाई। Reloading. पीछे था वैसे तो इसलिए फैंटम नहीं चलाते मतलब मैं मोस्टली हाँ बट आज चलाऊंगा मैं कोई बात नहीं। एक बार 140 हुआ है हर बार थोड़ी होगा। ज़्यादा बार होगा तो चेंज कर लेंगे। हाफ बाय करना।
Play with me. Omen mid up. Scanning ahead. Where's smoked off? मैं पे ड्रो and mid now. एक अभी mid आया. को चाहिए तो. Spike planted. लो भाई शॉट पे वैंडल पड़ी है. My ult's ready. Defeated. 100. Last player standing. One enemy remaining. Nice. I should use Vandal only, I think. यार खड़ा हो गया मजा आ गया. Con 4P break हटा दो ना. Oh shit, I haven't removed that yet. My bad. My bad. खेलता हूँ सुबह सेट या फिर किसी को ये So play. I need a gun. मैं बी खेलता हूँ. ये वाली एंड करते हैं. Okay. वन वे देखकर आएंगे तो करता हूँ. मुझे लगता नहीं आएंगे. अगर ये आते तो तुम डायरेक्ट हेल्ड कर देना, नहीं तो मैं बी पे ऐसे वल्नरेबल करूंगा. ठीक है, मैं शॉर्ट से हेल्ड कर दूंगा. ठीक है. My bad यार गाली भाई, thank you for informing me. मेरे साइड पे और दो से उनका यूटिल एटलीस्ट वेस्ट कर रहा हूं. Come into the unknown. Play with. It's okay. Again footsteps है. Again split है यार. Mirrors वो. मिड टॉप देख रहा हूं मैं. यार मैं अल्टे मार रहा हूं क्योंकि मुझे split लग रहा है. कहां पे चाहिए मिड? हां बचा के रखो. No, ऐसा. It's taking me now. वल्नरेबल डाला क्या आपने? I am the hunter. Main care. Enemy spotted mid. Omen mid link. I saw a kill. One B main. Omen smoking B main. You should run. 3. Enemy spotted B. I'm leaving. Jet 80. Spike planted. Scanning ahead. ड्रोन कर रहा हूँ, सीटी जाओगा. Deploying drone. One in smoke. Reloading. Last player Someone standing. peeking. Massive knock. Who's there? Survival is still. नहीं आप मेरे पे मत डालना. आपने साइड भी चेंज कर लिया. आप पुश करके मरे हो. It's okay. Guys, rush mid. Eco, rush mid. डाल नहीं रहा मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ, unlucky. भाई आपके वल्नरेबल से एक तो मरा. चलो पे rush mid guys. all. मैं अगर आप ऐसे क्रिट करोगे मैं म्यूट कर दूंगा. आपकी टॉप मिड स्मोक ले लो. बोल नहीं रहा हूँ मैं. आप भी कुछ मत बोलो. I'll recon mid link. Smoke top mid. It's okay. All good. I'll recon Right here. Smoke top mid please. Watch this. Revealing area. B. Okay. Your fault. Reloading. Break the door. I'll drone out somebody. Take flight. Spike down B. CT careful. Bhai, what is this? Go, Clove. You have ult now, bhai. remaining. Nice. Easy. Not planting now. Chill. Back like I never left. Nice. They sacrificed for चिल nothing. ब्रो. क्यों चिल्ला रहे हो अल्ट करने के लिए? 1v3 है. प्लांट भी नहीं कर रहा है. क्यों जाए हम साइड? आराम से खेलने दो ना जो जिंदा है उनको. No. What do you mean? Plant नहीं करा है. I just killed the planter, bro. They were planting. हाँ तो हम. It's non. Non who? Hype of the game. No, it's okay. भाई मैं तीसरा गेम है मुंबई में. मैंने ब्लेमिंग तो बहुत देख ली थी. मैंने सही में 10 में नहीं देखी वो. अरे वो तो कुछ बोलते ही नहीं है. क्या ब्लेम करेंगे? नहीं करते हैं वहाँ भी. ऐसा नहीं है नहीं करते. देखो ना कैसी बात कर रहा है. व्हाट डू यू मीन आई किल्ड द प्लांटर? बस चुप हो जा भाई. फिर देख लेंगे हम. Remain out. रोटेट कर रहा हूँ. फेक भी हो सकता है.
I'll take boat house most probably. Come out, we can take, I guess. Multiple enemies being Scanning ahead. Spike planted. On target. वेट One करोगे main. मेरा? Ninja main. आप स्टेयर्स देखो अपना। Nice. एक नीचे जस्ट नीचे। एक बोट हाउस है। Enemy spotted B. पीछे कोई नहीं है, स्मोक में जा। 4 बुलेट है मेरे पे, रुको। राइट आया आपके स्मोक आया। Left. One enemy remaining. बुलेट नहीं थी यार, वरना मैं स्मोक स्पैम कर देता। अरे कोई ना। Cypher. Better just use the util and play boat house. Okay. None of your business? Bro, what the fuck? कौन से ज़माने के जोक मार रहे हो भाई? You're literally negative KD. अरे उसको तो KD के लिए ब्लेम करो। Stay alive. Play shotguns if needed. You can win. भाई मांग लो, मैं देता। ए वैसे बॉय। भाई मांग। Drop him. Mid link multiple. मेरे घुस गए। Breaking them. मैंने क्लो उनको। तेरे मार्केट हो गई। 4. Nice shot. Nice, one more tag. Last player standing. लो बाबू क्या हक दिया? Spike planted. I'm gonna save. मुझे एक बात जाननी है, मैंने अभी ट्राई किया 0.3 पर इतना क्विकली जो टर्न करते हो 180 वो तो नहीं हो रहा मुझसे। आई मीन बहुत ज़्यादा स्लो एजेंसी लग रही है। इससे पहले कौन सी पे खेलते थे? 0.3 मीन 0.15 वेट 600 ना, वो भी ट्राई किया मैंने। 0.2 के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्लो है, मैं टर्न ही नहीं रहा। मतलब 0.242 जो तुम्हारा है 0.242 वो 1600 DPI पे ये सेंसी खेले थे इससे पहले। नहीं मतलब क्वेश्चन इज कि इतना इजीली रिटर्न करते हो 180 समटाइम 270। तुम यहां से खेलोगे तब मैं तुमको हेल्प कर सकता हूं, अदरवाइज आई हैव टू बैक ऑफ। फिर जब मैंने पुश करा देयर वेटिंग। अरे बी आओगे? तुमको पुश नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत टाइम पे पुश कर दिया। अरे ऐसे भी आओ, वो कॉम्बो कराओ यूट्यूब का अगर आते हैं तो। कैमरा के साइफर भाई के कैमरा है इस एज पे ताकि हमें दिख जाए आ रहे हैं यार। गाइस ए और मिड थोड़ा छोड़ के खेल लो। ए और मिड थोड़ा पीछे से खेलो चलेगा। ये 3 है ना। Destabilize. Shock dart. Reload. Not coming in though. So was mid and Not in. Fake dash. One mid KJ. Okay, jet है Zemin. Don't die at mid. Crossing. अरे हमारे साइफर ने छोड़ दी साइड। सुनो वेजी भाई, बोलो ना। ये मेरे ड्रोन पे क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज जाओ। केजे क्रॉस साइड, रेना क्रॉस साइड आई गेस। ना अकेले तू। Scanning ahead. Spike planted. Both one hell, one gen, one main. One gen. One main, one hell. One hell, one main. Main. One enemy remaining. Nice. Wait for this guy. 5 bullets. Nice. वैसे पता है पीछे नहीं उठाते ना और मेन मार देते, मैं इसको मार देता। मुझे देख ही नहीं रहा था जब लॉल। अच्छा बट नहीं मतलब वैसा मैं ये नहीं कह रहा कि उठाया क्यों या कुछ, बट वैसे कह रहा हूँ कि वैसे भी मरता वैसे भी मरता। बढ़िया था। Last round in the half. Nothing will be saved after this. I need this. Drop me this cypher. Need a drop. यार मेरे चॉकलेट पे डालने नहीं आ रहा था। आ गया। 0.242। अबे तुमने चॉकलेट किया कि नहीं किया? कितना किया लेट हुआ वो शायद, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ चॉकलेट। डिस्प्लेस्ड है एक डिस्प्ले 3 सेकंड पे किया मैंने वैसे, जस्ट सेइंग 3 सेकंड पे।
दो बंदे वल्नरेबल थे। Get out of my way. Nowhere to run. The hunt begins. One more. Logs. 40. Both. Drop in a Revealing area. One enemy remaining. Locks still nice. Nice. 0.242 तो 1600 पर है। मैं एक्चुअली 0.13 पर था 800 पर। काफ़ी स्लो एनसी है वो, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम से लेफ्ट राइट या बैक से मरता था। एंड ऐसी कोई एनसी नहीं जिसमें 180 करने में कंफर्टेबल रहूँ। एंड ये एनसी थोड़ी ज़्यादा हाई है तो रेयरली ऐसा होता है कि शेक कर जाए टैपिंग में एंड ऑल। मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा। आई डिडंट अंडरस्टैंड आप बोलना क्या चाह रहे हो। लेकिन आप कौन सी सेंसी पे तुम खेलते थे और कौन सी सेंसी पे खेलने के बाद तुमने मेरी वाली सेंसी ट्राई करी, मुझे ये थोड़ा पहले सिंपल सरल लाइन में लिख के बताओ। इतना प्लीज़ इतना बता दो मुझे पहले सिंपल सरल लाइन में। फिर वो ना को भाई डायरेक्ट रीरेश तो बेटर ही जाएगी। लोग टीवी का यूटिलिटी सब है, टरेट भी नहीं तोड़ पाएंगे तो चलिए हम लोग साइफर बी मेन से आते हैं, तुम लोग आ जाओ बाकी। स्मोक शॉट Revealing area. सो गाइस most probably push किया हुआ। Drop in a smoke. Shot down. Last player standing. I have the spike. Spike down mid. Next time don't smoke a shot, okay? क्यों? They will play inside that. मिड जाने का कॉल था ना, तो यहाँ जाओगे स्मोक में तो मरोगे ही यार। डोंट स्मोक शॉट का क्या कॉल है ब्रो? तो बहुत ब्रेंडेड बात थी यार, बट चलो। Are you talking to me, Cypher? साइपर नहीं सोबा। हाँ bro, I'm talking to you bro. सोबा, it's okay bro. अरे ये क्या बात है भाई? मिड टू बी जाने का कॉल है, यहाँ जाके मरेगा स्मोक के अंदर, तो फिर ये क्या कॉल है? डोंट स्मोक शॉट नेक्स्ट टाइम ब्रो। ये क्या बिलीव है भाई? ये क्या लॉजिक था? व्हाट? Never smoke here, okay? It's easier to take fights from here, you know. अच्छा ठीक है। First time immortal Soba, you're just trying to get. फर्स्ट टाइम इमॉर्टल तो क्या बोल रहा है भाई? See, it's so easy to winning fights here. That's what I'm saying. पुश कर रहे हैं हर राउंड। ठीक है साइड पे Fight. It's okay, so you can shift walk, try to get one. It's okay. पीछे तो आने दे रहा हो। बाय द वे, बट ठीक है। Last player standing. क्लच पे 500 गिफ्टेड, 500 मेंबरशिप गिफ्टेड क्लच पे। अरे घंटा यार, क्लासिक से थोड़ी क्लच है वो भी। टरेट डाउन हो तो एक्सपेक्ट करेंगे। मार दिए तो 500 रुपए। वेल ट्राई। अभी पढ़ता हूँ जीजो भाई। ये पे प्लांट निकाल दिया तो 100 रुपए। बताओ क्या ये पे ले लेना था प्लांट? वैसे अब तो सुन लिया उसने। ले लो 30 seconds left. Spike planted. Scanning ahead. वो भाई वो नाइस। चलो प्लांट तो ले लिया। फोन खरीद लो भाई, पेटीएम दो, मैं पैसा सेंड कर रहा हूँ। इसको बोल रहा है भाई ये लोग तो बहुत बीमेन पुश कर रहे हैं भाई। पिछले में सोवा ने कर दिया, अभी ओमन ने किया। सही डब्ल्यू प्लेयर्स हैं भाई। इनको You go aggressive on me once, I'm gonna. If you're not a good shot today, बोल किसको रहा है? there are other ways to be If used. you don't want to win the game, bro, just keep. अबे बोल किसको रहा है ये तो बता दे भाई। I'll make sure of भाई that. साइफर और जेट को तो म्यूट ही कर दो मैसेज। मैंने तो बहुत दादा मेरे को तो मजा आ रहा है गाड़ लेने में, मेरे को मजा आ रहा है। तू अग्रेसिव आदमी बोल रहा है भाई, इतने प्यार से बोला मैंने कि ब्रेडेड कॉल है, बट ओके अग्रेसिव लगा बेचारे को। अग्रेसिव तो भाई इसे देखा ही नहीं थे। रुबन भाई हाय नहीं है। करेंगे अपने शरीफ से बाहर राउंड में। आ जाओ। Let's go यार। Scanning ahead. देखो फर्स्ट ब्लड तो मैंने ले लिया, बाकी अभी थोड़ा चिल करो। लोल 2 पुश कर रहे शॉट भाई, मैं कॉन्फिडेंस तो बहुत है। 2 शॉट, एक मेन, दोनों मेन है शायद। मैं नोट कर रहा हूं, मैं क्रॉस से कौन स्कैम से। और टाइमिंग हो गई यार, मैं स्विंग लेने वाला था। शॉट केजे और जेट थे, बाकी तो पता नहीं दो का। ठीक है। Cage triggered. Cage triggered. Fall back होएगा। 80 और Someone is B. Stairs 1.
एक सेकंड लेना, प्लांट करो और पेमेंट वाला गाली का रिप्लाई था। चलो ठीक है, अभी देखता हूँ। भाई 80 वाले को नहीं मार पा रहा। Last player standing. एंटी रे आप पढ़ रहा मीन्स आपकी सेंसी ट्राई के बाद वो स्लो लगी तो बनी थी मुश्किल है, लेकिन मेरी वाली थोड़ी रुको। मीन्स आपकी सेंसी ट्राई के बाद वो स्लो लगी तो 180 मुश्किल है, लेकिन मेरी वाली थोड़ी हाई है तो शेकी। बट आपकी सेंसी पर आप 180 इतना इजीली तो एक्चुअली वो शेकी रेस ना रहे, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया है पकड़ने ढूंढने में, लेकिन कभी मिली नहीं। 0.5 तो चलो है, पर मैं यार आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि पर मेरी सेंसी आपने कौन सी सेंसी पे खेलते थे आप मेरी सेंसी ट्राई करने से पहले, ये मेरे को जानना था, ये मेरा सवाल था। वैजी भाई भी बोल रहे हो उसको डिफेंस का ना वो ऑन करना आप, टाइमलाइन देखना कितने जेट तो एफ पे गया भाई, अलग ही बंदे हैं भाई। Revealing ए धक्का मत दो रे। Enemy spotted. I have the spike. Gun here. Spike down A. Last player standing. Bro, every time I'm peeking, you're just falling back. Why? Fucking baiter, bro. 30 seconds left. लेफ्ट देख रहा था भाई। 6 Immortal 3. भाई लेफ्ट भी ना चेक करूं, ऐसी पीक ले लूं यार, कैसी बातें कर रहा है। दिमाग की थोड़ी कमी है क्या जेट? थोड़ा कम ब्रेन है क्या भाई? थोड़ा सा कुछ नहीं मिल रहा है ब्लेम करने को तो रैंडमली कुछ भी बोलेगा क्या? Braindead as fuck. I'm checking left. I'm holding left. वो peek ले रहे हैं. They are fighting us तो भाई कुछ तो I'll keep ना. Every time I'm fighting you, waiting me fucking better. Mid to B की कॉल जाने पे भाई तू शॉट जाके मर गया. Me and Clove were rushing in mid to B instead of the primary duelist. तब कहाँ था बेटर? तब क्या था बेटिंग? Braindead as fuck bro. The hell? मैं तो चल देने का भी मन नहीं कर रहा है ब्रो, ऐसे ब्रेंडेड एस बातों पे तो। ब्रो फर्स्ट टाइम इमॉर्टल फर्स्ट टाइम बे छूते जितने तेरे किल उतने में उससे ज़्यादा मेरे पास गन बड़ी है मॉडल के। क्या तू रैंक का क्या बकवास कर रहा है? रैंक का क्या बकवास कर रहा है? Kill your utils here. One enemy remaining. My ult's ready. Last one down. मत बोलो यूजलेस है, इसको समझाना। अबे चूती वाली बातें कर रहा है भाई, अलग ही है। लो भाई लो, ड्रॉप लो, ये लो भाई ड्रॉप। मेहनत की कमाई का पैसे से ड्रॉप दिया है, नाम रोशन करना मेरा बेटा। बड़ी मेहनत से तुम्हारे पैसे भरे हैं मेरे ट्यूशन के। लो भाई यार बहुत आपके पास एजेंट का पोटेंशियल बहुत है किल्स करने का, मारो यार। चलो बाय करना। Revealing area. Go peek in. Over there. Reloading. Enemy spotted. Scatter. Enemy down. Reloading. मैं तो टैग था, देखो उसने मुझे वॉल बैंग मारा है, मैं कुछ नहीं कर सकता था।
retrieve the spike. तो हम हैं, टाइम भी तो होना चाहिए, मैं तो कॉलेज का काम भी नहीं किया। Here. जंपिंग ले रहा है वो डब्बे पे, अलार्म बॉट भी होगा। Reloading. 30 seconds left. Nailed them. One more Got heaven, this, bro. one heaven. Easy. Planted the spike. Cypher play under. You got this, bro. Last player standing. How come they can push through your? सबको अपना खेलना है, अलग नहीं माननी। वही नहीं माननी भाई, नहीं माननी। Easy. तो इजी खेलता है यार, होना चाहिए था साइफर भाई। 70602। प्रॉब्लम ये है, इन्हें एकदम परफेक्ट सपोर्ट, एकदम परफेक्ट कॉल, एकदम परफेक्ट यूटिल सपोर्ट भी चाहिए ताकि परफेक्ट खेल करके राउंड दे। अरे हल नहीं होता इनसे कुछ, पर परफेक्ट यूटिल या परफेक्ट सपोर्ट भी चाहिए तो कॉल तो सुनो। कॉल तो भाई, ये तो इमॉर्टल 2 लाइफ टाइम पीक है जेट। Roll for initiative. लमाओ, ओ माय गॉड, लमाओ भाई, लमाओ। Drop the spike. Drop in a smoke. लमाओ भाई, लाइफ टाइम पीक रैंक इमॉर्टल 2। Shot down. Take flight. तो वह मार्केट है, मैं इसको टैग करता हूँ, वो पे लो इसको। ये छुप गया है तो बोला मैंने आपको मार्केट है, फिर आप इग्नोर कर रहे हो मार्केट है एंगल को। अरे दिखा ही नहीं ड्रोन में, इसलिए बोला तो छुप गया। कॉल नहीं, ये तो गलत बात है। कॉल दी मैंने, छुप गया कॉर्नर में। सुना ही नहीं दिया, ठुक गया उग गया कुछ बोले, मुझे समझ मैं बोला छुप गया, ये तो बोला हुआ ऐसा। One enemy remaining. साइड ए चल, 40 -40 लास्ट गाय साइड, यू कैन गो ए। Hold this guy. फर्क तो है रेड और रिबो में, वही मैंने पहले भी कहा था, अगर सुनने लग जाए तो सबका रैंक अप पक्का। वही ना, अरे इतना ब्रेंडेड बात कर रहा है। पिस्टल में कॉल दे दी, वेजी ने भी बोल दिया, मैंने भी, वेजी भाई ने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, और क्लोव को बोल दिया स्मोक दे देना शॉट का। ये वो इतना सब लंबा चौड़ा बात किया और शॉट में घुस के मर गया। Play from there. यहाँ घुस के मर गया, ये यहाँ मरा है पिस्टल नॉड में, शॉट के स्मोक में पुश करके। You can play from there, bro. ठीक है, We both can peek. ये यहाँ जाके मर गया, जबकि मैं और क्लोव यहाँ पे घुसे हैं मिड, और ये दो बीमेन जा रहे हैं, हम दो मिड बॉर्डर जा रहे हैं। यार अकेला यहाँ जाके मर गया, और फिर कह रहा है डोंट एवर स्मोक दैट ब्रो, शिट आई स्मोक ये वो। अच्छा, तो मतलब मिड कंट्रोल लेने के लिए जो टियर 1 लेवल पे वीसीटी गए थे, जब वो ये स्मोक देते हैं तो वो बेवकूफ है। तू भयंकर बहुत प्रो है, तुझे सब पता है। इलॉजिकल एज फक ब्रो, इलॉजिकल एज फक। Looks like I was the stronger one. My ult is ready. You don't get a reset button. So stay alive, please. ओ ट्रैकर स्कोर 560 ड्रॉप। अरे इतना ईगो भी अच्छी बात नहीं जेट भाई, ड्रॉप दे। Wake up bro, we got this. Experienced immortal players. Oh my god guys. अरे भाई इमॉर्टल 2 लाइफ टाइम पीक तो भाई चुप रहे भाई जरा प्लीज। भाई मिड टू बी की कॉल पे जो शॉर्ट स्मोक में घुस के मर जाए वो तो चुप ही रहे प्लीज। ओ माय गॉड ब्रो। Scanning ahead. Enemy spotted. B. Back like I never left. Right here. Go in. One more spike planted. One enemy remaining. ये भी मिड पुश हो सकता है, देखते हैं। Reloading. There you are. W. Reload. Level heads until we're home, yes? Good. अबे 137 दिया बे ओवन को, क्या किस्मत है ओवन की भाई।
KJ got out, okay guys? You gotta fight your... You gotta fight them and win the fights. If you lose, we lose. ट्राई करते हैं KJ अल्टे A पे Win your 1v1s, Globe Cypher. Come on, bro. देख लो क्या करना है भाई विन योर 1v1s के पीछे आवाज नहीं आई राउंड में क्या करना है कि ना कॉल की आवाज में ड्रोन दे रहा हूं Take flight. Wait for the smoke to go off, then go in. 2 दिन से इतना देख लिया मैंने, डायमंड तक नहीं आ पाया मैं इस एक्शन से। फ्लैट 3 नजर आ रहा जो माइनस लगना शुरू हुआ है। होता है यार, थोड़ा होता है। Reyna is short here. Yeah, short. If you're clueless like this, Cypher, why do you play in this lobby? Who boosted you to Immortal 2, bro? मैसिव ऐसे 100 में टिप दूंगा बी में इनकी ड्रोन मत करा करो। छूटिया क्या भोसड़ी और क्या कर दूं तेरी मां छूट Someone boosted you. नहीं लगता वो हर तू तो रो रहा है भाई मैं छूटिया यार कसम से मैंने तेरे को पहले बोला भाई नहीं लग रहा है ये। I can see your tracker. Every match you're playing shit. Yeah, he deserves. Last player standing. बाय परेगा वाला साइफर मैंने स्पाइक इसमें छोड़ा ताकि मैं लड़ करूं एंड मार्क स्पाइक ना कहीं रह जाए एंड मार्क कह रही कि स्पाइक रह ना जाएगा। ठीक है We lost the game, guys. GG's. Outside of this gig, immortality. मैंने बोला भी था कि फेक करो मत जाओ ऐसे ना वीडियो दी से या मार रहे और अलग। आ गया मैं आ गया। Personally, I don't have a problem with Cypher because at least he's trying. You sure you wanna go away, guys? Cypher, do one thing. Okay, lark mid. Wait for the footstep. When you hear that, just kill that bitch. That's all. Do it. Let me get one fight. स्पाइक देते जाओ, स्पाइक देते जाओ। नहीं चलेगा चलेगा। अरे कर दो ड्रोन कर दो अब चलेगा जाओ। कर दूं क्या रुको कर। कुछ करेंगे हां। All good, all good. मेड पे Deploying drone. देखो वाइन से नहीं ले जा रहा हूँ, साइड पे जा रहा हूँ। केजे सेटअप है यहाँ। Enemy marked. Revealing area. I got this spike. Nowhere to run. Any spotted A. बॉम्ब नहीं है मेरे पास। One enemy remaining. It was you or me. क्या है यार ये ड्रोन ज्यादा टिल्टेड, ड्रोन से ज्यादा टिल्टिक बनते हैं। अबे अजीबोगरीब है भाई, अजीबोगरीब फालतूगिरी करते हैं भाई बहुत ज्यादा। दो है? नहीं ये फुल ही ले लिया, वैसे भी ज्यादा राउंड बचे नहीं है। इवन होल्ड करूँगा या मिड इन्फो रखूँगा तो तुम मैं तो बोलता हूँ अभी यूटिल कुछ निकालो मत, तुम एम पे घूमो अपना थोड़ा अभी देखो पिक मिलेगा। ओके ओके एक साइड पुश होना है तो होल्ड कर पुश कर दे मारो डबल पिक ला के रखो पुश कर दे कैम कर रहा हूं पुश कर हम तो बीमे नहीं खड़े हैं। There's no point of smoking these areas, bro. You fucking boosted noob. Never smoke these. अबे वो सिटी खड़ा है यार, वहाँ पे स्पाइक ड्रॉप हो गया तब वो सिटी खड़ा है। क्या यार ये वो तो है भाई। No fucking shit. 20 and 7 blue. Look at yourself, you boosted fuck. भाई उसने म्यूट कर दिया भाई, उसने म्यूट कर दिया। Match point. We are strong because we are together. Don't forget that. Drop the gun. भाई देखो हम तो बीमेन लगा के खड़े थे, अभी ये शॉट में स्पाइक वाइक ड्रॉप हो गया तो क्या कर दो भाई कॉल भी तो नहीं है ना। ड्रोन को रखो अल्ट टैग कर देना ठीक है। चलो करता हूँ शॉट पे वैसे ही पहले ट्राई। Deploying drone.
केजे का यूटिल, अरे केजे का यूटिल वगैरह लगा हुआ है। अरे सॉरी, इन ऑन द राइट, इन ऑन द राइट जी भाई। जी रुको रुको रुको, मैं साउंड दे रहा हूँ। Hey, you saw him? गया। One enemy remaining. Plant One ले is लो। here, upper is here. Upper is here, bro. Cypher, on right. थोड़ा मेरे पे Don't push रिकॉन him, है। guys. You have ult. Stay calm. Cypher, you can go back and ult. मेरे पे रिकॉन है, अल्ट्रा सा है, चिल मारो। पोस्ट प्लांट स्मोक्स भी नहीं उन पे। वही ये लो, साइफर भी आ गया। Nice. Break the door. Make him confused, guys. Come on. Revealing area. Bhai, you have to break the door. Okay, confuse him. वे साइफर को मारता है यार, वे कितना एचपी बचा यार। Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. भाई उनका केजे तो गधा है बिल्कुल, कैसे सेटअप लगा के बैठ गया, मतलब अंडर हेवन जैसे कि हमारे साइफर जैसा होगा। गलत सेटअप पे नहीं खेलना वाला, आई मीन हाँ, नॉट उस समय उस साइफर से तो अच्छा ही है। If they push, listen. If they push, insta smoke here. Just hold it, okay? If they push, insta smoke here. People with 0.3 KD always say that I don't care. Shot that. Get it. Okay, smoke. साइफर पे कैम में लगाओ ना, ऐसे अंदर वॉकिंग कर जाएगा पूरा। Bro, why too late? Scanning ahead. अब वो बिना रोटेट बैक कर सकते हैं, रखना अपना शॉट, क्योंकि और रेना एक था, भी सोवा था, बस और कोई ज़्यादा साउंड नहीं था। I guess they'll re-hit B because they know Cypher is not there. Might be B again. Hold. They're looking for Smoke. Cypher. Mid or maybe. रोनोट को क्या बी में तो पिक लेके Why pushing? वो तो वैसे भी फ्री के लिए है। Drop in a smoke. सीन हो रहा है यार वहाँ पे, fuck, वो जंपिंग के पास करके आ रहा है। Spike planted. एंटी Switching sides. यार 38 33 मैंने 3 बंदों को शॉक डैमेज दिया है, 38 और 33 का। Do not drone. Do not use any util. Wait here. Come. मेरे वक्त है केजी यही खेलेगा आई गेस, देखते हैं। पिछले 2-3 राउंड तो यही खेल रहा हूँ। मेरे को ये राउंड के बाद मेरे को बिल्कुल मन नहीं है, वो पुश करके मर गया भाई। हाँ वो बीमेन तो बहुत अननेसेसरी पीक था। Destabilizing. अरे आप स्पाइक क्यों रख रहे हो? मेरे को तो कितने चाहिए थे? मुझे भरोसा नहीं है, प्लस अरे तो मैं तो हूँ और लेता हूँ तो अल्ट वर्ल्ड के लिए। पूरा बाहर स्मोक। हाँ वो पूरा बस अकेला कंट्रोल। रीलोडिंग। रिकॉन है क्या? रिकॉन भी है, ड्रोन भी है, जो बोलो। क्या चाहिए बोलो? रिकॉन करो ना सामने। दो तो स्पॉट हो गई इधर एक और करो दो पे। मत ही करो, रहने दो। जिराफ का कर दूं? Scanning ahead. Nice shot. Excite है। On the left one. Getting side care. मैं मेन से ही खेल रहा हूँ तो। देख लो आपको बेट होने दो। Don't peek. बहुत मार गया। बहुत -90 लेना। One enemy remaining. No more to oppose us. साइबर यार क्रेजी रहा। Well played, Cypher. Well played. Not bad day. Switching sides. वोट करने का मौका ही नहीं मिला भाई, हम तो सिटीजन ही नहीं है इस देश। Overtime. Remember, wipe the prints from your guns. It's
just जेट कैन यू कंटेस्ट एम इन विद मी साइफर बी सेटअप लगा दो। हाँ मैं भी हूँ साइड पे रिकॉर्ड डाल के खेल लेंगे। जेट कम हियर। I'll first vulnerable. Can you go rifle please? Can you go rifle? Buy me. Buy your daddy. Op कर रहा है वो क्या? Shock dart. My camera is destroyed. Okay, I think again same care B. Mid multiple mid. The push up mid. तो बेगा दीन है। Oh my wire. Revealing area. -80 jet, -90. A fine death. 2 inside. -80 jet. All no. 7 retake. एक लॉक था हाँ देख। दोनों वन साइड वन कैन बी लेन। One close to me, don't pick. मैं बोला लेन हो सकता है। Bro, why the fuck are you picking? Get out of my way. ओ भाई तो वैसे आप सही में कॉल नहीं सुनते क्या? Picking you dumb fuck. What do we learn? Noob shit ISO. मैं आपको पहले ही बोला कि स्टेयर हो सकता है और वो स्टेयर से बस यहाँ पे 2 कदम इधर ही तो गया है। अरे स्टेयर वाला सुना वो केजे मेरे को दिख गया। सॉरी स्टेयर नहीं लेन अबे लेन। 2 skillless motherfuckers and you have 10 ping. अभी ये ऑफ ही था तो। सारे बाहर खड़े होंगे यार। अरे मेरे को एक्सपेक्टेड था वो होगा कहीं या तो स्टेयर वेयर के पास, क्योंकि प्लांट ना टैप ही नहीं हुआ एक बार भी, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था थोड़ा। देखते हैं चलो। अरे अभी मैं कुछ Enemy spotted B. Scanning ahead. Pushing guys. Right out. Making cover. Yeah, die bitch. Enemy tag. Oh, shaky hands. One enemy remaining. मार्केट डोर बंद कर रहा हूँ। ये रहा। Right here. Team A. Out of charges. अरे एंगल होल्ड कर लिया ना मैंने तो फिर। अरे सर वो पीक ले रहा था आपसे, मैंने एंगल लगा रखा था। ब्रोंज गोल्ड तो माइक क्या होवे, प्लेटो डाइवर्ट तो कॉल्स क्या होवे, एस्ट्रिगो ये तो सुना क्या होवे, क्योंकि अपुन ही भगवान है और इमोटो रेडिएंट ये जो जेट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ पुश हुआ ना मेन पुश कर सकता ना। ओके अभी तो देयर इज जेट विद यू नॉट मी यार। देयर इज एन अगर मिड ड्रॉप पुश हुआ तो डायरेक्ट ड्रॉप मतलब। हाँ गाली हिंदी में दूंगा पर मैच कॉल नहीं दी जा रही एक भी हिंदी में, तब से इंग्लिश चूद रहा हूँ। मैं रिकॉन पे खेल सकता हूँ। नहीं मैं छोड़। अबे फिर तू थक जाएगा यार, फिर यहाँ गेम में तू थकेगा, फिर बोलेगा स्टैमिना खत्म यार, एम नहीं होगा। तो स्पैम कर रहे हैं लोग। आग तो वैसे भी रहा हूँ भाई, ये भी नहीं लग रहा क्या। अरे अभी मैं जंप स्पॉट कर रहा हूँ, मैंने आप शॉट रखना बस। लोग ना फिर कहीं ना मरने वाला है, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है। क्या है शॉट अंदर आ गया। Scanning ahead. My bad. बढ़िया। Spike planted. Shock dart. Revealing area. एक महीना आया मेरा। Enemy down. No time. One enemy remaining. No time. Last player standing. अच्छा अभी बताऊं, गंदी गंदी गाली दूंगा। Fucking pardon bro. अरे अब तो मैं एमएन पूछ रहा था, अब तो मैं मिड पे 3 पिच गेम मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें। तो ये एकदम पते की बात, कॉज नहीं पर गाली ऑन टॉप वही भाई। अब तो अगर जीते तो ड्रॉ है, हारे तो हारे जाएगी।
Track them down. Revealing area. One holding. I go. Gun here. Go, you Tata bye bye. Our spike carrier is killed. चलो मारा तो Spike down mid. Come on. नहीं क्या उसने राइट Do किया something, man. ना उधर ही Player है standing. It is आई हंसी आ रही है मुझे यार दो आगे पे देखे पीछे साउंड आई ना किसी की? हाँ हाँ उससे पे कुछ मैं होता मैं तो पीछे फाइट ले लेता इतनी देर में फिर मैं तो चल जाता दूसरी साइड यहाँ तो या तो बोट हाउस 30 बैठा है seconds या तो वो क्योंकि उसे पता है पीछे तो आया नहीं पता नहीं चलो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है देखो। हाँ तो किल के लिए तो जाएगा वो फिर बाद में एमवीपी लेके भी तो बोल रहा है नूब टीम ब्रो मेरी टीम तो इतनी गंदी आती है भाई क्या बताऊँ ऐसे भी तो रोना है किल करके टाइम नहीं बचेगा दोनों एक साथ रश करेंगे जब ये प्लांट पे बैठेगा। हाँ तो अब वही होना है इसको ज़्यादा आता है ना 10 खेलना पे seconds left. वो ये जा रखे है लॉल अब तो निकल भी सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है नूब है वो नेगेटिव केडी है दोनों का यार देखो तो ये किल लेगा अल्ट करके राइट क्लिक कर देगा देखना। One enemy remaining. My ult's ready. लो वो भी नहीं कर पाया Can you yeah. talk to me, bro? You small dick piece of shit motherfucking Indians, bro. Talk to me. Motherfucking idiots, bro. Hindu Idiots, motherfucker bro. pushing मेरी अपनी 40 पिंग आ रही है मैं भी एक गली से ही खेल रहा हूँ बैठ के motherfucking Indians, bro. Motherfucking Indians, bro. Indians, bro. 40 की पिंग है खुद भी गली में बैठ के खेल रहा है किसी अरे भाई इतना रो रहा था भाई क्रेजी भाई। अरे आपको लीडर बनाता रुको आप गो करो भाई क्रेजी लॉबी आ रही है आपके गो करने से यार पता भाई है यार मेरा अल्ट था मैं और ब्लेयर अबे जीत सकते थे निकाल सकते थे सुनो मेरी बात जीत सकते थे निकाल सकते थे अगर ये कम रोता ना तो साइफर वॉश ट्राइंग और वो कर भी लेता तो थोड़ा मेंटल सही रखना था बट उससे रखने ही नहीं दिया मेंटल भाई बजे जा रहा है बजे जा रहा है भाई खुद किसी गली में बैठ के खेल रहा है वो बट वो बज रहा है दीज इंडियंस ब्रो जाके आया अरे भाई चलो ये लास्ट गाइस फिर इसके बाद मैं कॉलेज का काम करने बैठूंगा फिर सोएंगे भाई ऐसी आ रही थी मुझे यार थोड़ा सा इरिटेशन भी हुआ भाई मोटू आके नेक्स्ट मैच में रैंक कर आरआर नहीं कर पाएगा रैंक आरआर नहीं कर पाएगा पता नहीं क्या करना चाहता था भाई अगर वो थोड़ा चुप रह लेता साइफर वॉज ट्राइंग उसको गलती बताई 2-4 बार ठीक है उसके बाद उसने वेजी भाई पे एक ब्लेम डाली कोशिश करी वेजी भाई ने उल्टा बोल दिया कि भाई मेरे पे मत डालिए वो तेरी गलती है हो गया उस पर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था हो जाता मतलब एक तो बहुत विनेबल अगर ये थोड़ा तमीज़ से रहता किट कम करता प्यार से समझने की कोशिश करता ना कि भाई लेट्स डू दिस गाइस एंड दिस तो निकल सकता था राउंड इट वाज नॉट अ वेरी हार्ड गेम कोई ओपोनेंट कोई बहुत वीसीटी प्रोज नहीं थे कोई इतने मुश्किल ओपोनेंट नहीं थे कि बहुत अच्छी लॉबी आई है नॉट इट वाज विनेबल पर विनेबल होने के लिए थोड़ा सा यार मतलब अभी मेरा भी फालतू किट करके दिमाग ख़राब कर दिया मेरे से भी फालतू बज रहा है यार तेरी रैंक ये वो फर्स्ट टाइम इमॉर्टल तो भाई ये वो अबे जितने तेरे किल्स नहीं तो ज़्यादा मेरे पे इमॉर्टल बड़ी है भाई क्या बकवास कर रहा है सोच के तो बोल समझ के तो बोल कुछ लॉजिकल तो बोल पॉइंट अगर बक भी रहा है तो बकवास तो ऑल इन ऑल मेरा भी फिर मेंटल ख़राब कर दिया मैंने भी फिर ट्राई हार्ड करना बंद कर दिया भाई भाई तो फक में लाए ट्राई हार्ड भाई वे लाए मैं तो नहीं करूँगा भाई देखो मैं ऐसे मैंने गो कराया तो लॉबी देखो कैसी लगी है पहले भी आपने किया था सर जी
नहीं पहले आपने करा था। करवा दूं स्ट्रीम पीछे फिर? कितने रुपए दोगे? सॉरी नहीं रुपए बताओ, रुपए बताओ। नहीं मैंने किया था, बट अभी अच्छी लॉबी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। आई एम बेटर देन क्लो आई गेस। अरे कुछ भी जीत जाते हैं भाई, ये कौन? अबे ये डोंट यूज दिस वर्ड अभिषेक भाई, यूज आइदर समथिंग एल्स और डोंट यूज दिस, आई डोंट लाइक इट। मैं तो आर वर्ड बैन भी कर रखा है। अभी अप्लाई कैसे हो गया? चैट में आ कैसे गया? Cover going out. What do you mean bro? एल्बो का स्मोक दे दूं? एल्बो ही फाइट करो। फाइट कर रहा हूं। Shadows traveling. My ace. One enemy remaining. ये भी इधर ही है। Spike down A. Damn bro. लॉबी बूस्ट मिल गया क्या? लॉबी बूस्ट। So Chambers more than just a nice suit. Well done. पिछले राउंड की शील्ड है ना? हाँ तो गार्डियन रखो। अब की एकदम पते की बात, आपकी एकदम पते की बात। हाँ मेरे को पता है ना, लॉजिकल इस मैच का हो गया, क्लिप मिल गई, हारो। लेट्स गो। स्मोक मत कर, स्मोक। अपनी क्लिप मिल गई, हारो वारो भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं पाजी। बी ओके One enemy remaining. Cover going out. CD push. आउटलॉ थी कहीं तो पड़ी हुई, देख के आउटलॉ थी इधर है ना पे। Again, their fear is a track and the track is ये चाहिए आउटलॉ बुलडॉग मिली शेरिफ भी दे सकता हूं, इधर चाहिए तो दे दो भाई। और आउटलॉ का लिंक से खेल रहा हूं मैं। हाँ कॉल दे देना, स्मोक चाहिए रहेगा तो। Snuff them out. bring them down. B. Hey. Nothing B. Cover going स्मोक दे दिया मैंने यार। Not again Veggie. Shadows traveling. One enemy remaining. Unknown. Watching main. Spike A. Mid क्या maybe? हाँ पीछे से। अच्छा खेलता है वो यार। कौन? Enemy spotted A. Sucked. If I can keep भाई मेरे न्यू फ्रेंड फैंटम कभी नहीं चलाई ज्यादा। When they make it easy for us. पता नहीं क्या लिखा हुआ। Gun here. अबे वेट, मेरे से गन गिर गई क्या कहीं? Gun here. आ रहा हूँ भाई। उसको ये नहीं पता कि गन गिरी है कि क्या है। One enemy remaining. Spike down B. Spike B. एक से मैं लॉक कर रहा हूँ।
वो टॉप में गया, ऊपर गया। ठीक है, हाँ ऊपर चढ़ गया। Oh my god. Yeah, bro, ये सड़ी हुई स्किन ये दिखाओ यार, ये है असली स्किन तो। 2 teammates, 2 different aces. Crazy, bro. Hello Twitter. Actually, bro, I'm streaming. What do you mean? Hello YouTube. तो Twitter पे डालोगे ना भाई कि नहीं डालोगे? Wait, सही में? आता नहीं इसको एडिट करना ब्रो, नूब को। स्मोक है क्या मिड का? Smoke, smoke. Yes, smoke. I can smoke up maybe in Veggie if you want. No. B-main walk in neon. Neon walk in B-main. Can be push link. Oh. Wise 114 guys. Bring them down. Typical family visit पर लाइन से सब रो सो रहे typical family visit पर। अच्छा आपकी फैमिली आई हुई है क्या विजिट पे? One enemy remaining. Last beat Spike down B. आगे इसके पास है। LOL jam bro. भाई ये फैंटम सिंह तो मुझे भी देना भाई। हाँ मेरी तो यूरोप में अपनी देता हूँ भाई, रुक देखो अपनी देता हूँ, इधर यार कुछ गंदा सा मत देना। रखो रखो भाई रखो। एक्चुअली नहीं यूज करके देख अच्छा। निवेरा फैन है क्या? बस तू देख, निवेरा से पहले यूज करता था यार मैं, वो तब भाई खेलता नहीं था ब्रो, तब सीएस मैंने तो अरे चल अब यार ये सही तो बात है, मत मान। प्रूफ तो मुझे नहीं पता बट लाइक मैं तो भाई 2022 में देखा उसे, उससे पहले से यूज कर रहे हो तो क्रेजी भाई। यार अरे भाई गोटेड स्किन थी भाई, ये मेरी पहली स्किन थी जो मैंने ली थी। आज करी थी कह रहा है भाई डुओ तो। अबे डुओ तो झूठा मिड टॉप है। स्मोक मिड टॉप स्मोक मिड टॉप। अरे तुम फोकस नहीं करने दे रहे मुझे, तुम्हारी गलती। यार एक आई Already थिंक link क्लोज बैठा हो सकता है। यार लिंक भी नहीं आया अभी, there's a trap. Leon last round he was walking up B. Adapt or die. recon नहीं भाई नियॉन पुश करेगा आई थिंक। He's pushing CD. वाइज आता है बार-बार। साला उसने वाइज आगे नहीं आया और क्यों टीम Spike planted. टेस्टी वगैरह के प्लेयर्स है तो ये लोग बच्चों डॉगिंग। अगर प्रॉब्लम में कोई आता है ब्लाइंड वेट एंड ब्लाइंड ये सामने रुक जा, कम आउट निकल 3 2 1। वन मोर लिंक पुश वन डीलिंग। Last player लेफ्ट में standing. नीचे। Teleport's ready. एंटी आई थिंक इट्स द स्किन ब्रो, एंटी। ना पहले मुझे फैमिली पड़ी हुई थी बी मेन पर इसका वेरी फोर्जा वो क्या स्पोर्ट्स एडिशन। बाप रे सही है भाई यार। आई डिडंट एक्सपेक्ट अ थर्ड वन टू पुश यहां से इतना जल्दी। या अनलकी ब्रो। व्हाट वाज द शॉट? अरे मैं अच्छा करता हूं यार। तुम्हें पता नहीं है क्या नहीं है, सीख के क्या कैसी बातें कर रहे हो यार गाइस। वाइज हर राउंड आता है ठीक है इधर। ओपन से मैं एक्सपेक्ट किया था। कौन है ये? फेड का नाम पता नहीं अजीब सा है। यश है, एएसटी या श्योर। टॉप मिड स्मोक अगेन। नाइस वन। वेजी भाई लिंक लगा लो अपना बुलाओ। अकेला आता है ना, यू कैन पुश। आई थॉट आई वाज गोना रियल वॉच बी में दे रहा हूं। और एक क्लोज है ब्रो। अच्छा रेना पुश है। या आई जस्ट डॉग। Bring them down. Where are you? Marked one. I can blind him, I can blind him. One enemy remaining. Can be link in. बी तो नहीं घुसा तुमने? बी छोड़ रहा भाई। नहीं वो नियॉन आया था एक बार बी पुश, अभी तो नहीं आया। तो वैंडल ट्राई करता हूं यार, वैंडल नहीं चलेगा बहुत देर से। आज के पूरे दिन फैंटम ही वैंडल चलाई। बाकी चीजें भाई यार मेरा तो दिमाग वहां तक गया भी नहीं यार। गेम्स कुशल भाई मतलब ठीक है मजा आ रहा है बट थोड़े 2 गेम ड्रॉ हो गए। नहीं ड्रॉ नहीं, पिछला तो हार ही गए। बच्चों की बहुत घटिया प्लेयर्स आ रहे हैं। ये मैच में अच्छी टीम है, सामने भी अच्छे हैं। देखते हैं, अभी तो 6-1 ही हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कमन मिड स्मोक करना। ओके मिड बॉटम राइट। हां गुड पीछे नाइट माली वेट इजी विन है। आई होप जीतूं एक गेम तो यार। Cover going out.
वॉचर एल्बो रहना आया मेरे पास है। ठीक है इन Shadows traveling. डोंट स्मोक ओह शिट कर दिया था यार बोलने से पहले। चलेगा कोई बात नहीं होल्ड कर रहा हूं। मिड है बॉटम मिड। पता नहीं किधर गया, चल रहा था कहीं। Enemy spotted. Cutting their vision. One enemy remaining. टॉप में Spike down A. होल्ड करना मेरे साथ। Cover going out. गन होगी यार इस पे। रीलोड किया उसने। मैसिव इसका क्रॉसर बहुत बड़ा है, तुम्हारे ऊपर ही है, ठीक है। अरे ये स्मोक में क्यों नहीं आ रहा है? उसका मार दिया। बचेगा इसके पास कितना बड़ा क्रॉसर है। 4K पे खेलने वाला तो नहीं है। मेरे से मांग लो ना आप। अरे शॉटी का मांग रहे हो आप? मांगो शॉटी खुद खरीदो। आप मांगो नहीं कर रहा वो। अरे वो आते ही नहीं है बैंक, इतना यूटिलाइज नहीं होने देते। स्लो भी बहुत खेल रहे हैं। हां जंप पिक किया रहता नहीं, वो उसने बहुत वो लगा रखा है। मैं रीपिक तो जेट ने मांग लिया। जंप पिक कर लेता ना बहुत, वो ऐसा है कि सामने वाला मारता। सानी नाम सुनोगे तो क्या इमेजिन बनेगी दिमाग में? वो क्या होगा? प्लस स्मोक वीमेन मैं विल साउंड है। We'll catch them. Mid. नियॉन आएगा आई थिंक भागते हुए। ये टॉप में स्मोक करना। Face your fear. Not in. Vice flash है, fade ulted and close smoke. So Cover going out. एक है इधर। वाइस था यहाँ पे। ओमन में जा रहा हूँ तो देख। ओके मिड टू है -40 क्लोव। All three. No bro, not all three. Still here. Oh sorry. I thought एक इधर है, but वो मर गया। भाई ये क्या कर रहा है ये? 30 seconds left. नहीं ये क्या कर रहा है? नॉट इन द सेंस कि यहाँ क्यों बैठा है, बट ये क्रॉसहेयर क्या है? 4K पे भी नहीं चलेगा ये तो। 4 बंदों का मिला के क्रॉसहेयर। नो ब्रो, नॉट 4 भी तो थिकनेस ही भरेगी, लेंथ कौन भरेगा? देखो बी ऑब्वियसली। हाँ वो बी जाएंगे, उन्हें बी मर गया ना मैं, और रेना उन्हें दिखा नहीं पूरी देर, तो दे लज्यूम बी पे ही होगा। सानी नाम सुनोगे तो क्या इमेज बनेगी दिमाग में? वो फर्स्ट थॉट क्या होगा? सानी नाम टाइम लगता है। मैं को एक्सपेक्ट मत करना। जापानीज आई गेस। आई डोंट थिंक होगा कोई। नहीं है, कुछ कर दिया है। वाओ हेडशॉट दिया बे। Cutting their vision. पीछे इसके। नहीं आ कुछ। अरे मेरे को मरवा दिया यार ऑल 3 बोल के। मैं बीमेन पुश करने चलेगा। मैं भी भागा भाई, मैं भी भागा। मरवा दिया गाली को। ऐसी थी मुझे पता था मैं स्विंग करूंगा तो ही करूंगा, सब नहीं करूंगा तो स्पैम भी करूंगा। एमटी बराबर है ना। मैं मिडी खेलता हूँ। पीछे पर मिडी स्मोक लिंक खेलता हूँ। थोड़ा सरदर्द चालू हो गया, मुझे जल्दी बंद करना। Adapt or die! Shadows traveling. Watch them run. Still in sight. Bye! I'm pissed! नीचे एक। One enemy remaining. 1 HP फेड। नहीं 1 HP है, 120 मारा मैंने उसे। क्या परेशान हो रहे हो? ऐसे क्रॉसर रखने वाले हो रहे हैं प्लेट पर, रेयरली ही नॉर्मल क्रॉसर देखोगे। मैं प्लेट पे नहीं खेलता ना ब्रो। ब्रो 1 HP को भी हेडशॉट ही मारता हूँ। नो ब्रो नहीं। अरे ये देना ना मुझे क्योंकि वैंडल प्लीज। It helps with accuracy. तेरे लिए उठाई क्या मैंने? लो भाई लो।
लोग यहाँ स्पॉन पे पड़ी है, पड़ी है स्पॉन पे पड़ी है। नहीं भाई मेरी ईगो बहुत बड़ी है भाई, नहीं चलाई तो मम्मी कैसे में नहीं चलाई तो मेरी ईगो बहुत बड़ी है भाई। लो अब चलाओ, भूल गया था कि ऑटोमेटिक है, कंटेंट के लिए स्ट्रीम पे बोल रहा था, सॉरी यार। अब तो मेरे को असलियत पता चल गई, अब तो मैं मांगने का नहीं स्किन। चैट पे कोई और भी है पर स्ट्रीम चालू करके सो गया शायद से। Shadows traveling. Cover going out. आ गया यार। नाइस। नियॉन उधर गया तुम्हारी तरफ। ओके। Spike down B. छोड़ रहा अभी मैं देखना हूं मैं। One enemy remaining. वो नियॉन को लग रहा है वो हिम है। हेल ये कहाँ लग कर रहा है? Last round before the switch. लो अब ये चलाओ, मेरे को बोली थी। अरे ले लेते हैं फिर ये राउंड तो। मस्ती कर रहा हूँ, नहीं चलानी बाबा। Someone will say रेना। क्या? हेडेक हो रहा है अब। नियॉन इज सो मी। क्या पता सिंग स्नाइपर हो। सेल्फ अवेयर तो है। मिड स्मोक करना। डिले डाला कर रहा हूँ। Time to work. उनका नियॉन कितना गधा है, एक बार लिंक किया उसका, अभी भी नहीं आ रहा। The hunt begins. Cover going out. Spike down A. One enemy remaining. Win गया। भाई ब्लाइंड होने नहीं दिया, पहले पे दिया था। Switching sides. Their lives are so meaningless. मीस चेंबर। Might as well give them. भाई टीम में कोई आसपास फैन है क्या? रेना का एजेंट बता। ये जेट है। तो आज तो बड़ा खुश होगा तो। सॉरी आई माइट टॉगल। क्यों? नहीं देखा ब्रो मैच। अबे भाई यू मिस सेक्सी आसपास गेम भाई। फैंस है क्या? ब्रो सेक्सी के लिए मैं भी यार नो कैप। पता है अपने फेड ने आसपास का अगेंस्ट स्क्रीम कर रखा है। अरे मजाक ओह माय गॉड। अच्छा वो जो बीच में ये लेवाइथन वाला जो तुम्हारा हुआ था उसमें या क्या हुआ था मुझे नहीं बताना मुझे बाद में। क्या अच्छा ब्लाइंड कहाँ पे चाहिए होगा बताना। Who are you bro? आई एम सो स्मार्ट। यू वांट लिंक स्मोक या क्रॉस स्मोक? ब्लॉक कर रहा हूं मैं एक सेकंड। स्मोक क्लोज है। रिकॉर्डिंग कोयल बॉय एक है एल्बो। मैं ब्लाइंड दोनों भेजी भाई, रुको एल्बो ब्लाइंड दोनों आप भी हो गए माय बैड। रिलोडिंग दो है ओह 78। Last player standing. Spike down. All A. used. One enemy remaining. डैम भाई ऐसे क्रॉसर भाई मैं तो बोल नहीं रहा। नाइस। ऐसे क्रॉसर के साथ राइट शॉट। कॉर्सर भी एसटी का इसलिए भाई फुल प्रमोशन। अरे बट ये बंदा तो एसटी में है ही। मैं तो नहीं हूं ना भाई। ब्रो अगर होता तो बहुत ही भयंकर प्रमोशन होता ब्रो। लेना चाहिए ब्रो। हां लेना चाहिए। ट्रायआउट लेना चाहिए। अच्छा क्या हुआ था इनका लेफ्ट का, क्या हुआ था मुझे बताओ बेजी भाई। मस्ती कर रहा मेरे बाजू में बैठा है, रुक उसको बताता हूं। बताओ भाई बताओ ब्रो बड़े से क्या कॉल है गाइस? बहुत किलसो आदमी है भाई वो। वे देखते हैं। Cover going out. कौन दे रहा हूं? Shadows traveling. Stealing sight. I blinded backside. Get back. Reload. Spike planted. 194. All three. One enemy remaining. My whole team is whipping. ओ लेफ्ट में मारो। Looks like I was the strong. मेरे ऑफ लेना। Match point. जाएगा यार। This is it. Their courage. भाई किसकी है ये? ले लो भाई मेरे हाथ से। एक भी चाइना
टीम ने जीती। अरे चाइना में एक ईडीजी ठीक ठाक थी, वो भी हो गया उनका। लास्ट ईयर से अच्छा नहीं खेल रहे वो लोग। जब से चैम्प्स जीते, चैम्प्स कर्स लगा उन्हें पूरा ही यस लगा, मतलब थोड़ा भी ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा। हेवी नर्फ। The hunt begins. We'll catch them. Cover going out. I'll find you. One enemy वाह remaining. जी भाई। Attackers गेमर भाई कैसे आप इतना क्रेजी कैसे खेलते हो भाई? आप कोई प्रो प्लेयर हो क्या? प्लीज मुझे टीम का नाम बता दो भाई। एसटी बॉय। एसटी बॉय। अरे मैं सैड। ओ डैम, ये क्या मेरी पूरी टीम ऊपर, फिर पूरी एनिमी टीम, फिर मैं, फिर एनिमी नियॉन। जिक्सो, अबे ये बंदा थ्रोवर ही है भाई, ये जिक्सो। तो क्रेजी भाई। अच्छा मुझे वो बताओ ना कि इनका क्या हुआ था, एसटी वाला, ओ लेविथन वाला क्या हुआ था? अरे वो कुछ तो कोलैब कर रहे थे, मतलब पता नहीं, कुछ आया था बीच में, ट्विटर पे चला था। ओह डैम। हां लोग का हुआ था कुछ बढ़िया। यो व्हाट्सअप ब्रो, गुड मॉर्निंग नेटो जी भाई। अभी सुबह सो के उठे हो क्या? लोग जाने, बट एसटी और लेवाइथन का तो हो सकता है शायद इन द प्रोसेस वो स्क्रिम्स वगैरह कराए होंगे ना उन्होंने। नाइस है भाई, बढ़िया है। हेलो जीरो फैंग, खेल रहे हो मैसिव और? हां एप्पल इवेंट देखा क्या? हाँ मुझे भी गर्मी लगी है थोड़ा, मैं भी हाँ थक सा गया हूँ मैं भी यार, थोड़ी देर ऐसे बात कर लेते हैं। एक सेकंड में जरा विंडो बंद करके एसी खोल के आऊँ। एप्पल इवेंट देखा क्या? नहीं है नाइटो जी भाई, मैं नॉट इंटरेस्टेड। टीम का नाम है एस्टेरिक्स, इंडियन टीम है, पता था थ्रो करेगा। मेरा वैलो हेडेक हो रहा है, मैं निकलता ही हूँ यार, छोड़ो। हेलो पृथ्वी भाई यार, वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई मैं निकलता ही हूँ यार, थोड़ा हेडेक हो रहा है स्टार्टअप गर्मी से ना, सही हूँ। ऑफलाइन हो गए? हेलो एम आई कनेक्टेड? हेलो अरे मैं कह रहा था बेटी भाई मैं निकलता ही हूँ, थोड़ा हेडेक सा हो रहा था, मैं सोता ही हूँ। कल मिलता, अरे आप कल खेलोगे तो ओके। हेलो मिलता हूँ, रुको। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी ना। गुड नाइट। हेलो क्या जा रहे हो क्या? हाँ मैं कह रहा था थोड़ा हेडेक सा हो रहा है, मैं सोता ही हूँ। कल शाम को आऊँगा इस 6-7 के करीब ही, तो तब अगर आप फ्री हुए तो खेलते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ओके बड़ी। एक डीएम मार के निकलते हैं गाइस। लाना भी बंद, हेडेक हो रहा है। थोड़ी बात करनी थी पर्सनली, कब फ्री हो पृथ्वी भाई? अगर आप मुझे इवनिंग में 5 बजे फ़ोन कर सकते हो तो 1000% आई विल बी अवेलेबल टू पिक, और आप कर सकते हो बात आराम से। अगर आपको वो टाइम सूटेबल नहीं है, आपको वो टाइम नहीं जमेगा, तो कोई और टाइम मिल के हमें करना पड़ेगा डिसाइड, फिर वो मैं आपको सोच के बताता हूँ। रुको आई थिंक, और कितने बजे? बहुत गर्मी लग रही है यार। शाम में 5 बजे की सुबह? मैंने बोला तो इवनिंग, साथ में जोड़ा मैंने इवनिंग यार। एक हो रहा है बहुत भयंकर, गर्मी से ही हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली। गर्मी और शायद डिप्रेवेशन में भी थोड़ी एकदम से ऐसे फीलिंग आई कि अंदर से कोई हथौड़ा बजा रहा है स्कल के ऊपर, अंदर से जरा कोई हथौड़ा बैंग कर रहा है भाई सर पे।
उत्तराखंड में इतनी गर्मी, तो मैं तो शहर में रहता हूँ, पहाड़ों पे बर्फ़ के बीच में थोड़ी रहता हूँ यार, प्लेन शहर में रहता हूँ, वैली है, वैली में शहर है, मैं वहाँ रहता हूँ। यहाँ पे तो जैसा टेम्परेट क्लाइमेट ही होता है, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दी होती है। चलो ब्रो बाय, सुबह सुबह उठ गया हूँ फाइनल एग्जाम के लिए, गेट वेल सून, बाय बाय नाइटो जी भाई, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल। नहीं गुड नाइट नहीं, मतलब मेरे को गुड नाइट बोला आपने, तो हाँ मैं सोता हूँ थोड़ी देर में बस, और मुझे कॉलेज का काम भी करना था, बट फकिंग हेल, मैं तो वॉच पार्टी और फनाटिक की परफॉर्मेंस और MIBR की परफॉर्मेंस से इतना क्रेज़ी खुश हो गया कि मैं काम के बारे में भूल ही गया। मैं वॉच पार्टी के बाद गेम खेलने लग गया। सो जाओ और 27 भाई, हाँ जी आई लीव, सचे वाला DM थोड़ा सा करके एक प्रमोशन डाल के आई लीव, क्योंकि पिछले लास्ट कॉम्प पे जो खेला उसमें मैं कुछ कर ही नहीं पाया यार, ना मैंने किल्स करे, ना मैंने ऐसा कुछ यूटिल डाली अच्छी, ना मैंने कोई राउंड निकाला अच्छा, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन सा फील नहीं हुआ, तो इसलिए बस एक DM कर रहा हूँ। कॉलेज का काम, कॉलेज, बैक टू कॉलेज, हाँ हाँ बैक टू कॉलेज यार, करना ही था यार वो तो, मतलब नो अदर ऑप्शन लेफ्ट है सच, अभी तो फिलहाल जो बचा वही। जो बचा वही आई नहीं, वही आई डिड। भाई साहब ये लेफ्ट साइड पे इतना भयंकर हो रहा है, मुझे आँख पे नहीं खुली जा रही है, होली फक, आई थिंक इट्स स्लीप डिप्रिवेशन प्लस हीट, हाँ बॉडी बहुत हीट हो गई है आई गेस। थर्ड ईयर है या फर्स्ट ईयर ब्रो, थर्ड ईयर का वहाँ, फर्स्ट ईयर में। Enemy punished. Fuck. Dominating. Oh, come off. Trinity, you're welcome. लास्ट ईयर में छोड़ा था ना, वहीं से कंटिन्यू कर लेते। कौन सा कोर्स चूज़ किया, वहीं से कंटिन्यू कर लेते। अरे कॉलेज वो मेरे दोस्त का थोड़ी है यार कि मैं जब मर्जी एडमिशन ले लूँ, जहाँ मर्जी एडमिशन ले लूँ, जिस कोर्स में जॉन से साल में मर्जी वहाँ एडमिशन ले लूँ, तो थोड़ी होता है। जब मर्जी TC ले लूँ, जब मर्जी ड्रॉप छोड़ दूँ। कौन से कोर्स में लिया ये सब यार, अभी मेरे को अभी ये सब बोलने का मन नहीं है। It's not a very मनमोहक बात फॉर मी, तो इतना मन नहीं होता ये सब बात करने का। ऊपर से अभी सर दर्द में तो रहने ही दो यार, fucking hell। यार एक DM करके निकलना, उसमें भी लोग एग्जिट कर जाते हैं ब्रो, व्हाट द फक। भैया कॉलेज में ट्राई करो, पैसा दे देना, लास्ट ईयर में भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है यार, लास्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा, और जो पहले 2-3 साल का, मतलब जितने भी साल का कोर्स होगा, तो जो भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पहले के ईयर बनेगा, उसकी नॉलेज इन्फो वो कहाँ से आएगी। पढ़ना है ना, तो टाइम पास नहीं करना यार, टाइम पास हो गया बहुत, कर लिया बहुत, और नहीं करना। Remaining. पढ़ने कब से नॉलेज मिलने लगी भाई, टीचर जो पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट से इन्फो मिलता है, सीखने को मिलता है। मैं तो उसी को ही नॉलेज बोलता हूँ भाई, नए सब्जेक्ट सीखने को मिल रहे हैं, नए टॉपिक्स, इंफॉर्मेशन।
चलो गुड नाइट। कल करता 5 बजे वाला अगर कोर्ट में नहीं हुआ तो कोर्ट केस हो गया क्या तुम पे? कुछ मर्डर कर दिया क्या तुमने किसी का? अरे ओह माय फकिंग गॉड यार। 5 kills remaining. गुड नाइट या फिर भाई, टेक केयर। एंड फिर किस बात का कोट भाई थोड़ा सा बता के जाओ। डोंट कीप मी लीव मी हैंगिंग। इनको दे के जाओ। बताता हूँ कल मैं तो बताते ही जा रहा हूँ और बिहारी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना मर्डर ही करूँगा। बैंडेड ऐसे बिहारी है तो मर्डर ही होगा। तो फक डिड आई मेंशन दैट शिट ब्रो। मुझे तो पता भी नहीं था तुम बिहारी हो या कुछ। Kill remaining. I did not even know your ethnicity, man. जी यार I myself predicted. कितना स्पैम करेगा? लॉल करता है स्पैम। घंटा नहीं जा रहा आप चैनल पे। प्यार से एक बार लिखता तो मैं चले भी जाता सुनने से पहले। स्टोरी भी करता हूँ। चलो भाई फिर मिलते हैं तुमसे न्यूज़पेपर में। ओके ऐसे जा रहा हूँ कोर्ट। थोड़ा नेटवर्क की सही बिल्ड हो जाए। ओह नेटवर्क बिल्डिंग के लिए कोर्ट सही है यार। क्रेजी भयंकर क्रेजी वर्क कर रहा है। क्रेजी मेहनत। होपफुली तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी एंड ऑल द बेस्ट आपको आपके कनेक्शन बिल्डिंग के लिए आए। चलो मिलते हैं हमें चैम्प्स के बाद ही करवाऊँगा इसके भी टेम्परेचर कह रहा हूँ सॉरी। क्या होता है वो CPU का थर्मल पेस्ट वगैरह क्लीन और नया और के बाद ही करूँगा। PC क्लीनिंग भी और चैम्प्स के बाद ही होगी। Joining us, Alpha Share! What's going on, bro? Come join us, put your headset on, chill. Holy moly, Alpha! यार अभी तो नहीं देख पाऊंगा, ये बाद में देखता हूँ यार। बाय 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 पृथ्वी भाई यार। गुड नाइट। दर्द हो रहा है। भयंकर कॉम्बो गर्मी का। इनहेल। बाय ब्रो बाय 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 लेटर यार एंड बाय। Cigarette ash, it looks like snow when it falls in the wind, you know. And you say you wanna dance. You're wary, you know you'll end up in the wrong hands. And you're having fun. Why don't you show your friends? And you're having fun. What if it never ends? I'm lacking sincerity, but you don't care at all. Miss booze, lit cigarettes, trying to take me home.
I swear I've seen you before, holding your shoes in your hands, running out that door. And you got nothing, but you say